लेकिन बहुत सारी उससे एक्सपेक्टेशंस है, बहुत सारी उससे उम्मीदें हैं, बहुत सारे सेक्टर्स चाहते हैं कि उनके लिए इस इंटरिम बजट में कुछ खास हो। हालांकि पूर्ण बजट में अभी थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन चुनाव से पहले ये बजट पेश कर दिया जाता है ताकि इन वक्त में जो भी चीजें अब तक उसमें सुधार है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि ये इंटरिम बजट जो है वो यहाँ पर लोक लुभावन वाला ही होता है, क्योंकि चुनाव बेहद ज्यादा नजदीक है। रोशन सर, इन तमाम चीजों में सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि जो बजट पहले पेश हुआ था उसको और इसको अगर कंपेयर करें, और साथ ही साथ ये भी जानना चाहूंगी क्योंकि बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो कंफ्यूज होते हैं कि पूर्ण बजट और इंटरिम बजट क्या है। So interim budget is a budget which is like a vote on account budget. It is the proposals which are there, but it can only be ratified once the government comes into power. So usually when the government is going out of power, you have the last budget as the vote on account or the interim budget, and the final budget will be in June, early July. That said, this interim budget, we are expecting it to be like a report card for the government, what all they had planned in the last 1 year and whether they have achieved that. I think the biggest target was the fiscal deficit. It was 6.4% last year, and they had a target of bringing it down to 5.9%. And by all estimates, as of now, there was a little economic report that came out 2 days back. It says that, yes, the government is on track of achieving 5.9% as the fiscal deficit this year. The other big number to watch for is inflation. Inflation is expected to be around 5.4% in this financial year, and they're expecting it to drop to 4.4 next year, which is a good thing, especially for us salaried professionals. अगर हमारा appraisal थोड़ा 5% के ऊपर होता है, तो that means you're beating inflation. That said, let us come to the expectations first, sector wise. Of course, first thing would be for personal income tax. इसमें अगर कुछ change होगा, I really don't think कोई change होगा इस बार personal income tax rates में, because last time itself they had come up with two tax regime. इसमें old tax regime है, new tax regime. New tax regime up to 7 lakhs you don't pay income tax, and you don't have to submit anything under section 80C or 80D or any of these things. So insurance policy premiums, or there's no savings over there, but the tax slab is higher. I mean, the tax rate is lower for the new tax regime. So this time also, they're not likely to change the new tax regime or the old tax regime, any of those things, but they might increase standard deduction. एक expectation है कि standard deduction थोड़ा सा बढ़ाए, so that it's a feel good thing. 50,000 रुपए और मिल जाए पॉकेट में, तो anybody can, किसको बुरा लगे? Yeah, exactly. So that is something that salaried professionals can expect. और इसी में एक चीज पूछना चाहूंगी कि ये भी संकेत दिए गए कि जो ये व्यवस्था है, जो आपने कही कि न्यू टैक्स रिजीम है, उसको अपनाने का एक और मौका जो है वो देगा, क्योंकि कई सारे लोगों ने वो न्यू टैक्स रिजीम नहीं चुन पाए और उसके बाद वो लोग पछता रहे। तो ऐसा कहा गया कि इस बार मौका मिल सकता है कि आप दोबारा वो टैक्स रिजीम चुन सकते हैं। Exactly. और मैंने भी देखा है, I mean, हमारे ऑफिस में भी ये न्यू टैक्स रिजीम, ओल्ड टैक्स रिजीम का ऑप्शन है, और ओल्ड टैक्स रिजीम में बहुत सारा पेपर वर्क है। तो जिन लोगों को पेपर वर्क नहीं करना, तो फिर इट्स एक्चुअली अ गुड चांस टू मूव टू द न्यू टैक्स रिजीम, बिकॉज अगर कैलकुलेशन देखा जाए, अदर देन दोज हु हैव गॉट रनिंग इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द लास्ट मेनी इयर्स एंड हुज सैलरी ब्रैकेट इज से बिटवीन अप टू 10 lakhs, उनका थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। बाकी किसी को फर्क नहीं पड़ेगा अगर इफ यू आर इन द न्यू टैक्स regime or in the old tax regime, because the new tax regime, one, it does away with the paperwork, and you have up to 7 lakhs, there's no tax that you pay. Then up to 15 lakhs, between 10 to 15 lakhs, you have a 20% bracket. 15 lakhs and above, it is 30% straight. हाँ, लेकिन जैसा आपने कहा कि उम्मीद कम है, लेकिन एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना कि कुछ चीजें जो है वो चेंज हो सकती है। हाँ, वो स्टैंडर्ड डिडक्शन, just for a little bit more money in the pocket, ये salary professional। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर मैं इसमें फीमेल्स की बात करूं, क्योंकि कुछ चीजें जो है वो हमें राष्ट्रपति के भाषण से हिंट मिल जाती है, तो उन्होंने हिंट दिया था कि जो ये बजट है वो फोकस करने वाला है महिलाओं पर, तो उनके लिए इस बार खास क्या होने वाला है? क्योंकि पिछली बार जो भी वादे किए गए थे वो पूरे साल में पूरे किए गए, इसलिए कहा गया कि इस बार महिलाओं पर भी ज्यादा फोकस किया जाएगा। Women have been a focus in the budget even last year, and this year also the expectations are that there'll be on women's welfare there'll be a 25% year-on-year jump likely in the allocation for women. There will be steps taken to align it with the Delhi Declaration as well. There will be measures likely to encourage women entrepreneurs. Okay. So, जो महिलाएं business शुरू करने वाले हैं, there'll be some loans, lower interest loans. We're expecting that to be offered to them. ठीक है. There'll be allocations towards the Indira Gandhi National Widow Pension Scheme, the Nirbhaya Fund, Saksham Anganwadi Fund,
and the portion scheme. So all of these there'll be increased allocations we're expecting in this interim budget. बाकी जितने भी schemes है already for women, we expect that to continue. I don't think anything else would happen, especially for in the women sector. ठीक है. और अगर फार्मर्स की बात करें, किसानों की बात करें, तो उनके लिए क्या कुछ खास होता है? क्योंकि ये पिछली बार भी काफी कुछ नई करने की कोशिश की गई थी और ये कहा गया कि इस बजट में भी कोशिश की जाएगी, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक है फार्मर भी और महिलाएं भी, तो ये जो कोशिश है वो फोकस करने की कोशिश की जाएगी कि उन लोगों को अपनी तरफ की जाए. And that is a very subtle undercurrent that there is, because it is an election year, and we're expecting the budget to be a please all in the year of the general elections. Of course, the farm sector is huge, and with as you can see, there's a lot of climate change happening. So there have been unseasonal rains. So इसलिए farmers के लिए there could be some populist measures that could be implemented. There could be a waive off scheme that we might see on some farm loans, agricultural loans. There could be increased MSP for some crops. They might announce the MSP rates to be increased for some certain crops. And maybe certain measures on agricultural exports also will be taken in this interim budget. There might be some measures given for farmers. ठीक है. और हर बार कोई ना कोई इंटरिम बजट में कोई ना कोई सरप्राइज की उम्मीद जो रहती है, और हर बार कोई सरप्राइज आता भी है, क्योंकि जो इतिहास गवाह है कि हर बार उन्होंने कुछ नया करने की कोशिश की. इस बार कोई ऐसी खास चीज जो जनता जो है एक्सपेक्ट कर सकती है, और कुछ सरप्राइज, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि ऑल ओवर पब्लिक के लिए सबके लिए होगा, बट कुछ ऐसी चीज जो है, या फिर वो कोई ऐसी बात बोलती है जो पूरी तरीके से वायरल हो जाती है और उसके बाद वो सरप्राइज निकल कर सामने आता है कि हाँ, मोदी सरकार की तरफ से ये सरप्राइज जो है वो जनता के लिए है. एक तो मैंने बताया कि हो सकता है सैलरी प्रोफेशनल्स के लिए थोड़ा सा इंसेंटिव होगा. दूसरा, होम बायर्स आर एक्सपेक्टिंग कि होम लोन इंटरेस्ट रेट में कुछ फर्क आ सकते हैं, या तो वो जो डिडक्शन लिमिट है टैक्स पेयर्स के लिए वो थोड़ा बढ़ाएं. लाइक राइट नाउ इट इज 2 lakhs, दे वांट टू इंक्रीज इट अप टू 3 lakhs इंटरेस्ट पेड ऑन होम लोन. फिर रेंटेड प्रॉपर्टी के लिए दे वांट टू रिमूव द कैप ऑफ 2 lakhs. तो ये सारे एक्सपेक्टेशंस हैं. That's it. Surprises के बारे में if you talk about last budget में क्रिप्टो करेंसी का रेगुलेशन के ऊपर काफी एक सरप्राइज था, after which the crypto industry in India is more or less dead. फिर वो TDS भी वो बजट में नहीं था, वो बाद में आया था, that there be a TDS on foreign remittances, वो बाद में आया था. That is expected to continue. I don't think the government is going to roll back any of that. वो तो continue हो जाएगा. This time we're expecting दो चीज में थोड़ा सा emphasis होगा बजट में. एक तो AI is a buzzword, so we will have some kind of allocation set out for AI, and दूसरा थोड़ा बहुत तो regulation भी आ सकते हैं, at least an announcement of some kind of regulation for AI इस बजट में. The second thing is on sustainability. Sustainability is another buzzword, so we are expecting that there will be a lot more allocations for green schemes. ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, उसमें फोकस होगा. हाइड्रोजन प्रोडक्शन के ऊपर फोकस होगा. अच्छा. As it is, and the government is focusing a lot also. The other sector is on infrastructure. So infrastructure में the outlay is likely to be increased even more. Last year it was 10 lakh crores, which was the infrastructure outlay, which was 3.3% of the GDP. This year they'll probably increase it by another 10%. जैसे आप देख सकते हैं इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है अभी कंट्री में. रिसेंटली द MTHL बॉम्बे में इनॉग्रेट हो गया था अक्रॉस द हार्बर. देन in the hills you're seeing all these tunnel constructions happening, and that was in the news for all the wrong reasons. Flyovers are being built, so roadways can see a lot of allocation probably this year, because last year there was 3.25 lakh crores that was allocated for roadways. This year there could be a further increase in allocation for roadways. वो हो सकता है infrastructure में. And then aviation, अभी बहुत सारा नया airports भी आ रहा है. The Bangalore airport, the second terminal was inaugurated last year, and then of course 2 हफ्ते पहले Ayodhya airport, and then the Ram Mandir. So there could be in fact special allocation towards Ayodhya also for infrastructure development in Ayodhya, because that is becoming टूरिस्ट हब. बहुत सारा हॉस्पिटैलिटी प्रोजेक्ट्स है अयोध्या में. ट्रैवल विल बी इंक्रीज्ड टू अयोध्या, सो दे विल एक्सपेक्ट अ लॉट मोर आउटले टू बी गिवन फॉर दैट. सो दैट आल्सो कुड बी एक्सपेक्टेड इन दिस बजट. ठीक है. और एक बहुत जरूरी बात है, क्योंकि काफी सारे लोग ने कमेंट कर मुझसे पूछा भी था, तो मैंने सोचा आपसे पूछ लूं. गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए, क्योंकि
पिछले 3 साल हमने कोरोना देखा, सरकार के लिए बहुत मुश्किल था, हमारे लिए बहुत मुश्किल था। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए ज्यादा कुछ हो नहीं पाया, चाहे वो 18 महीने का एरियर हो, काफी सारे जो यहाँ पर फिटमेंट वाले वो चीजें हैं वो भी रह गई। तो इस बार गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कुछ उम्मीदें कर सकते हैं सरकार से, और ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि उनके लिए भी कुछ खास हो। Perhaps it's not something that we've been tracking if there's any specific outlay for government employees, but हो सकता है there could be some amnesty schemes given for government employees as well. And maybe if there's something to do with the retirement age, they might tweak that also. But I don't expect anything significant government employees. ठीक है, और अगर रेलवे की बात करें इन तमाम चीजों में, क्योंकि अभी तो जैसा हमने देखा कि लगातार जो चीजें भी हो रही थी वो काफी ज्यादा डेवलपिंग की थी, और कई सारी ट्रेनें जो हैं, और अब ये भी कहा जा रहा है कि जो वंदे भारत है वो भी स्लीपर वाले सेक्शन में लाने की कोशिश करेंगे, इस तरह की चीजें। तो रेलवे में कितनी ज्यादा उम्मीदें की जाए, और अभी जिस तरीके से देखा अयोध्या और ऐसी कई सारी चीजें और आगे आने वाली है, तो उसके दौरान बहुत ज्यादा दिक्कतें लोगों को होती टिकट बुक करने में, और तो इसमें कितना ज्यादा डेवलपमेंट देख सकते हैं? Expectations रेलवे सेक्टर के लिए ऑलरेडी there are expectations, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ही आते हैं। यस, नया ट्रेन होंगे, वंदे भारत ट्रेन और भी इंट्रोड्यूस होगा। देयर इज आई थिंक अ लॉट हैज टू बी डन ऑन रेल सेफ्टी। लास्ट ईयर वी सॉ वन ऑफ द वर्स्ट ट्रेन एक्सीडेंट्स इन इंडिया। सो वो जो कवच स्कीम है, रेल कवच स्कीम, उसको एक्सटेंड करेंगे टू मोर ट्रेन्स सो दैट देयर इज बेटर सेफ्टी दैट इज देयर फॉर रेलवे। सो आई थिंक द फोकस विल बी ऑन सेफ्टी इन रेलवेज एज वेल एज न्यू ट्रेन्स लाइक वंदे भारत। दैट सेड, वो जो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है बिटवीन अहमदाबाद एंड बॉम्बे। तो उसका कंस्ट्रक्शन के ऊपर कुछ अपडेट हो सकते हैं इस बजट में। सो रेलवेज में ये होगा। ठीक है, और जैसा कि मैंने जब ये सेशन की शुरुआत की तो बोला कि ये जो बजट है वो लोक लुभावन ही होता है, जिससे लोगों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की जाए। तो अगर जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो उनकी जो भी पॉलिसीज है, अगर गवर्नमेंट की बात करें तो उसमें किस तरीके की उम्मीद, क्योंकि पहले भी जिस तरीके से उन लोगों को पैसे दिए गए और बाकी चीजें कही गई, और जो योजनाएं हैं उनको बार बार रिलीज किया गया, और बार बार अभी भी इस दौरान भी मोदी जी ने जितने भी लाभकारी लोग हैं जिनको उससे लाभ मिला, उनसे काफी ज्यादा बातें उन्होंने की, और ये इंश्योर करने की कोशिश की कि रो में आखिरी जो बंदा खड़ा है उसको भी ये लाभ जो है वो मिले। तो इन पॉलिसीज में कुछ चेंजेस या फिर कोई नई पॉलिसी का रिलीज जो है वो हो सकता है आज? पॉपुलिस्ट मेजर्स होंगे इसमें for sure, and like we have said, even our team also is mobilizing Bharat. So at the grassroots level, jitna government kar sake, they will try and roll out some schemes to ensure that the last person on the ground is also covered in this budget. तो वो हो सकता है उसमें। That said, students के लिए भी काफी इस बार we can expect some things to happen. अच्छा, हाँ. There will be announcements of new higher institutes that are going to be rolled out. Student loans के ऊपर भी हो सकते हैं, we can see some announcements in this budget. फिर another thing is that we expect that the University Grants Commission might give permission to foreign universities to set up campuses in India. Okay. ताकि मतलब लोग हार्वर्ड जाना चाहते हैं, येल जाना चाहते हैं, but if you can have offshore campuses of those universities in India, it would be very welcome. So वो हो सकता है कि वो भी होगा इस बार। And हाँ, ये मोटा स्टूडेंट्स के लिए ये हो सकता है। ठीक है, और जैसा आपने स्टूडेंट्स के लिए कहा, वैसे ही अगर हम जो बाकी यूथ है, स्टूडेंट्स है लेकिन कई सारे जो और लोग हैं जैसे जो यूथ में ही कंसीडर किए जाते हैं, उनके लिए कोई खास चीज, क्योंकि जैसा आपने एआई के बारे में बात करी, और अगर इन्हीं से जोड़कर जॉब्स के बारे में बात करें, क्योंकि रोजगार पर सबकी बहुत ज्यादा निगाहें, आप में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमें सैलरी मिल रही है, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बार बार, और साथ ही साथ जो विपक्ष है वो महंगाई और रोजगार पर बहुत ज्यादा चाहेगा कि आज इंटरिम बजट में कुछ खास हो, वरना इसके बाद काफी सारी जो है फीडबैक जो है वो गलत जाएगा जनता तक, क्योंकि रोजगार में कुछ ना कुछ होना चाहिए। That's it. Actually, one good pointer is that the unemployment rate in India has been coming down. अभी 10% के नीचे है. In fact, in November it was at 7.6%, which is actually a good figure compared to many developed countries also, जहाँ पे unemployment rate actually quite high है. So, which is a good thing. But हाँ, इंडिया में वैसे स्कीम्स है जो पुराना मनरेगा स्कीम था, उसको अभी नया नाम के they've changed the name, I forget what it is, but there is guaranteed employment for 45 days for everybody. So वो ये सारी schemes I expect them to continue so that at least the unemployment rate in India is kept low. ठीक है।
और अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो उस पर भी नजर है सबकी, क्योंकि अब काफी सारे लोग बहुत ज्यादा सतर्क हो गए हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना है, क्योंकि अब जो हम पूरा एक बदलाव है वो देख रहे हैं देश में, और काफी सारी गाड़ी आप सड़कों पर दिखने भी लगी, और लोग जो है थोड़ा सा पैसा लगाकर और इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने की कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि इससे एनवायरमेंट भी और साथ ही साथ अपनी जेब पर भी असर पड़ता है. So government clearly has a push now towards electrification. क्योंकि हमारे जो एनर्जी डिपेंडेंसी है, अभी we are quite dependent on oil and foreign oil, और हमारा जो fiscal deficit है, the large part of that has got to do because of oil import. So इस बार there will be a push. I mean, we expect, at least the auto industry is expecting that जितना भी GST rates है vehicles के ऊपर, that will remain constant जैसे है अभी. अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने थोड़ा सा जीएसटी को ट्विक करके दे इंक्रीज्ड द रेट ऑन एसयूवीज टू काइंड ऑफ डिस्करेज लार्जर एसयूवीज, डीजल एसयूवीज डिस्करेज करने के लिए. एंड देयर इज वन डिमांड फ्रॉम ऑटोमेकर्स की हाइब्रिड व्हीकल्स के ऊपर थोड़ा सा जीएसटी का कम, they want it to be reduced a little bit, because hybrid vehicles do not get counted under electric vehicle category with the lowest GST rate. Okay. So maybe the government might bring hybrids into the electric vehicle GST rate, or lower the GST rate on hybrid vehicles. वो हो सकता है इस बार. Also, there's been a long-standing demand to bring fuels, petrol and diesel, into GST. That is not under GST. But again, these decisions are taken by the GST Council, which is separate from the budget. So it's not likely that you'll see a significant announcement in the budget on this. Your FAME policy hai, which is an incentive for electric vehicle makers, that might be extended, and we might see certain performance-linked incentive schemes also for electric vehicle manufacture in India, because we have a global EV player who has been lobbying hard in India to try and enter the country. So what domestic manufacturers are saying, they are saying, like, give us a level playing field. We don't mind if you reduce the rate, but reduce it for all. Don't specially do it just because one EV player wants to enter the market right now. So I think there will be a focus on EVs this time, or lithium batteries ke upar, there could be a further reduction in tax to make it even cheaper, so that the parity between petrol vehicles and electric vehicles comes closer together. ठीक है. और अगर जैसा कि आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल और इन तमाम चीजों के बारे में बात करी, तो ये भी पूछूं कि जो ये पूरा बजट है, क्योंकि चुनाव पास है, तो इस पूरे बजट का जनता पर कितना असर पड़ता है, और उसका असर कितना ज्यादा चुनाव पर पड़ता है, क्योंकि आप लगातार फाइनेंस से जुड़े हुए हैं, इतने सारे बजट देख चुके हैं, और खुद निर्मला सीतारमन छठा बजट जो है वो पेश करेंगी. तो इन तमाम चीजों को देखते हुए, तो जो ये बजट है उसका असर कितना ज्यादा चुनाव पे और साथ ही साथ हम लोगों पर पड़ता है वोट डालने से पहले? I mean, whatever incentives that the government rolls out right now, I mean, will be seen by the opposition as a candidate for the election. But that said, I mean, you and I are going to benefit from it. There will be some benefits for the Aam Aadmi for sure, so that we feel good before the general elections. But I don't think that is really going to have any impact on the way the country votes, or it's really going to swing things. लेकिन ये देखो, जैसे आपने बोला कि क्या कहते हैं, इससे इम्पैक्ट भी पड़ेगा, लेकिन उतना ही ज्यादा रिस्क भी है, क्योंकि अगर कोई एक गलत फैसला लिया तो उसका पूरा पूरा असर जो है उस चुनाव पे पड़ेगा. Exactly. So in fact, the opposition will be looking for that. That one thing which they can latch on to and say, नहीं, इसको roll back करना. In fact, if you look at some of the policies in 2014-15 when the government just came in, उसके बाद बहुत सारा opposition था, and a lot of it was rolled back. And within weeks of the policies being announced, they were rolled back. But this time, I don't think we're going to have any of those hard-hitting decisions made in this budget. So I don't think ऐसे कुछ होगा. और जैसा आपने महंगाई पर थोड़ी सी बात की थी, लेकिन महंगाई पर भी थोड़ा सा असर है, तो उसके बारे में थोड़ा सा और ज्यादा जानकारी की, जो इन्फ्लेशन है जिससे परेशान है, क्योंकि अगर देखिए कि बाकी चीजें तो कुछ ना कुछ सही चल रही हैं, जॉब्स को लेकर भी आपने कहा भी कि सही ट्रैक पे है जनता, लेकिन इन्फ्लेशन जो है वो सीधे सीधे घर पर असर डालता है, पॉकेट पर असर डालता है, और ऐसी बहुत सारी चीजें, चाहे वो सब्जियां हो, अचानक से उसके रेट बढ़ जाते हैं, और ये सारी चीजें. तो इन्फ्लेशन, कैपिटल एक्सपेंडिचर और फिजिकल डेफिसिट के बारे में मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा और बताएं. तो जैसे मैंने पहले ही बताया था, it is expected to be around 5.4%. ठीक है. It was hitting a peak of around 6.1%, and it's expected to come down to 4.8% in Q2 of the next financial year. ठीक है. But it will settle at around 5.4%. हाँ, ऊपर नीचे तो होते रहेंगे, and a lot of this is also dependent on agricultural produce, dependent on climate change, dependent on the rain patterns. If we have a good monsoon,
don't have a good monsoon. And if you look at it for the last 3-4 years, weather pattern has been changing drastically, which is why I think the government should also focus a lot on green initiatives, focus on afforestation programs. उसके लिए कुछ आउटले तो होना चाहिए on one side as well. ठीक है। और जैसा मैंने आपसे बताया भी कि छठा जो बजट है वो पेश करने वाले, तो आप निर्मला सीतारमन को फाइनेंस मिनिस्टर जैसे कैसे देखते हैं, और पुराने जितने मिनिस्टर्स हैं अगर उनसे कंपेयर करें तो, क्योंकि अगर जैसे बहुत सारी जगहों पर एक रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि ज्यादातर लोग पसंद करें जिस तरीके से वो जो है पेश कर रही हैं, और साथ ही जितनी भी चेंजेस अभी तक किए गए वो लोग पसंद कर रहे हैं, तो अगर एक विशेषज्ञ के तौर पर आप देखें तो किस तरीके से आप देखेंगे उनको? See, as a finance minister, I mean, I can't give an opinion on Nirmala Sitharaman, but as a finance minister, she has been pretty consistent. Initially, in the first 2 years of her budget, there were a lot of people who were not very happy with some of the policies that she rolled out, the way she dealt with it. But I think over the last 4 budgets, the first 2 were not all that great, but in the last 4 budgets, she has been consistent. And the policies have been in favor of corporate India. Corporate India is largely happy with the schemes that the finance minister has rolled out. So in that respect, she is a pretty good finance minister. Even within the BJP regime itself, you had Arun Jaitley before Nirmala Sitharaman. So between them, if I come, I think she has done a fairly good job. ठीक है। और अगर आने वाला चुनाव है, क्योंकि फाइनेंस के बारे में बात की, लेकिन आने वाला चुनाव है और साथ ही साथ सरकार, तो जितनी पॉलिसीज वो लाई, जितनी चीजें उन्होंने की, आपने कहा भी कि अभी तक सही ट्रैक पे है, लेकिन एज अ financialexpress.com के एडिटर से अगर पूछूं कि चुनाव आने वाला है तो आगे जो ये फाइनेंस है, बाकी भी सेक्टर अगर सिर्फ फाइनेंस को भी छोड़ दे, तो आपको क्या लगता है कि सरकार जो है वो बिल्कुल सही दिशा में फाइनेंस के अलावा की भी बात कर रही है? Largely the policies have a very long term policies. तो infrastructure पे इतना बड़ा focus है government का, and then we have this target of becoming a $5 trillion economy by 2027. और वो भी अभी on track है. If you look at it, we would be the 3rd largest economy very soon in the next couple of years. So वो भी on track है. So as far as the country goes, I think we're on the right track. The government is on the right track, and what they are doing is they're investing for the future. It's not about just with the general elections in mind. This is about the next, not just for the next 5 years. It's actually for the next 20 years. We have a vision of actually vision 2047. So everything is planned with the vision 2047 right now. So hopefully things will be on track. ठीक है। तो जिस तरीके से रोशन सर ने हमसे बात की, जितनी भी चीजें थी उसके बारे में बताया कि कैसे यहाँ पर कई सारे जो सेक्टर्स है जो इससे जुड़े हुए, हालांकि बहुत बड़ी कोई अनाउंसमेंट नहीं हो सकती क्योंकि वो फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद ही कहा था कि बहुत बड़ी अनाउंसमेंट इससे उम्मीद मत करिए, लेकिन फिर भी एक सरप्राइज फैक्टर है जो सर ने कहा कि बहुत सारे सरप्राइजिंग फैक्टर है जो हो सकते हैं। टैक्स पेयर्स के लिए कुछ ऐसी चीजें हो सकती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी कोई चीजें जो है वो हो सकती हैं, और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, महिलाओं के लिए हो गया, किसानों के लिए, लेकिन तमाम लोगों के लिए कुछ ना कुछ इस बजट में उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन लगातार बजट पर बहुत सारे लोगों के बयान आ रहे हैं, कितनी सारी उम्मीदें हैं विपक्ष और पक्ष दोनों की ही, और साथ ही साथ विपक्ष आज बहुत सारे मौके भी ढूंढ रहा है कि किस तरीके से महंगाई और रोजगार पर सरकार को घेरे। बयान आपको सुनाते हैं, लगातार ये कवरेज जारी है। रोड्स, रेल, एयरपोर्ट्स एंड बिल्ड in looking at the way the world is looking at India, looking at the China plus one strategy, maybe they will try to give a fillip to manufacturing and also they should protect a little bit the Indian industry from maybe cheap imports that may coming from other parts of the world, so that manufacturing grows और हमारी जो आत्मनिर्भरता है उस पर हमारा ज़्यादा जोर लगा जाए। In past 10 years we have seen this government in every budget comes with something which is a very different kind of initiative. Like just before the election in 2019, we have seen Krishi farmers benefit scheme, which was Kisan Samman Yojana. So in this budget also, do you expect something very out of the box scheme or something which change the scenario in any sector? I think interim budget hai, so there will be some limited. I mean, but I think they will underscore their priorities. See, the other thing I also think is when you look at the demographic dividend that the country has, we have such a large young population. You need to also skill them if you need them to be ready for the kind of infrastructure, defense, space, agriculture, precision farming,
So that needs to be also, and the whole startup infrastructure that they also need to create. So I think they will continue to build this ecosystem to build a virtuous cycle so that India continues to grow at 6.5% and more. India is definitely feeling some pressure from the fiscal deficit side. It's already 5.9. So investing in infrastructure is a very prime aim of this government. We have seen in past many years. But how much liberty is they have seeing the present fiscal deficit and in this target of 4.5? So I think they had always said that they would be expecting to come to 4.5%, and so that was always meant to be a sort of a landing rate to get to there. And if I see the way the government they have moved, monetary policy and fiscal policy have worked hand in hand. So you look at the finance ministry and you look at the RBI, they have worked largely in a very concerted fashion to make sure that also inflation remains within check and they continue to improve year on year. In past few years, we have seen that government is quite ambitious for a 5 trillion economy, and now the other agencies are also supporting the claim of Indian government that by 2030 will be a 7 billion economy, and the ambition of the government is to make India a 30 trillion economy by 2047. So, do you see something very out of the box in this budget which supports the aim of 30 trillion economy by 2047 or 7 trillion economy by 2030? I think the aim of the government is to continue on the trajectory they are at. 6.5% they are growing, and the push in infrastructure is only going to help speed up the private participation in the sector, in the growth of the economy. So I think what they need to do is to keep the economy going as it is, and थोड़ा सा tweak करते रहेंगे, so it should improve and not go down. सर मिडिल क्लास जो है उसकी हमेशा उम्मीद कहीं ना कहीं टैक्स स्लैब्स में रिलैक्सेशन की या टैक्स के जो डायरेक्ट बेनिफिट्स हैं उसमें कुछ ना कुछ उम्मीद रहती है. इस बजट में सरकार कितना उस तरफ जा सकती है कि मिडिल क्लास को थोड़ा रिलीफ देने की कोशिश करें, थोड़ा और स्पेंडिंग के लिए उनके हाथ में पैसा छोड़ने की कोशिश करें? सर आईएमसी की तरफ से तो हमने ये उनसे मांग की है कि थोड़ी जो टैक्स की प्रोसेसेस है वो सिंप्लीफाई की जाए, एंड सो दैट इज हाउ व्हाट वी लुक एट. इवन इफ यू सिंप्लीफाई देम देयर विल बी अ ग्रेट रिलीफ along with any rationalization of slabs. और सर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो पहले जीएसटी अपने आप प्लेस में है, लेकिन जीएसटी में भी काफ़ी सारे चेंजेस हो गए हैं, लेकिन अभी भी लोग कई सारे चेंजेस की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं. पेट्रोलियम को वैट से हटा के जीएसटी में लाने की एक बड़ी डिमांड है जो कि लोगों को रिलीफ दे सकती है, लेकिन उस पर कुछ खास हो नहीं रहा. तो आप कैसे देखते हैं इस बार बजट में कुछ संभावना है उस बारे में, पेट्रोलियम को वैट से हटा के जीएसटी में लाने की कुछ और? पेट्रोलियम के बारे में इतनी हमारी राय नहीं है, लेकिन हमने सरकार से यह दरख्वास्त की है कि जो डायरेक्ट टैक्स हैं, इनडायरेक्ट टैक्स हैं और ऑल्सो जो नॉन प्रॉफिट के लगे हुए टैक्स हैं वो सब प्रोसेसेस और प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई किया जाए. सर मैं बार बार एक बात करूँ कि आउट ऑफ द बॉक्स जाना इस सरकार की परंपरा रही है बजट में जी. इस बार आप कुछ उम्मीद करेंगे कुछ ऐसा, क्योंकि चुनावी साल है, सरकार पूरी तरीके से ईज्ड है मैक्रो नंबर्स को लेकर के, तो ऐसे में क्या कुछ बड़ा फैसला हो सकता है कि स्पेंडिंग को लेकर? उम्मीद तो करेंगे ही, लेकिन सुनते हैं मैडम फाइनेंस मिनिस्टर क्या कहती हैं. शुक्रिया जी, नमस्ते. So I think in terms of growth, that trajectory will continue. Would we see any populist measures? I don't think so. I think it would be something that will just be a ongoing. All the issues that are going on would be taken on, but I don't see any major announcement coming. Major announcement will not be there. It's a common understanding of everyone. So can we expect that just before the elections, it's the last budget for the government, so last opportunity to announce something from the platform of the Indian Parliament? So can there be some electoral announcements also, like if we come back to power, where we'll give this and all? No, I don't think. I think this government is pretty mature, and I don't think that they need to be making any such announcements from an electoral point of view. Their focus is very clear. The focus is our country. And whichever government comes after elections, I think we have to look at a balanced approach, not just from an election point of view. And I think this government is pretty mature about it. In past 10 years, we have seen this government has focused a lot on infrastructure, education, innovation and other things. So what are the key sectors which government should focus this year? I think infrastructure has to be a key focus. India has been lagging in infrastructure, and over the last couple of years, we have seen that this current government has put in a lot. We have seen a lot of projects which have come to fruition in this year itself, and many more
which are in the pipeline will be implemented. So I think that is going to be a constant infrastructure investment, because infrastructure creates so many other opportunities, creates investment, it creates employment, plus it develops the area around the infrastructure development. So I think that that's an area we are going to see, and it's for the betterment of the country, and it's an all-round growth. I mean, it's not going to favor any particular state or any particular region. It's growth for the country. So I don't see any letdown in that. सर, हिंदी में भी जानना चाहेंगे कि आज सरकार अपना इस कार्यकाल का आखिरी बजट पेश कर रही है, चुनाव से जस्ट पहले का ये बजट है, सरकार के पास कितनी सहूलियत है किसी तरह कोई बड़ा अनाउंसमेंट कर पाने की, या सर जनता के लिए कुछ बहुत ल्यूक्रेटिव ऑफर कर पाने की? सरकार के पास तो सहूलियत तो होती है, लेकिन ये सरकार बहुत मैच्योर सरकार है और उन्हें ऐसी कोई अनाउंसमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है, और कुछ अपेक्षा भी नहीं है जनता की कि इस बजट में कुछ स्पेक्टेकुलर अनाउंसमेंट करेंगे. जो है वही जैसे कहते हैं वोट ऑफ अकाउंट है टू कैरी ऑन द एक्सपेंसेस दैट आर ऑलरेडी इन द पाइपलाइन. लेकिन ग्रोथ के हिसाब से मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान तो देंगे वो, और फिस्कल डेफिसिट यानी फिस्कल कंसोलिडेशन उस पर तो ध्यान देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर 5.9 को हमें 4.5 पे लाना है तो कुछ ना कुछ तो अभी से ही तैयारी करना पड़ेगी गवर्नमेंट को. सर, इंफ्रा पे लगातार ही फोकस किया पिछले 10 सालों में अपने बजट में इस प्रेजेंट सरकार ने. इंफ्रा के अलावा एग्री भी एक बहुत कोर सेक्टर रहा है इनका, और पिछली बार जस्ट चुनाव के पहले का जो बजट 2019 का हमने देखा था उसमें एक बड़ी स्कीम फार्मर्स के लिए अनाउंस की गई थी. तो एग्री सेक्टर को और बाकी सेक्टर से जो बहुत क्रूशियल माने जाते हैं सरकार की दृष्टि से, उन पे सरकार का कितना फोकस रहेगा, कितना फोकस आपके हिसाब से देना चाहिए? फोकस तो रहेगा और फोकस देना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप कहते हैं कि पोस्ट पैंडेमिक इंडिया का ग्रोथ 7% है, और शायद ये FY24 में भी शायद 7% का जो लगातार ग्रोथ चल रहा है वो आगे भी चलेगा. तो वो कैसे होता है अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट ध्यान नहीं देगी, एग्री जहाँ विच इज मेजॉरिटी हमारे सब एग्री इकोनॉमी, उधर ध्यान नहीं देगी, तो वहीं से तो ग्रोथ होती है. तो मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्री पे तो सरकार ध्यान देगी, और शायद इस बजट में हमें और कुछ इस क्षेत्र में कुछ अनाउंसमेंट्स दिखाई देंगे. चंद्रयान, गगनयान और सोलर मिशन जो है, जो भी उनके बाद एक बड़ी उम्मीद है लोगों की इनोवेशन सेक्टर को और साइंस सेक्टर को इस बार बजट में काफ़ी कुछ मिल सकने की संभावना है. वहाँ कितना फोकस करना चाहिए सरकार को कि आने वाले फ्यूचर है अगर वहाँ इन्वेस्टमेंट जाती है? इनोवेशन तो लगातार दिन पर दिन इनोवेशन हो रहा है. एआई जो एक सबसे बड़ा सेक्टर माना जा रहा है, क्योंकि 2023 और 2024 में ही इतने सारे एआई डेवलपमेंट हुए, तो वो तो इनोवेशन ही है. तो उस पर तो सरकार तो ध्यान देगी. प्लस इनोवेशन से स्टार्टअप जो हमारे हैं, जो एक्चुअली युवा पीढ़ा के लिए है, उसमें तो जो एंटरप्रेन्योरशिप है, जो हम जिसे हम कहते हैं कि जो यंग एंटरप्रेन्योर्स है, उनको तो सरकार तो प्रोत्साहन तो देगी. तो सरकार का जनता का सबसे बड़ा वर्ग होता है वो था मिडिल क्लास, और मिडिल क्लास की सबसे बड़ी उम्मीद जो होती है टैक्स स्लैब्स को लेकर के, टैक्स में अधिक कुछ और रिलैक्सेशन मिल सकते हैं. उसके टैक्स रिलैक्सेशन या टैक्स के जो स्लैब्स है उसमें कुछ चेंज करने की कितनी गुंजाइश आप देख रहे हैं? गुंजाइश तो बहुत है, लेकिन इंटरिम में शायद कुछ अनाउंसमेंट नहीं होगी. गुंजाइश तो बहुत है कि बस टैक्स स्लैब्स या जो अपने जो नए टैक्स रेजिम है उसमें अगर कुछ और सहूलियतें दी जाएंगी तो शायद लोग न्यू टैक्स रेजिम अपनाएंगे. तो लेकिन इंटरिम बजट में ये अनाउंसमेंट होगी कि नहीं, मुझे ज़रा डाउट लग रहा है. टैक्सेशन को लेकर एक चीज़ है कि सरकार ने लगातार पिछले 10 सालों में डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ एनोमलीज जो है उस पर तरफ ध्यान दिया है कि आपराधिक ना मानते हुए इसे गलतियां मानते सुधारने का मौका दिया जाए टैक्सेशन में. इस बार भी क्या वो जो पॉजिटिव अप्रोच है सरकार का टैक्सेशन को बढ़ावा देने के लिए, लोगों को दबाव डालने की बजाय प्रोत्साहित करने के लिए, विवाद से विश्वास का जो नीति रही है सरकार की, उसको आगे बढ़ाएंगे? नहीं, वो तो बढ़ाएंगे, क्योंकि वो तो एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है. क्योंकि अगर डीक्रिमिनलाइजेशन जो हमारे इतने सारे लॉज है, इतने सारे लॉज जो बहुत ही यानी ऑलमोस्ट ब्रिटिश काल से वो लॉज है, उनको तो डीक्रिमिनलाइज करने की ज़रूरत है. और वो तो एज अ ऑनगोइंग प्रोसेस, उसे हम एक बजट में करेंगे या दूसरे, वो तो ऑनगोइंग प्रोसेस, उस पर तो बहुत साल लगने वाले हैं. और फिलहाल जो हमारे माइक्रो नंबर्स है काफ़ी स्टेबल है वो, लेकिन फिर भी महंगाई जो है वो लगातार परेशान किए हुए पिछले 1.5-2 साल से सरकार उससे लड़ रही है. आरबीआई ने भी काफ़ी सारे कदम उठाए, लेकिन महंगाई जो है उसका कहीं ना कहीं बजट में भी असर दिखेगा. तो
तो महंगाई का जो इन्फ्लेशन का जो पार्ट है वो बजट में आप किस तरीके से देख रहे हैं? बजट देखो महंगाई का जो है वो तो आरबीआई अपने मॉनेटरी पॉलिसी से रेगुलेट कर रही है, हर 2 महीने में वो तो कर रही है। तो मुझे लगता नहीं कि इस बजट में कुछ इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स दिखाई देंगे। जो भी है वो बेसिकली वुड बी इन्फ्लेशन तो कंट्रोल करना ही है। और अगर हम फिस्कल डेफिसिट की बात कर रहे हैं जहां हमें अभी 5.9 पे है, 4.5 पे लाना है, तो उसके हिसाब से ही बजट प्रिपेयर होगा। तो इन्फ्लेशन की आई थिंक आरबीआई इज इन कंट्रोल ऑफ इट। सर बहुत सारी लिमिटेशंस हैं इंटरिम बजट होने के नाते, वोट ऑन अकाउंट होने के नाते, तो सरकार के पास कितना ज़्यादा स्पेस है यहाँ पे एक चुनाव से ठीक पहले लोक लुभावने बजट का? सरकार के पास स्पेस है, लेकिन ये सरकार मैच्योर सरकार है, वो लोगों को लुभाने के लिए बजट नहीं प्रिपेयर करेगी। थैंक यू। Account only. So what do you expect from this budget? See, our expectation is that there will not be major changes. We expect, obviously, the code has to be followed, and we need to see continuity. And continuity of the programs that have been implemented, I think, should be maintained and built upon. And that's our largest expectation out of this budget. There are so many big ticket projects which are already going, and there are some needs. सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो हम लोग देखिए 26 जनवरी भी सबसे ज्यादा 70% नारियों का भाग था, तो इससे बड़ा क्या कर सकते हैं। और मातृ बंधन योजना भी नारियों के लिए किया है, और हम लोग सब खुश है, देश को नारी को सम्मान देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज के बजट से भी नारियों का बहुत सारा कुछ मिलेगा। सर आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, इंटरिम बजट पेश होना है, किस तरीके से देख रहे हैं? लोगों की काफी सारी उम्मीदें भी है, क्या बजट लोगों के लिए होगा, लोगों के गरीब लोगों को ध्यान में रखते हुए मेरे प्रधानमंत्री हमेशा सोचते हैं कि जो अंतिम लाइन में अंतिम कतार में सबसे पीछे खड़ा है उसके लिए सोचते हैं, सबका साथ, सबका विश्वास, सबके प्रयास से उसी से देखते हुए बजट आम जनता के लिए बजट होगा। कैसे सर? जैसी आप कौन है? रास्ता छोड़ दीजिए प्लीज। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पक्ष और विपक्ष दोनों तैयारी में, और आप देख सकते हैं कि सोनिया गांधी अब पहुंच चुकी है। अब से थोड़ी ही देर में निर्मला सीतारमण अपना भाषण जो है उसकी शुरुआत करेंगी। संसद में ये जो बजट है जिसका आप सभी इंतजार कर रहे हैं उसे पेश किया जाएगा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही ये स्पष्ट कर दिया है कि वो नई सरकार बनाने के बाद पूर्ण बजट लेकर आएंगे, ये ऐसा उन्होंने दावा किया। और ऐसे में ये अंतरिम बजट ही होगा, और आगामी महीनों में लोकसभा चुनाव होने वाला है। ऐसे में इस बात की संभावना है कि सरकार जो भी करेगी वो लोक लुभावन ही होगा, और मिडिल क्लास की नजर आयकर स्लैब पर टिकी हुई है। गरीबों को भी काफी ज्यादा उम्मीदें हैं इस बार, और इस वक्त आप देख रहे हैं कि तमाम लोग यहाँ पर दिल्ली एनसीआर में बारिश का जो दौर है वो कल से ही जारी है, लेकिन उसी के बीच तमाम जो नेता है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कई बड़े नेता अब तक पहुंच चुके हैं, और अब से थोड़ी ही देर में बाकी लोग भी यहाँ पर पहुंच जाएंगे। लोकसभा चुनाव से पहले आपको बता दें कि आखिरी और अंतरिम बजट जो है वो वित्त मंत्री मतदाताओं को लुभाने के लिए कुछ बड़ी चीजें कर सकती है, लेकिन इसी बीच यहाँ पर बयान जो है इमरान प्रतापगढ़ी का सामने आ रहा है, सुनवाते क्या कह। सारे नारे खोखले हैं, बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार का दावा जो है वो जमीन पर इतना झूठा साबित हुआ है कि सब कुछ महंगा हो गया है। तो इस सत्र में भी कोई बहुत ज्यादा आशा नहीं है, बहुत उम्मीद नहीं है। बाकी पिटारा खुलने दीजिए, फिर बात करेंगे। No comment. I have no expectation. Government is not in a particularly good position, and then they will announce nothing, and then they will say that it's an interim budget. So I have no expectation. Economy is in a bad way. Unemployment and price rise are the two main problems. And what is your comment on Hemant Soren's arrest? I am disappointed. This is part of the government's effort to stifle the opposition.
तो लगातार बयान और विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि जैसे हर साल बेवकूफ बनाने की कोशिश की जाती है, एक बार फिर से बेवकूफ बनाने वाला बजट जो है वो आपके सामने पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि इसी बीच बड़े ऐलान की उम्मीद जो है वो आप सभी लोग कर सकते हैं। सरकार न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर बल्कि विकास पर भी खर्च करने के लिए यहाँ पर जो है वो तमाम चीजें रिलीज कर सकती है और ऐसी योजनाओं का ऐलान करेगी जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार जो है वो पैदा होंगे। और वित्त मंत्री के बजट भाषण में पीएम मोदी की गारंटी का जिक्र जो है वो प्रमुखता से किया जाएगा। और मोदी ने कई बार अपने भाषणों में देश में विकास की गारंटी को लेकर बात की है और इसी पर आज जोर जो है वो दिया जाएगा। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रही है। एक और तस्वीर जिसमें सोनिया गांधी जो है वो संसद पहुंच चुकी है। अब से थोड़ी देर में निर्मला सीतारमन आपको नजर आने वाली है और अब ज्यादा देर का इंतजार नहीं है। और विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि रोजगार और महंगाई पर अगर आज बात नहीं हुई तो सरकार बहुत बुरी तरीके से गिरने वाली है, क्योंकि न सिर्फ विपक्ष की बल्कि नॉर्मल जनता की भी इस पर नजर है कि यहाँ पर रोजगार के कई सारे ऑप्शंस और साथ ही साथ जिस महंगाई से तमाम लोग परेशान हैं उसके लिए भी कुछ ना कुछ आज रिलीज जो है वो होना चाहिए। वित्त मंत्री अपने आपको बता दें कार्यालय से निकलकर राष्ट्रपति द्रौपदी से मिलने के लिए पहुंची हुई थी और साथ ही साथ राष्ट्रपति से बजट की मंजूरी उन्होंने ली हुई है और अब से वो थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचेंगी। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर लगातार कि किस तरीके से निर्मला सीतारमन जो है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन बजट पेश करेंगी और कई चीजों की उम्मीदें जो है वो आज की जा सकती है। लेकिन उसके बाद ये भी संभावना जताई जा रही है कि जो अन्नदाता है, महिलाएं हैं, फार्मर्स है, वो किस तरीके की आज उम्मीद करें और हर बार जो एक सरप्राइजिंग फैक्टर होता है वो कैसा इस बार होने वाला है। और साथ ही साथ आपको बता दें इसी बीच हमेशा से पूजा अर्चना वहाँ होती रही थी, पिछले 20 सालों से 25 सालों से बंद थी, तो उसको दोबारा प्रारंभ करने का निर्णय अदालत ने लिया। बड़ा समीचीन और बहुत आवश्यक है और मैं इसके लिए अदालत को भी बधाई देता हूँ और तमाम वो श्रद्धालुओं की जिनकी बहुत दिन की इच्छा थी कि वो जाकर के वहाँ पूजा अर्चना कर सके वो पूरी होगी। फिर करके मेरे पास आ गया था तो कोई तो फॉरवर्ड कर रहा होगा ना। पीटीआई तो अंदर तो नहीं था, तो पीटीआई के 2 रिपोर्टर आए हैं तो बाहर ही हैं। आपको बता दें कि ऐसा भी अनुमान है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म जैसी योजनाओं का दायरा बढ़ाने का यहाँ पर सरकार जो है ऐलान कर सकती है और इन योजनाओं में मेंटरशिप और नेटवर्किंग के मौके भी लगातार बढ़ाए जाएंगे और इसकी मांग की गई थी। महिला मजदूरों से लेकर महिला उद्यमियों तक अलग अलग तरीके से ऐलान करके सरकार इनकी हिस्सेदारी भारतीय अर्थव्यवस्था में मजबूत कर सकती है और इसके न केवल महिलाओं के सामाजिक उत्थान पर पड़ेगा बल्कि भारत की ग्रोथ जो स्टोरी है उस पर भी काफी असर पड़ेगा। इसलिए महिलाओं के लिए इस बार काफी सारी खास चीजें जो है उसमें शामिल की जा सकती है। और वही नौकर पेशी को उम्मीद है कि बजट अंतरिम हुआ तो क्या हुआ, लेकिन 2019 की तरह थोड़ी बहुत टैक्स छूट जो है वो सरकार दे सकती है। दरअसल 2019 के अंतरिम बजट में वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने 5 लाख तक की इनकम वालों को टैक्स से पूरी तरीके से छूट का ऐलान जो है वो किया। Development of all regions of the country. With the whole of nation approach of Sabka Prayas, the country overcame the challenges of once in a century pandemic, took long strides towards Atmanirbhar Bharat, committed to Panch Pran and laid solid foundations for the Amrit Kal. As a result, our young country has high aspirations, pride in its present, and hope and confidence for a bright future. We expect that our government, based on its stupendous work, will be blessed again by the people with a resounding mandate. Inclusive development and growth. Our humane and inclusive approach to development is a marked and deliberate departure from the earlier approach of provisioning up to village level.
Development programs were thus provisioned. In the last 10 years, however, have targeted each and every household and individual through housing for all, Har Ghar Jal, electricity for all, cooking gas for all, bank accounts and financial services for all in record time. The worries about food have been eliminated through free ration for 80 crore people. Minimum support prices for the produce of Annadatta are periodically increased appropriately. These and the provision of basic necessities have enhanced real income in the rural areas. Their economic needs could be addressed, thus spurring growth and generating jobs. Social justice. Our government is working with an approach to development that is all-round, all-pervasive, and all-inclusive. Sarvangin, Sarvasparshi, or Sarvasamaveshi. It covers all castes and people at all levels. We are working to make India a Vikasit Bharat by 2047. For achieving that goal, we need to improve people's capability and empower them. Previously, social justice was mostly a political slogan. For our government, social justice is an effective and necessary governance model. The saturation approach of covering all eligible people is the true and comprehensive achievement of social justice. This is secularism in action, reduces corruption, and prevents nepotism, prevents Bhai Bhatijawad. There is transparency and assurance that benefits are delivered to all eligible people. The resources are distributed fairly. All, regardless of their social standing, get access to opportunities. We are addressing systemic inequalities that had plagued our society. We focus on outcomes and not on outlays, so that the social economic transformation is achieved. As our Prime Minister firmly believes, we need to focus on 4 major castes. They are Garib, Mahilaye, Yuva, and Annadatta. Their needs, their aspirations, and their welfare are our highest priority. The country progresses when they progress. All 4 require and receive government support in their quest to better their lives. Their empowerment and well-being will drive the country forward. Garib Kalyan, Desh Ka Kalyan. We believe in empowering the poor. The earlier approach of tackling poverty through entitlements had resulted in very modest outcomes. When the poor became empowered partners in the development process, government's power to assist them also increases manifold. With the pursuit of Sabka Saath, in these 10 years, the government has assisted 25 crore people to get freedom from multi-dimensional poverty. Our government's efforts are now getting synergized with energy and passion of such empowered people. This is truly elevating them from poverty. Direct benefit transfer of 34 lakh crore rupees from the government using PM Jandan accounts has led to savings of 2.7 lakh crores of rupees for the government. This savings has been realized through avoidance of leakages prevalent earlier. The savings have helped in providing more funds for Garib Kalyan. PM Swanidhi
has provided credit assistance to 78 lakh street vendors. From that total of 78 lakh street vendors, 2.3 lakh have received credit for the third time. PM Janman Yojana reaches out to the particularly vulnerable tribal groups who have remained outside the realm of development so far. PM Vishwakarma Yojana provides end-to-end support to artisans and craftspeople engaged in 18 trades. The schemes for empowerment of Divyangs and transgender persons reflect firm resolve of our government to leave no one behind. Welfare of Annadatta. Farmers are our Annadatta. Every year under PM Kisan Samman Yojana, direct financial assistance is provided to 11.8 crore farmers, including marginal and small farmers. Crop insurance is given to 4 crore farmers under PM Fasal Bima Yojana. These, besides several other programs, are assisting Annadatta in producing food for the country and for the world. Electronic National Agricultural Market has integrated 1,361 mandis and is providing services to 1.8 crore farmers with trading volume of 3 lakh crores of rupees. The sector is poised for inclusive, balanced, higher growth and productivity. These are facilitated from farmer-centric policies, income support, coverage of risks through price and insurance support, promotion of technologies and innovations through startups. Empowering the Amrit PD, the Yuva. Our prosperity depends on adequately equipping and empowering the youth. The National Education Policy 2020 is ushering the transformational reforms. PM Schools for Rising India, PM Shri, are delivering quality teaching and nurturing holistic and well-rounded individuals. The Skill India mission has trained 1.4 crore youth, upskilled and reskilled 54 lakh youth, and established 3,000 new ITIs. A large number of institutions of higher learning, namely 7 IITs, 16 triple ITs, 7 IIMs, 15 AIMS, and 390 universities have been set up. PM Mudra Yojana has sanctioned 43 crore loans aggregating to 22.5 lakh crores of rupees for entrepreneurial aspirations of our youth. Besides that, Fund of Funds, Startup India, and Startup Credit Guarantee schemes are assisting our youth. They are also becoming Rozgar Data. The country is proud of our youth scaling new heights in sports. The highest ever medal tally in Asian Games and Asian Para Games in 2023 reflects a high confidence level. Chess prodigy and our #1 ranked player Pragnananda put up a stiff fight against the reigning world champion Magnus Carlsen in 2023. Today, India has over 80 chess grandmasters compared to little over 20 in 2010. Momentum for Nari Shakti. The empowerment of women through entrepreneurship, ease of living, and dignity for them has gained momentum in these 10 years. 30 crore Mudra Yojana loans have been given to women entrepreneurs. Female enrollment in higher education has gone up by 28% in 10 years.
In STEM courses, girls and women constitute 43% of enrollment, one of the highest in the world. All these measures are getting reflected in the increasing participation of women in workforce. Making triple talaq illegal, reservation of 1/3 seats for women in the Lok Sabha and state assemblies, and giving over 70% houses under PM Awas Yojana in rural areas to women, and giving over 70% houses under PM Awas Yojana in rural areas to women as sole or joint owners have enhanced their dignity. Exemplary track record of governance, development and performance. Besides delivering on high growth in terms of gross domestic product, the government is equally focused on a more comprehensive GDP, that is, governance, development and performance. Our government has provided transparent, accountable, people-centric and prompt, trust-based administration with citizen first and minimum government, maximum governance approach. The impact of all-round development is discernible in all sectors. There is macroeconomic stability, including in the external sector. Investments are robust. The economy is doing well. People are living better and earning better, with even greater aspirations for future. Average real income of the people has increased by 50%. Inflation is moderate. People are getting empowered, equipped, and enabled to pursue their aspirations. There is effective and timely delivery of programs and of large projects. Economic management. The multi-pronged economic management over the past 10 years has complemented people-centric, inclusive development. Following are some of the major elements. 1. All forms of infrastructure, physical, digital, or social, are being built in record time. Number 2, all parts of the country are becoming active participants in economic growth. Number 3, digital public infrastructure, a new factor of production as if in the 21st century, is instrumental in formalization of the economy. Number 4, goods and services tax has enabled one nation, one market, one tax. Tax reforms have led to deepening and widening of tax base. Number 5, strengthening of the financial sector has helped in making savings, credit, and investments more efficient. Number 6, GIFT, IFSC, and the Unified Regulatory Authority, IFSCA, are creating a robust gateway for global capital and financial services for the economy. Number 7, proactive inflation management has helped keep inflation within the policy band. Now, the global context, Honorable Speaker, sir. Geopolitically, global affairs are becoming more complex and challenging with wars and conflicts. Globalization is being redefined with reshoring and friendshoring, disruption and fragmentation of supply chains and competition for critical minerals and technologies. A new world order is emerging after the COVID pandemic. India assumed the G20 presidency during very difficult times for the world. The global economy was going through high inflation, high interest rates, low growth, very high public debt, low trade growth, and climate changes. The pandemic has led to a crisis of food, fertilizer, fuel,
and finances for the world, while India successfully navigated its way. The country showed the way forward and built consensus on solutions for those global problems. The recently announced India-Middle East-Europe economic corridor is a strategic and economic game changer for India and others. In the words of Honorable Prime Minister, the corridor, and I quote, will become the basis of world trade for hundreds of years to come, and history will remember that this corridor was initiated on Indian soil, unquote. Vision for Vikasit Bharat. Our vision for Vikasit Bharat is that of prosperous Bharat in harmony with nature, with modern infrastructure, and providing opportunities for all citizens and all regions to reach their potential. With confidence arising from strong and exemplary track record of performance and progress, earning Sabka Vishwas, the next 5 years will be years of unprecedented development and golden moments to realize the dream of developed India by 2047. The trinity of demography, democracy, and diversity backed by Sabka Prayas has the potential to fulfill aspirations of every Indian. As Honorable Prime Minister in his Independence Day address to the nation mentioned, I quote, there is no dearth of opportunities, as many opportunities as we want. The country is capable of creating more opportunities. Sky is the limit, unquote. Strategy for Amrit Kal. Our government will adopt economic policies that foster and sustain growth, facilitate inclusive and sustainable development, improve productivity, create opportunities for all, help them enhance their capabilities, and contribute to generation of resources to power investments and fulfill aspirations. Guided by the principle, reform, perform, and transform, the government will take up next generation reforms and build consensus with the states and stakeholders for effective implementation. It is an important policy priority for our government to ensure timely and adequate finances, relevant technologies, and appropriate training for the micro, small, and medium enterprises, MSMEs, to grow and also compete globally. Orienting the regulatory environment to facilitate their growth will be an important element of this policy mix. Aligning with the Panchamrit goals, our government will facilitate sustaining high and more resource-efficient economic growth. This will work towards energy security in terms of availability, accessibility, and affordability. For meeting the investment needs, our government will prepare the financial sector in terms of size, capacity, skills, and regulatory framework. Aspirational Districts Program. Our government stands ready to assist the states in faster development of aspirational districts and blocks, including generation of ample economic opportunities. Development of the East. Our government will pay utmost attention to make the eastern region and its people a powerful driver of India's growth. PM Awas Yojana Gramin. Despite the challenges due to COVID, implementation of PM Awas Yojana Gramin continued, and we are close to achieving the target of 3 crore houses. 2 crore more houses will be taken up in the next 5 years to meet the requirement
arising from increase in the number of families. Rooftop solarization and Muft Bijli. Through rooftop solarization, 1 crore households will be enabled to obtain up to 300 units free electricity every month. This scheme follows the resolve of Honorable Prime Minister on the historic day of consecration of Sri Ram Mandir in Ayodhya. Following benefits are expected. Savings up to 15 to 18,000 rupees annually for households from free solar electricity and selling the surplus to the distribution companies. Charging of electric vehicles. Entrepreneurship opportunities for a large number of vendors for supply and installation. Employment opportunities for the youth with technical skills in manufacturing, installation, and maintenance. Housing for middle class. Our government will launch a scheme to help deserving sections of the middle class, and I quote from Honorable Prime Minister's words, living in rented houses or slums or chawls and unauthorized colonies, unquote, to buy or build their own houses. Medical colleges. Several youth are ambitious to get qualified as doctors. They aim to serve our people through improved healthcare services. Our government plans to set up more medical colleges by utilizing the existing hospital infrastructure under various departments. A committee for this purpose will be set up to examine the issues and make relevant recommendations. Cervical cancer vaccination. Our government will encourage vaccination for girls in the age group of 9 to 14 years for prevention of cervical cancer. Maternal and child health care. Various schemes for maternal and child care will be brought under one comprehensive program for synergy in implementation. Upgradation of Anganwadi centers under Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 will be expedited for improved nutrition delivery, early childhood care and development. The newly designed U-Win platform for managing immunization and intensified efforts of Mission Indradhanush will be rolled out expeditiously throughout the country. Ayushman Bharat. Healthcare cover under Ayushman Bharat scheme will be extended to all ASHA workers, to all Anganwadi workers and helpers. Agriculture and food processing. The efforts of value addition in agriculture sector and boosting farmers' incomes will be stepped up. Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana has benefited 38 lakh farmers and generated 10 lakh employment. Pradhan Mantri formalization of micro food processing enterprises Yojana has assisted 2.4 lakh SHGs and 60,000 individuals with credit linkages. Other schemes are complementing the efforts for reducing post-harvest losses and improving productivity and incomes. For ensuring faster growth of the sector, our government will further promote private and public investment in post-harvest activities, including aggregation, modern storage, efficient supply chains, primary and secondary processing and marketing and branding. Nano DAP. After the successful adoption of nano urea, application of nano DAP on various crops will be expanded
in all agroclimatic zones. Atmanirbhar Oil Seeds Abhiyan. Building on the initiative announced in 2022, a strategy will be formulated to achieve Atmanirbharta for oil seeds such as mustard, groundnut, sesame, soya bean, and sunflower. This will cover research for high-yielding varieties, widespread adoption of modern farming techniques, market linkages, procurement, value addition, and crop insurance. Dairy development. A comprehensive program for supporting dairy farmers will be formulated. Efforts are already on to control foot and mouth disease. India is the world's largest milk producer with but with low productivity of milch animals. The program will be built on the success of existing schemes such as Rashtriya Gokul Mission, National Livestock Mission, and infrastructure development funds for dairy processing and animal husbandry. Matsya Sampada. It was a government which set up a separate department for fisheries, realizing और स्कॉलरशिप्स भी ख़त्म कर दिए गए थे, मौलाना आज़ाद स्कॉलरशिप, मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप। तो हम माइनॉरिटी के लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं? अब पता नहीं कि देंगे भी नहीं देंगे। सर ज्ञान व्यापी पे क्या कहेंगे आप, क्योंकि जैसे अखिलेश यादव जी ने ट्वीट भी किया इस बारे में कि जितनी जल्दी दिखाई जा रही है, लगता है कि दूसरा पक्ष है उसके लिए कोई लीगल कोर्स ऑफ एक्शन भी नहीं देने दिया जा रहा है। देखिए, अदालत के फैसले हैं। अब इसमें जाहिर है दूसरा पक्ष भी अदालत में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, और जो भी सही होगा वो करा जाएगा। बहुत इल्यूजन सा पैदा कर दिया गया है, रिपोर्ट कुछ है और मीडिया में कुछ है। पॉलिटिकल एजेंडे के तहत ये किया जा रहा है। देखिए, इस सरकार ने ना तो महंगाई कंट्रोल करी, ना रोजगार दिया, ना किसानों को खुशहाल करा, ना ही इसने कोई ऐसा काम करा जिससे कि आम जनता खुश हो। आसान सा फार्मूला है कि हिंदू मुसलमान करते रहो, वोट लेते रहो, लेकिन ये सिलसिला आखिर कब तक? ये 3 मस्जिदों के बाद 3000 मस्जिदें और हैं टारगेट पे। 500 साल 1000 साल पहले क्या हुआ था, आज उसको क्यों रिपीट किया जा रहा है? सर हेमंत सोरेन पे कुछ शब्द कहेंगे आप? हेमंत सोरेन को जो अरेस्ट किया गया कल, और राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि ईडी, आईटी और सीबीआई जो है बीजेपी की अपोजिशन एलिमिनेशन सेल बन चुकी हैं। तेजस्वी यादव ने भी कहा कि बिहार के बाद चंडीगढ़ और अब झारखंड। जाहिर है पॉलिटिकल इस्तेमाल हो रहा है इंडिपेंडेंट एजेंसीज का, और जिस तरह से सारे अपोजिशन वाले ही करप्ट हैं। जितने ईडी जहाँ जा रही है 90% अपोजिशन वालों की यहाँ क्यों जा रही है? उसको एक टूल बना रखा हैगा अपनी नाकामियां छुपाने के लिए।
Expectations on budget, sir, in terms. இது ஒரு இடைக்கால நிதிநிலை அறிக்கை தான். இதில் எனக்கு எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் கிடையாது. அரசாங்கம் தன்னுடைய வாடிக்கையான செலவுகளை எல்லாம் பூர்த்தி செய்வதற்காக இதற்கு ஒரு இடைக்கால பட்ஜெட்டை ஒரு தேர்தலுக்கு முன்பாக அரசாங்கம் சமர்ப்பிக்கும், அவ்வளவுதான். இதில் ஒரு பெரிய மாற்றங்கள் எல்லாம் நான் எதுவும் எதிர்பார்க்கவில்லை. Any demand for flood relief, sir? That has to be done. That the demand has already been made. What they have allotted money to the Tamil Nadu is only from an existing provision. They have not allotted anything new. So the Tamil Nadu government has already made the demand, and I hope the central government will accede to that. So what do you have to say about expectations from the interim budget? I have no expectations none whatsoever from this government. This is only an interim budget. This is only a vote on account to make sure that the government of India has the necessary funds to carry on its routine affairs. So anything substantial or structural should have been done by now, because they have already had a full 5-year term. So we'll have to wait for the new government to come into office to bring about any structural or important changes. Sir, your quick actions on ED that arrested. This is the ED doesn't. This is the season of elections, and the ED needs no reason. You are victimized by the ED also. You are also victimized by the ED, sir. I am a veteran in that department, so I've seen it all. Projects. Economic management. The multi-pronged economic management over the past 10 years has complemented people-centric, inclusive development. Following are some of the major elements. 1. All forms of infrastructure, physical, digital, or social, are being built in record time. Number 2. All parts of the country are becoming active participants in economic growth. Number 3. Digital public infrastructure, a new factor of production as if in the 21st century, is instrumental in formalization of the economy. Number 4, goods and services tax has enabled one nation, one market, one tax. Tax reforms have led to deepening and widening of tax base. Number 5, strengthening of the financial sector has helped in making savings, credit, and investments more efficient. Number 6, GIFT, IFSC, and the Unified Regulatory Authority, IFSCA, are creating a robust gateway for global capital and financial services for the economy. Number 7, proactive inflation management has helped keep inflation within the policy band. Now, the global context, Honorable Speaker, sir. Geopolitically, global affairs are becoming more complex and challenging with wars and conflicts. Globalization is being redefined with reshoring and friendshoring, disruption and fragmentation of supply chains, and competition for critical minerals and technologies. A new world order is emerging after the COVID pandemic. India assumed the G20 presidency during very difficult times for the world. The global economy was going through high inflation, high interest rates, low growth, very high public debt, low trade growth, and climate changes. The pandemic has led to a crisis of food, fertilizer, fuel, and finances for the world, while India successfully navigated its way. The country showed the way forward and built consensus on solutions for those global problems. The recently announced India-Middle East-Europe economic corridor is a strategic and economic game changer for India and others. In the words of Honorable Prime Minister, the corridor, and I quote, will become the basis of world trade for what? Coal gasification and liquefaction capacity of 100 metric tons will be set up by 2030. This will also help in reducing imports of natural gas, methanol,
and ammonia. Phased mandatory blending of compressed biogas in compressed natural gas for transport and piped natural gas for domestic purposes will be mandated. Financial assistance will be provided for procurement of biomass aggregation machinery to support collection. Electric vehicle ecosystem. Our government will expand this and strengthen the e-vehicle ecosystem by supporting manufacturing and charging infrastructure. Greater adoption of e-buses for public transport networks will be encouraged through payment security mechanism. Biomanufacturing and biofoundry. For promoting green growth, a new scheme of biomanufacturing and biofoundry will be launched. This will provide environment-friendly alternatives such as biodegradable polymers, bioplastics, biopharmaceuticals, and bioagri inputs. This scheme will also help in transforming today's consumptive manufacturing paradigm to the one based on regenerative principles. Blue Economy 2.0. For promoting climate resilient activities for Blue Economy 2.0, a scheme for restoration and adaptation measures and coastal aquaculture and mariculture with integrated and multi-sectoral approach will be launched. Comprehensive development of tourist centers. The success of organizing G20 meetings in 60 places presented diversity of India to global audience. Our economic strength has made the country an attractive destination for business and conference tourism. Our middle class also now aspires to travel and explore. Tourism, including spiritual tourism, has tremendous opportunities for local entrepreneurship. States will be encouraged to take up comprehensive development of iconic tourist centers, branding and marketing them at global scale. A framework for rating of the centers based on quality of facilities and services will be established. Long-term interest-free loans will be provided to states for financing such development on matching basis. To address the emerging fervor for domestic tourism, Honorable Speaker, sir, projects for port connectivity, tourism infrastructure, and amenities will be taken up on our islands, including Lakshadweep. This will help in generating employment also. Promoting investments. The FDI inflow during 2014 to 23 was $596 billion, marking a golden era. That is twice the inflow during 2005 to 14. For encouraging sustained foreign investment, we are negotiating bilateral investment treaties with our foreign partners in the spirit of First Develop India. FDI is First Develop India. Reforms in the states for Vikasit Bharat. Many growth and development enabling reforms are needed in the states for realizing the vision of Vikasit Bharat. A provision of 75,000 crore rupees as 50-year interest-free loan is proposed this year to support those milestone-linked reforms by the state governments. Societal changes. The government will form a high-powered committee for an extensive consideration of the challenges arising from fast population growth and demographic changes. The committee will be mandated to make recommendations for addressing these challenges comprehensively
in relation to the goal of Vikasit Bharat. Amrit Kal as Kartavya Kal. Our government stands committed to strengthening and expanding the economy with high growth and to create conditions for people to realize their aspirations. Honorable Prime Minister in his Independence Day address to the nation in the 75th year of our Republic said, and I quote, "We commit ourselves to national development with new inspirations, new consciousness, new resolutions as the country opens up immense possibilities and opportunities. It is our Kartavya Kal." Unquote. Every challenge of the pre-2014 era was overcome through our economic management and our governance. These have placed the country on a resolute path of sustained high growth. This has been possible through right policies, true intentions, and appropriate decisions. In the full budget in July, Honorable Speaker, our government will present a detailed roadmap for our pursuit of Vikasit Bharat. Revised estimates of 2023-24. The revised estimate of the total receipts other than borrowings is 27.56 lakh crores of rupees, of which the tax receipts are 23.24 lakh crore rupees. The revised estimate of total expenditure is 44.90 lakh crore rupees. The revenue receipts at 30.03 lakh crore rupees are expected to be higher than the budget estimate, reflecting strong growth momentum and formalization in the economy. The revised estimate of the fiscal deficit is 5.8% of GDP, improving on the budget estimate, notwithstanding moderation in the nominal growth estimates. Budget estimates for 2024-25. Coming to the year 2024-25, the total receipts other than borrowings and total expenditure are estimated at 30.80 and 47.66 lakh crore rupees respectively. The tax receipts are estimated at 26.02 lakh crore rupees. The scheme of 50-year interest-free loan for capital expenditure to states will be continued this year with an outlay of 1.3 lakh crore rupees. We continue on the path of fiscal consolidation as announced in my budget speech of 2021-22 to reduce fiscal deficit below 4.5% by 25-26. The fiscal deficit in 2024-25 is estimated to be 5.1% of GDP, adhering to that path. So the gross and net market borrowings through dated securities during 24-25 are estimated at 14.13 lakh crore rupees and 11.75 lakh crore respectively. Both will be less than that in 23-24. Now that the private investments are happening at scale, the lower borrowings by the central government will facilitate larger availability of credit for the private sector. Vote on account. I'll be seeking vote on account approval of the Parliament through the appropriation bill for a part of the financial year 2024-25. I will now move to Part B. Honorable Speaker, sir, over the last 10 years, the direct tax collections have more than trebled and the return filers swelled 2.4 times. I would like to assure the taxpayers that their contributions have been used wisely for the development of the country and welfare of its people. I appreciate the taxpayers
for their continued support. The government has reduced and rationalized tax rates. Under the new tax scheme, there is now no tax liability for taxpayers with income up to 7 lakh rupees, up from 2.2 lakh rupees in the financial year 2013-14. The threshold for presumptive taxation for retail businesses was increased from 2 crores to 3 crores. Similarly, the threshold for professionals eligible for presumptive taxation was increased from 50 lakh rupees to 75 lakh rupees. Also, corporate tax rate was decreased from 30% to 22% for existing domestic companies and to 15% for certain new manufacturing companies. Honorable Speaker, sir, in the last 5 years, our focus has been to improve taxpayer services. The age-old jurisdiction-based assessment system was transformed with the introduction of faceless assessment and appeal, thereby imparting greater efficiency, transparency, and accountability. Introduction of updated income tax returns, a new Form 26AS, and pre-filling of tax returns have made filing of tax returns simpler and easier. Average processing time of returns has been reduced from 93 days in the year 2013-14 to a mere 10 days this year, thereby making refunds faster. Indirect taxation. By unifying the highly fragmented indirect tax regime in India, the GST has reduced the compliance burden on trade and industry. The industry has acknowledged the benefits of GST. According to a recent survey conducted by a leading consulting firm, 94% of industry leaders view the transition to GST as largely positive. According to 80% of the respondents, it has led to supply chain optimization, as elimination of tax arbitrage and octroi has resulted in disbanding of checkposts at the state and city boundaries. At the same time, tax base of GST more than doubled, and the average monthly gross GST collection has almost doubled to 1.66 lakh crores this year. States too have benefited. States' SGST revenue, including compensation released to states in the post-GST period of 2017-18 to 2022-23, has achieved a buoyancy of 1.22. In contrast, the tax buoyancy of state revenues from subsumed taxes in the pre-GST 4-year period of 2012-13 to 2015-16 was a mere 0.72. The biggest beneficiaries are consumers, as reduction in logistic cost and taxes have brought down prices of most goods and services. We have taken a number of steps in customs to facilitate international trade. As a result, the import release time declined by 47% to 71 hours at inland container depots, by 28% to 44 hours at air cargo complexes, and by 27% to 85 hours at seaports over the last 4 years since 2019, when the national time release studies were first acted. Tax proposals. As for tax proposals, in keeping with the convention, I do not propose to make any changes relating to taxation and propose to retain the same tax rates for direct and indirect taxes, including import duties. However, certain tax benefits to startups and investments made by sovereign wealth or pension funds, as also tax exemption on certain income
of some IFSC units are expiring on 31/3/2024. To provide continuity in taxation, I propose to extend the date to 31/3/2025. Moreover, in line with the government's vision to improve ease of living and ease of doing business, I wish to make an announcement to improve taxpayers' services. There are a large number of petty, non-verified, non-reconciled or disputed direct tax demands, many of them dating as far back as 1962, which continue to remain on the books, causing anxiety to honest taxpayers and hindering refunds of subsequent years. Honorable Speaker, sir, I propose to withdraw such outstanding direct tax demands up to 25,000 rupees pertaining to the period up to financial year 2009-10 and up to 10,000 rupees for financial years 2010-11 to 2014-15. This is expected to benefit about 1 crore taxpayers. 1 crore taxpayers would benefit out of this. Economy then and now. In 2014, when our government assumed the reins, the responsibility to mend the economy step by step and to put the governance systems in order was enormous. The need of the hour was to give hope to the people, to attract investments, and to build support for the much needed reforms. The government did that successfully, following a strong belief of nation first. The crisis of those years has been overcome, and the economy has been put firmly on a high, sustainable growth path with all-round development. It is now appropriate to look at where we were then. I repeat, it is now appropriate to look at where we were then till 2014 and where we are now, only for the purpose of drawing lessons from the mismanagement of those years. The government will lay a white paper on table of the House. The exemplary track record of governance, development and performance, effective delivery and Jan Kalyan has given the government trust, confidence and blessings of the people to realize whatever it takes. The goal of Vikasit Bharat with good intentions, true dedication and hard work in the coming years and decades. With this, Honorable Speaker, I commend the interim budget to this august House. Jai Hind. आइटम नंबर 2 श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। So, with your permission, I rise to lay on the table the following statements under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003, Medium-Term Fiscal Policy cum Fiscal Policy Strategy Statement and Macroeconomic Framework Statement. Item number 3, Srimati Nirmala Sitharaman ji. Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Bill 2024. प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, हाँ वालों के पक्ष हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। So I introduce the bill. सभा की कार्रवाई शुक्रवार दिनांक 2 फरवरी 2024 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
तो बड़ी खबर आपको बता दें कि बजट जो है वो पेश हो चुका है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपकी स्क्रीन पर है। 3 करोड़ लखपति दीदी बनाई जाएंगी। निर्मला सीतारमण ने इस तरह के बड़े ऐलान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर 11% ज्यादा खर्च करेंगे। ये सरकार की तरफ से बड़े ऐलान इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। सभी को पक्का मकान जो है वो मुहैया कराया जाएगा और स्किल इंडिया में 1.47 करोड़ युवाओं को यहाँ पर उन्होंने कहा कि ट्रेड के लिए पैसे जो है वो दिए जाएंगे और प्रधानमंत्री आवास योजना में भी बदलाव किए जाएंगे। और बजट में किसान से लेकर महिलाओं और युवाओं पर बेहद ज्यादा जोर नजर आया। 7 लाख तक की आय वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। इस वक्त की बड़ी जानकारी। 10 साल में इनकम टैक्स कलेक्शन 3 गुना बढ़ा है और उन्होंने जितने भी यहाँ पर टैक्स पेयर है उन्हें धन्यवाद भी किया। 40,000 यहाँ पर और 3 करोड़ लखपति दीदी बनाई जाएंगी। इस तरह के बड़े ऐलान किए। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपकी स्क्रीन पर गए और उन्होंने कहा कि हमारी सरकार पर्यटन पर भी काफी काम कर रही है और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है और पर्यटन केंद्रों को विकसित किया जा रहा है। जुलाई में हमारी सरकार विकसित भारत की रूपरेखा पेश करेगी। यानी सरकार पूरी तरीके से सतर्क है और पूरी तरीके से विश्वास रख रही है कि जब पूर्ण बजट रिलीज करेंगे तब उन्हीं की सरकार होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण साल 2024-25 के लिए बजट पेश कर रही है और उन्होंने करदाताओं का धन्यवाद किया और सरकार ने कर दरों में कटौती की है। 7 लाख तक की आमदनी वालों के लिए कोई भी यहाँ पर देनदारी जो है वो नहीं होगी। निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान आयकर को लेकर किसी भी तरह की नई घोषणा जो है वो नहीं की है। इनकम टैक्स स्लैब वही बना रहेगा, ये भी कहा गया है। बीते 5 वर्षों में उन्होंने कहा कि हमने करदाताओं के लिए काफी काम किया गया और रिटर्न फाइल करने की व्यवस्था को आसान बना दिया गया। हम रिफंड मिलने में भी काम जो है वो कर रहे। यानी सरकार ने काफी बड़े ऐलान किए, लेकिन अगर बड़ी पिक्चर पर देखें तो बहुत बड़े ऐलान नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि पूर्ण बजट में आप देखेंगे कि विकसित भारत का जो बजट रिलीज होगा उससे आप सभी को लाभ जो है वो दिया जाएगा। 4 करोड़ किसानों को पीएम फसल योजना का लाभ मिला है। उन्होंने ये जानकारी साझा की और पवन ऊर्जा के विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है और आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तेजी से ई वाहनों का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। मेट्रो के विस्तार पर भी हम काम कर रहे हैं। बड़े शहरों में परिवहन की आधुनिक व्यवस्था जो है वो भी यहाँ पर की जा रही है। यानी जिस तरीके से थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की थी यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग है उसको जितनी ज्यादा यहाँ पर दबाव जो है उस पर था, अब उसमें छूट जो है वो नजर आएगी और सड़कों पर भी ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रोत्साहन सरकार देने की कोशिश कर रही है। हवाई अड्डों का विस्तार हो रहा है, वंदे भारत का भी विस्तार हो रहा है। माल भाड़ा आपको बता दें कि यहाँ पर उन्होंने कहा कि गलियारे का भी निर्माण हो रहा है और वंदे भारत के लिए 41,000 डिब्बे इस वक्त बनाए जा रहे हैं। देश में 517 हवाई मार्ग। इसी बीच आपको बता दें कि इस बजट के बाद कई सारे बयान जो है आ रहे हैं। But at the same time, not sacrificing the focus on growth. So the capex spend has increased by almost 11%, 11.1%, which is also very good. So the continued focus on infrastructure growth takes place. The third aspect, which is very important, is the focus on the rural sector and also the 4 aspects of women, the farmer and the poor being taken care of. The continuation of the housing, both for women as well as for the rural sectors, are all very welcome. So this takes care of the equitable growth approach of the government. And we have to wait and see regarding the direct tax and indirect tax proposals. As the finance minister has said, that will be taken up only in the final budget. So therefore, this budget does not cover that. So as far as we are concerned, it's a very positive step forward with regard to having the headroom available for growth, considering the fiscal deficit and also the focus on equitable growth. From an industry perspective, obviously we will wait for the main budget to come to look at the details. Thank you. जिस तरीके की उम्मीद की जा रही थी उसी तरीके का है और यहाँ पर आपको बता दें कि 10 साल में इनकम टैक्स कलेक्शन 3 गुना बढ़ा गए और साथ ही साथ उन्होंने कई बड़ी योजनाओं के ऐलान भी किए और साथ ही कहा कि उसमें बदलाव जो है वो भी यहाँ पर हो रही है। और उन्होंने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित बनाने के संकल्प के साथ हमारी सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। और वित्त मंत्री ने कहा कि 4 वर्षों में
तेज गति के साथ आर्थिक विकास हुआ है और मत्स्य उत्पादन 2 गुना हो गया और रक्षा क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर लगातार बनता जा रहा है। यानी उन्होंने कहा कि डिफेंस सेक्टर में हम जिस तरीके से काम कर रहे थे उस तरीके से पॉजिटिव जो रिजल्ट है वो देखने को मिल रहा है। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के तहत जनधन खातों के जरिए 34 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। इससे 2.7 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है, जिससे कल्याणकारी योजनाओं के लिए पैसे की व्यवस्था हो पाई। वित्त मंत्री ने कहा कि कोविड महामारी के बावजूद पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर जो है वो मुहैया कराए गए हैं और 2 करोड़ नए घर भी परिवारों को दे दिए जाएंगे। उन्होंने कहा इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में भी बजट को मंजूरी मिली थी और उस वक्त यहां पर मोदी जी ने साफ तौर पर कहा था कि ये बजट सबके लिए होने वाला है, किसी खास चीज पर फोकस नहीं होगा। क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि राष्ट्रपति का जो भाषण था उसमें उन्होंने संकेत दिए थे कि महिलाओं पर फोकस किया जाएगा। हालांकि निर्मला सीतारमण ने यहां पर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए और साथ ही साथ यूथ के एम्पावरमेंट के लिए काफी सारी बातें की, लेकिन आज का बजट इन टोटल देखा जाए तो हर सेक्टर पर यहां पर कुछ ना कुछ यहां जो है उनको देने की कोशिश की गई है। आपको बता दें कि उन्होंने आयकर को लेकर किसी भी तरह की नई घोषणा इसमें नहीं की है। इनकम टैक्स जो स्लैब है वो वैसा का वैसा ही बना रहेगा। बीते 5 वर्षों में उन्होंने कहा कि हमने करदाताओं के लिए काफी अच्छा काम करने की कोशिश की। रिटर्न फाइल करने की जो व्यवस्था थी वो काफी उलझी हुई थी, लेकिन उसको अच्छी बनाने की यहाँ पर जो कोशिश है वो हमने की है और अब रिफंड मिलने का जो काम है वो काफी समय से यहाँ पर चल रहा है और उस पर भी काम कर रहे हैं। वित्त मंत्री सीतारमण ने ये भी कहा कि 2024-25 के लिए जो बजट हम पेश कर रहे हैं और करदाताओं का धन्यवाद किया और सरकार ने जो कर में कटौती की है उसमें 7 लाख की आमदनी वालों के लिए कोई कर की देनदारी जो है वो अब नहीं होगी। फिलहाल इसी बीच एक बयान आ रहा है, आपको सुनवाते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। किया है, चाहे हम युवा शक्ति की बात करें चाहे नारी शक्ति की बात करें, उनके ऊपर फोकस ज़्यादा है और ऑफ कोर्स एक संतुलित बजट है, जितना भी बेस्ट कर सकते थे। सो क्वाइट होपफुल कि आने वाले वक्त में और अनाउंसमेंट आपको दिखाई देंगी। मिडिल क्लास के लिए भी हाउसिंग के लिए स्कीम को अनाउंसमेंट करिए। राइट, तो देखिए सबसे बड़ी बात, जो लोग रेंटेड हाउसेज में रहते हैं या चॉल्स या ऐसी अनऑथराइज कॉलोनीज में रहते हैं, तो वित्त मंत्री जी ने कहा है उनके लिए एक स्कीम हम जल्दी लेकर आने वाले हैं। सो आज की बजट अनाउंसमेंट में उस स्कीम को अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन क्वाइट होपफुल कि अगर उन्होंने इसको कोट किया है तो डेफिनेटली आने वाले वक्त में हमें वो स्कीम दिखाई देगी। तो आपको लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना फोकस दिया गया है, कहीं ना कहीं कोविड के बाद जो निकल के आ रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर को और आगे ले जाने के लिए ये एक पहल जो समझ आ रही है वो है इनकी तरफ से? बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री जी का 2014 से ही इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत फोकस रहा है। ये 2024 तो एक केवल उसका पड़ाव है। मुझे लगता है आने वाले वक्त में आपको बहुत अच्छी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर दिखाई देंगी। और एक जैसा आप देखिए कितना बेस चीज़ किया है कि जो रेलवे कॉरिडोर है उनकी अनाउंसमेंट की है। दूसरी बड़ी बात क्या किया है कि क्योंकि जो रेलवे का अनुभव है लोगों का वो इंक्रीमेंट किया जा सके, ज़्यादा बेहतर किया जा सके, तो जो रेलवे बोगीज़ हैं उनको इंक्रीज़ करके उनकी क्वालिटी इंप्रूवमेंट करके वंदे भारत के लेवल तक लाने की बात की गई है, जो एक बहुत विजनरी बात है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो सुनने को अच्छी हैं, लेकिन बिकॉज मैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूं तो मैं कुछ और उम्मीदें कर रहा था कि मुझे लग रहा था कि शायद कुछ होगा, लेकिन क्वाइट फॉर होपफुल कि नेक्स्ट टाइम जब भी कभी जब भी इलेक्शंस के बाद गवर्नमेंट फॉर्म होगी तो ज़रूर कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट देखने को मिलेंगे। तो लगातार जिस तरीके से बजट पेश हुआ उसके बाद रिएक्शंस जो है वो यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं और उन्होंने कहा भी कि जिस तरीके की उम्मीद थी कि जो भी चीजें अब तक चल रही थी उसी को आगे बढ़ाने की सरकार ने कोशिश की है और साथ ही साथ करदाताओं को धन्यवाद किया कि यहाँ पर जो कर है वो 3 गुना ज्यादा कलेक्ट किया गया और उससे देश को फायदा मिल रहा है। और साथ ही उन्होंने कई सेक्टर में और डेवलपमेंट लाने के लिए और 2047 तक का जो विकसित भारत का संकल्प है उस पर जोर देती आई। इसके अलावा वुमेन एम्पावरमेंट पर भी उन्होंने जोर दिया और साथ ही कहा कि युवाओं के लिए भी हम काम कर रहे हैं और जो पूर्ण बजट होगा उसमें आप देखेंगे कि देश के हर एक व्यक्ति के लिए ये कोशिश की जाएगी कि लगातार जो विकसित भारत का सपना है वो बजट वैसा ही होगा। और यहाँ पर जब सुबह आपको बता दें कि कैबिनेट मीटिंग हुई उसके दौरान भी पीएम ने कहा था कि आज का जो बजट है
उसमें सभी को कुछ ना कुछ मिलेगा और कोशिश उसी तरीके की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि पर्यटन पर भी काफी काम हम लोग कर रहे हैं और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित जो है वो भी यहाँ पर किया जा रहा है और पर्यटन केंद्रों को विकसित करने की कोशिश की जा रही है। और जुलाई में हमारी सरकार विकसित भारत की रूपरेखा आपके सामने रखने वाली है। यानी मोदी सरकार पूरी तरीके से पॉजिटिव उसमें है कि आगे जो भी बजट आएगा वो वही रिलीज करने वाले होंगे। और अपने भाषण में भी कई बार पीएम मोदी कह चुके हैं कि वो यहाँ पर जो भी चीजें करेंगे वो आगे उन्हीं की सरकार करने वाली, और बजट हम तब रिलीज करेंगे जब हमारी सरकार आ जाएगी। यानी पूर्ण बजट में एक बार फिर से कई सारे सरप्राइजिंग फैक्टर जो है वो आप इसमें यहाँ पर उम्मीद जो है वो कराए जाएंगे। और साथ ही साथ जो रफ्तार इस बार दिखाई उन्होंने कि किस तरीके से इकोनॉमी और साथ ही साथ यहाँ पर जो बाकी चीजें देश में चल रही थी उसमें दिखाया कि रफ्तार लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही थी। और साथ ही हमने आपको बताया कि 7 लाख तक की आमदनी वालों के लिए कोई कर जो है उसकी देनदारी यहाँ पर नहीं होगी, ये बड़ी यहाँ पर उन्होंने बताया। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि रेल को लेकर जिस तरीके का काम चल रहा था, डिफेंस में हम किस तरीके से आत्मनिर्भर हो रहे हैं, इसके बारे में भी उन्होंने बात की। और विकसित भारत के लिए ये जो बजट है ये तमाम लोग जो है वो मान रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर 4 करोड़ किसानों को पीएम फसल योजना का लाभ मिला है और पवन ऊर्जा के विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, ये उन्होंने बताया। और आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तेजी से ई वाहनों का इस्तेमाल होना शुरू हो गया और मेट्रो के विस्तार पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। बड़े शहरों में परिवहन की आधुनिक व्यवस्थाएं जो है वो भी करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से हमने पहले भी चर्चा की थी कि किस तरीके से यहाँ पर जो ग्रीन चीजें हैं उनको, ग्रीन रेवोल्यूशन है और साथ ही साथ यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनकी मैन्युफैक्चरिंग को उन पर छूट दिया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा सड़कों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल दिखे, इसके लिए सरकार बार बार लोगों को प्रोत्साहित भी कर रही है। हवाई अड्डों का विस्तार हो रहा है, वंदे भारत का विस्तार हो रहा है, माल भाड़ा गलियारे का भी निर्माण हो रहा है। उन्होंने ये जानकारी दी। वंदे भारत के लिए 41,000 डिब्बे जो है वो बनाए जा रहे हैं। यानी जब इस बजट की शुरुआत हुई तो आर्थिक यहाँ पर कितनी ज्यादा उपलब्धियां जो है वो सरकार की बड़ी उपलब्धियों के बारे में उन्होंने गिनाना शुरू किया कि किस तरीके से सरकार इन तमाम चीजों पर आगे बढ़ रही है और सरकार के पिटारे से क्या कुछ निकला है वो हम आपको लगातार बता रहे। 3 नए रेलवे कॉरिडोर जो है वो बनाए जाएंगे, इसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। इससे आर्थिक विकास होगा और यात्रियों के लिए बेहद ज्यादा सुविधाएं जो है वो बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। 2047 तक भारत को विकसित बनाने का संकल्प जो है वो हम आगे लेकर बढ़ रहे हैं। और सरकार ने कहा कि यहाँ पर 4 वर्षों में तेज गति के साथ आर्थिक विकास हुआ है और मत्स्य उत्पादन 2 गुना उन्होंने बताया। और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बहुत ज्यादा बढ़ी है जिसको पूरा विश्व देख रहा है और इस वक्त पूरे विश्व की नजर भारत पर है, क्योंकि जिस तरीके से डिफेंस, और अभी 26 जनवरी बीता जिसमें हमने देखा कि कितना ज्यादा डिफेंस में हम आत्मनिर्भरता दिखा रहे हैं और साथ ही साथ कितनी तेजी से टेक्निक में भी आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। देश के 1 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी जो है वो बनाई जाएंगी। इसका लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करके अब रखा गया है। 9 करोड़ महिलाओं के जीवन में जो है वो बदलाव आ चुके हैं, ये उन्होंने बताया। और ये महिलाओं के लिए जो वादे सरकार ने किए थे वो धरातल पर नजर भी आए और इसीलिए इस बार महिलाओं की नजर इस पर थी। और हमने आपको बताया भी था कि किस तरीके से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इसका संकेत दिया था कि महिलाओं के लिए ये जो पूरा बजट है उस पर फोकस करने की कोशिश की जाएगी और वैसा ही यहाँ पर हुआ। और हर बार निर्मला सीतारमन जो साड़ी पहनकर आती है उस पर खूब चर्चा होती है और इस बार कहा गया था कि वो यहाँ पर नीले कलर की साड़ी पहनकर आई है, जिसका मतलब आसमान जिसकी कोई लिमिट नहीं होती और साथ ही नेचर उनकी साड़ी पर नजर आ रहा था। और उन्होंने उसी तरीके से किसानों के लिए और बाकी तमाम चीजों के लिए और साथ ही साथ इन्वायरमेंट के लिए भी कई बातें कही और कहा कि सरकार हर तरीके से कोशिश कर रही है कि यहाँ पर भारत में इक्वालिटी लाने की और सेक्युलरिज्म की बात उन्होंने की कि हम बिना किसी कास्ट के, बिना किसी रिलीजन के ये तमाम चीजें लागू कर रहे हैं और सबको फायदा देने की कोशिश जो है वो इसका दावा करता हुआ सरकार जो है वो नजर आए। फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पर अंतरिम बजट पेश हो चुका है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए और तेजी से काम किया जाएगा और किसानों को सशक्त बनाने पर हमारी सरकार जो है वो जोर दे रही है। देश में उन्होंने कहा कि मंडियों को ई-नाम से जोड़ा जाएगा और हमारी सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है, जो काफी बड़ी मात्रा है। और साथ ही उन्होंने कहा कि सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए हमारी सरकार टीकाकरण लेकर आई है और लड़कियों को इससे बचाने के लिए उन्होंने मुफ्त टीका जो है उनको देने का वायदा किया है। और देश के मेडिकल कॉलेज में सुविधाएं जो है वो बढ़ेंगी। आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी आशा कर्मी और आंगनबाड़ी कर्मचारियों को सुविधाएं जो है वो दी जाएंगी, यानी इसमें भी महिलाओं को आगे रखने की कोशिश जो है वो की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार समावेशी विकास को आगे बढ़ावा देती है और प्रत्येक भारतीय की आकांक्षा को
पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना कोरोना की चुनौतियों के बावजूद ग्रामीण क्षेत्र में 3 करोड़ को लेकर यहाँ पर लक्ष्य हमने प्राप्त किया है। फिलहाल इसी बीच शशि थरूर का बयान आ रहा है, सुनवाते क्या कुछ कह रहे हैं। Rising and particularly inequality at the bottom echelons of our society. So GDP has a very different meaning in what we are seeing in the country than what she is saying. बजट आज जो पेश किया गया उसमें जीडीपी की नई परिभाषा भी दी गई। जी, हिस्टोरिकली मैं ये कहना चाहती हूँ, एक शब्द में नहीं, अ वुमन एम्पावरिंग द नेशन under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. He always believed in that the country has to go forward with women leading the country. मुझे लगता है बहुत बड़ी उपलब्धि है। गरीब, किसान, युवा, महिला, हर किसी तबके को हम आगे बढ़ा रहे हैं विकसित भारत के लिए। और प्रधानमंत्री जी सिर्फ भारत को आगे नहीं बढ़ाए, विश्व में भारत को आगे बढ़ा रहा है और विश्व भारत को देख रहा है। एक और बात कही उन्होंने कि जुलाई में जब पूरा बजट पेश करूंगी, तो किस तरीके से इस मतलब को समझते हैं? नहीं, इसका मतलब है जनता प्यार दे रही है। ये प्यार का अवलोकन है। जैसे बजट में हर साल में हम टैक्सेशन का अवलोकन करते हैं, उसका प्रमाण देखते हैं, उसका गणित देखते हैं। ये भी गणित उसी का है कि जनता के प्यार का गणित है कि जुलाई में बजट होगा। लेकिन बहुत जरूरी बात है, उसके पहले जो व्हाइट पेपर आएगा तो हमारा जो नव मतदाता है वो जरूर देखेगा 2014 के पहले भारत की स्थिति कितनी खराब थी और 10 साल में भारत ने क्या क्या नहीं अचीव किया है। मैडम, तो लगातार इस पर रिएक्शंस जो है वो आने शुरू हो गए। अलग अलग नेताओं की अलग अलग टिप्पणियां हैं यहाँ पर, और पक्ष के लोगों ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से यहाँ पर बजट की बात हुई थी उसमें सबको इंक्लूड किया गया। फिलहाल लगातार बयान आ रहे, एक और बयान सुनवाते हैं। बजट बहुत ही लाभदायक। इनकम टैक्स में तो कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब अभी चुनावी वर्ष है, अब देखिए जिस तरीके से चल रहे हैं अमृत काल के अंदर, वो विकसित भारत के लिए चल रहे हैं। तो जो कुछ भी होगा वो विकसित भारत के लिए होगा। सर, बजट कितना इम्पोर्टेंट है सर, और लोगों को इससे कितना लाभ मिलेगा? देखिए, टैक्स में कोई बदलाव नहीं है तो लोगों को लाभ तो मिल ही रहा है। लोग बाग जो सोचते रहते हैं कि टैक्स के अंदर बदलाव आएगा, और हर चीज़ के बाद उसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से अर्थव्यवस्था को और मजबूत किया जाए और टैक्स पेयर के लिए और क्या सुविधाएं की जाए, इसके बारे में बताई गई है। आम जन को भी इस बजट में टच किया गया है, आवास मिलेंगे और बाकी की चीजों का भी लाभ मिलेगा। बिल्कुल, सबको टच किया गया। நிதிநிலை அறிக்கை என்பது அரசாங்கத்துடைய வாடிக்கையான செலவுகளை பூர்த்தி செய்வதற்காக சமர்ப்பி तो अंतरिम बजट जो है वो पेश हो चुका है, और एक बार फिर से फाइनेंशियल एक्सप्रेस डिजिटल के एडिटर रोशन पवैया मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इससे पहले भी हमने चर्चा की थी कि किस तरीके का ये बजट होगा। सर, बजट हमारे सामने है और मैं आपको अब ये पूरा जो सेशन है वो दे रही हूँ कि आप ये समझा सके कि जो जो चीजों की हमने बात की थी, जो जो उम्मीद हमने लगाई थी और आम जनता ने लगाई थी, वो कितनी पूरी हुई है, और इस बजट को टिक या क्रॉस क्या कहेंगे? एक्चुअली ये बजट मोर ऑफ अ रिपोर्ट कार्ड है गवर्नमेंट का। और उन्होंने कुछ खास अनाउंसमेंट्स नहीं दिया इसमें, एंड दैट वाज आई थिंक अ लिटिल बिट ऑफ अ डिसअपॉइंटमेंट। टैक्सेशन की जगह पे वी वर एक्सपेक्टिंग मे बी देयर वुड बी सम चेंज। एब्सोल्युटली नो चेंज इन टैक्स स्लैब्स, इनकम टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं है, डायरेक्ट टैक्सेस में कोई चेंज नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी कोई चेंज नहीं, इट विल कंटिन्यू एज इज। सो दैट सेड, this was probably one of the shortest speeches by Finance Minister Nirmala Sitharaman. 58 minutes में पूरा budget खत्म कर दी। So she just highlighted basically what the government has been doing in the last 10 years. So जैसे हमने पहले भी बात किया था, this is more of a report card for the government with an eye on the general election. So the subtle messaging here is that the government has done so much in the last 10 years. Can we look at doing more in the next 5 years? So the whole goal was for Viksit Bharat, which is a developed India by 2047. And to that extent, a lot of things were announced, basically 4 pillars, which was bringing the poor out of poverty, focus on youth, focus on women, and focus on farmers. Right? 25 crore people have been freed from multidimensional poverty in the past 10 years, is what the finance minister said. She also said that the average real income has increased by 50% in the past 10 years. So again, a sort of a report card by the government on how the livelihood of the people has improved over the past 10 years, taking a subtle dig at the previous regime, saying that not so much had happened then and we have done so much in this regime. And then there was a mention of
how much has been transferred into the PM Jandan accounts. 34 lakh crore rupees has been transferred directly, which has saved the government about 2.5 lakh crores for the government. Then for street vendors, there were like 78 lakh street vendors, and of which 2.3 lakh have got direct credit for the third time. This is the PM Swanidhi scheme that she talked about. And then she also spoke about schemes for the disabled and transgender. So that she's saying this is an inclusive government. She was trying to make that statement that they're taking everybody forward. 11.8 crore rupees, 11.8 crore farmers got direct financial assistance in this last financial year. Crop insurance to 4 crore farmers was given out. This is another highlight. Again, focus on farmers, women, youth, and the poor. This is what she highlighted. Coming to education, she said the NEP 2020 has been bringing in transformation. 1.4 crore youth have been trained and skilled. 3,000 new ITIs are being set up. That is for skill development, polytechnics and such. 22.5 lakh crores to 43 crore people under the PM Mudra scheme. Then she spoke about Startup India, Startup Credit Guarantee Scheme, so that there will be benefits for startups. Again, I should mention here, this was more of a report card and nothing of an announcement by the government. She also happened to mention sports because, yes, India has been doing fairly well in sports, in the last 1 year. We had the highest medal tally in the 2023 Asian Games. So I don't know how much of credit the government can take from that, but yes, she had to mention it in the budget. Being an election year, I guess it's one of the things she had to mention. She also mentioned that chess is coming to the forefront. We now have 80 chess grandmasters in India now. Then, of course, women empowerment. We spoke about that before the budget speech, and we were sure that there would be some women empowerment. And this time again, she has spoken about that. Again, highlights of what was done. 30 crore loans were given, 28% enrollment in higher education by women. In STEM courses, there's been a 43% enrollment, which is one of the highest in the world when it comes to women in STEM courses, which has also led to an increased participation of women in the workforce. 70% of houses are going to women in rural areas, and which has enhanced their savings as well. Then she made a little bit of a change to the acronym of GDP. She said, for this government, GDP stands for governance, development, and performance. This is again playing to the audience. Yes, minimum government, maximum governance, all of that she spoke about. In terms of the economy, she spoke about how GDP has enabled one nation, one market, one tax, and then she also spoke about when it comes to global trade, how India is making a mark. I mean, we've taken the G20 presidency in a year when it's been one of the most difficult years globally, with different wars and sanctions and a lot of economic problems globally. She's saying the India, Middle East, Europe economic corridor will be a game changer, and that will help us realize our dream of being a developed nation by 2047. इसके बारे में आपने बात की तो मैं ये भी पूछ लूं कि रक्षा खर्च पर उन्होंने कहा कि 11.1%, जो कि जीडीपी का अगर देखें तो 3.4% है, तो ये काफी ज्यादा बढ़ा रहे हैं। और इसके पहले भी हमने रेल पर बात की थी, तो इसको आप किससे देखते हैं? No, so this was again expected. Defense and railways outlay would be increased because this is the area that the government has been focusing on in the last 5 years. Every year on year, we've been seeing an increase. And this year, if you look at the Republic Day parade, also we had a showcase of far more sophisticated weaponry that we have purchased in the last couple of years. Atmanirbharta. Yes. So that to that front, I think we are on track. She also made a specific mention about the eastern region. The eastern region is a powerful driver of India's growth. 3 crore houses target, that was again on housing. She said 3 crore houses target to be taken up, 2 crore houses to be taken up in the next 5 years for the rural housing scheme. Like we talked about grassroots development, mobilizing Bharat, yahi hai. Matlab sabke saath, sabke vikas should be talking about, and that's what this is about. Specific mention about solar panels, rooftop solarization. जिसमें 300 units of free electricity for every month for 1 crore people because of rooftop solarization, which will lead to savings of between 15,000 to 18,000 rupees annually for households. So electricity bill में थोड़ा कमी आ जाएगी इन लोगों को.
Speaking of green energy, then she spoke about charging of electric vehicles and how there is a huge entrepreneurship opportunity here because we need the charging infrastructure. So we need people setting up for supply and installation of charging infrastructure in the country. So that is one of the areas she spoke about. Then again, housing for the middle class. She said most people are living in either rented houses, all that will be given opportunities to buy or build their own houses. Now, this is a statement that we need to expand upon. We do not know the fine print about this. Could it mean that home loan interest rates would be brought down? Would there be some अफोर्डेबल kind of, हाउसिंग के बारे में इसमें कुछ अभी फाइन प्रिंट देखना पड़ेगा कि इसमें क्या है, because it was just one statement that she made. Then there was a plan to set up more medical colleges. Already, I think they are falling behind when it comes to this. They had planned to set up number of IITs and IIMs in the last few years, which has actually fallen behind schedule. So it's just a reiteration of that we are setting up these IITs and IIMs. So that was a reiteration of that. A very important point she did make was the cervical cancer vaccination for girls between 9 to 14 years of age. This, I think, is a very important program like we've had in the past with our pulse polio program, etc. With cervical cancer being a very common type of cancer with women. This, I think, is a good move by the government to, if they can actually get it out and roll it out across the country. And a few additional schemes she talked about for maternal and child healthcare as well. Also, the Ayushman Bharat, the healthcare scheme to be extended to all ASHA and Anganwadi workers as well. वो भी था. For farmers के लिए, she just spoke about dairy farmers. India is the world's largest milk producer, but our cows are not that efficient in producing milk. Milk cows. So to that extent, they're going to bring in some schemes again. ये सब तो fine print में we can figure out कि क्या schemes है government का. This was just a statement of intent. उसके बाद she spoke about again the mantra of the government, from Atal Bihari Vajpayee to Modi, Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Vigyan to Jai Anusandhan, which is innovation now. Basically, want to encourage more entrepreneurship and innovation in India. फिर railways के बारे में बात की, which is 3 नए corridor. 3 new corridors for energy, mineral, and cement corridors to be set up so that there can be good transport across the country. And 40,000 bogies to be converted to Vande Bharat standards. If you see the new Vande Bharat coaches, they have much better toilets, much better fitting, seating comfort. She also added कि 41,000 और नए डब्बे बना रहे हैं. That is very large amount कि 41,000 और नए डब्बे और उसका जैसा हमने बात की थी कि स्लीपर क्लास की तरफ वंदे भारत को शिफ्ट करेंगे. Which is good. I mean, India has one of the largest rail networks in the world, and if we can increase the comfort among the trains that we have, it would be almost like maybe European standards, because the trains, again, after India, I think Europe has the best trains, rail network, right? And then she spoke about, again, more on green energy, about coal gas liquefaction, reducing import of natural gas and ammonia. So for that extent, she's asked, she wants to bring in the mandatory blending of biogas in CNG for domestic purposes. Basically, gobar gas or CNG को मिला के at least domestic households के लिए, this is one thing that they want to start. And for this, they are going to provide financial assistance to procure biomass. And this I see as a plus for rural India, for those who have dairy farms, animals. Gobar gas production will increase and will complement CNG. Like already in petrol now you have ethanol blending. In CNG now you will have gobar gas blending. Okay. Then she spoke about the EV ecosystem. The government will expand the e-vehicle ecosystem. There will be more e-buses, more charging infrastructure. And for this, to bring in this, there will be a payment security mechanism. Again, this will be in the fine print. How does this payment security mechanism work? Will be in the fine print of the budget, which will come out shortly. And we'll have to look at that. जीएसटी के बारे में कुछ वन मार्केट जो उन्होंने कहा कि वन मार्केट वन टैक्स, उसके बारे में कोई बड़ी बात जो है उन्होंने कही, या फिर सिर्फ जीएसटी के बारे में जो चीजें थी वो? On GST, she just mentioned that one nation, one market, one tax. Okay. And it has just strengthened the financial sector and made things simpler, which has led to savings for individuals because of GST. And that the states are now coming to terms with the GST compensation that has
earlier there was a lot of debate over people getting the compensation. Different states had different opinions of it, but now I think they've all come together on that. फिर इसके बारे में of course personal taxation में there was no change. Then she spoke about Blue Economy 2.0, which is basically for coastal aquaculture. फिर she spoke about tourist development centers and strengthening tourism development, especially spiritual tourism, and which is an opportunity for local entrepreneurship. And then, of course, she had to mention Lakshadweep, जो अभी news में है. So, port connectivity for domestic tourism, they are going to increase the port connectivity. So, अभी जो mainland tourism है, it's already quite robust. But now we want to increase tourism to our islands. क्योंकि we are comparing लक्षद्वीप और मालदीव्स, लेकिन अभी इंडिया से मालदीव्स जाना बहुत आसान है, लेकिन लक्षद्वीप जाने के लिए उतनी सारी अवेलेबिलिटी इतनी मुश्किल है. फ्लाइट्स कम है, पोर्ट कनेक्टिविटी कम है, the number of ships. और उसके बाद जितने ज्यादा वहां पर आइलैंड्स है, उतनी ज्यादा डेवलपमेंट वहां पर नहीं. कुछ ही आइलैंड है जहां पर आप जाएंगे और घूम सकते हैं और सारी सुविधाएं जो वो मिल सकती है, इसलिए इसके लिए डेवलपमेंट करना जरूरी है. दोनों साइड लक्षद्वीप भी है और इस साइड अंडमान निकोबार भी है जिसमें डेवलपमेंट होनी है. She spoke about FDI inflow. I mean, again, this is just a tick mark on the report card. The FDI inflow from 2014 to 2023 was 596 billion USD, which was twice the FDI inflow. She had to make that point of the previous 10 years. 10 years. So, then 75,000 crore support for reforms linked to state governments will be given. And she also mentioned that Amrit Kal will now be Kartavya Kal. So, besides that, targets for next year, 5.1% of GDP is the fiscal deficit target. We had said that, it would be 5.9% was the fiscal deficit target this year. She's saying revised estimate is 5.8%, which means they're bettering it. Okay. So, to that front, I think it's a feel-good interim budget. It's a report card for the government with an eye on the general elections. I think that is my takeaway from this. कि हमने ये सब किया है पिछले 10 साल में. Look, we have performed well. This is our report card. Now, take this report card and do what you have to do when you go to the ballot box is what she's trying to say very subtly in this. We'll have to look at the fine print to see जो schemes इन्होंने बोला है उसके क्या outlay है उसमें. ठीक है, यानी कि ये पूरी जो चीजें हैं वो एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया गया कि हमने साल में क्या क्या चीजें की हैं और सारी चीजों को टिक मार्क करने की कोशिश की गई कि भाई हमने ये चीजें की हैं और आपके सामने ये चीजें हम पेश कर रहे हैं और इतना डेवलपमेंट हमने किया. जैसे कि सर ने बताया कि बहुत सारे सेक्टर्स में अभी भी डेवलपमेंट होना बाकी है और जैसे उन्होंने कहा कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पूरा तैयार करना है, क्योंकि एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रोत्साहित कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास इतने चार्जिंग स्टेशन है नहीं कि अगर रोड पे इतने सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल निकल जाएंगे तो चार्जिंग स्टेशन का बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा. कई सारे मॉल में है लेकिन अभी इतना ज्यादा नहीं, तो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर और ऐसी कई सारी चीजें से लक्षद्वीप के बारे में आपने बात की, तो उस पर भी बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है. Also, one point on the tax processing she made that earlier it used to take 93 days to get your returns. I mean, to get उन्होंने कहा कि ये प्रोसेस हम आसान करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार और कर भी रहे हैं. 93 days of time has come down to just 10 days in which you can get your return or your refund. So, in fact, I think if you've done your e-filing, you would have noticed that अभी काफी easy हो गया. So, I think that is another thing she pointed out. और सर उन्होंने कहा काफी बड़ा अमाउंट उन्होंने बताया, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, बट उन्होंने कहा कि इतने सारे लोगों को हमने गरीबी रेखा से बाहर खींचा है. तो इस पर रिपोर्ट कार्ड क्या है कि उन्होंने बताया कि इतने सारे लोगों को हमने खींचा और साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसी कई चीजें हमने कोशिश की है जो हमने वादा किया था. 25 करोड़ लोगों को हमने उससे बाहर किया है. तो ये रिपोर्ट कार्ड और भी जो पॉइंटर्स है आपको लगते हैं कि ये चीजें उम्मीद की जा रही थी कि हमने पूरे साल में उम्मीद की थी और उसको टिक कर लिया है. So exactly on this point we were discussing just before her speech कि ये mobilizing भारत वाला बजट होगा, where they will try to come to the grassroots, the middle class, the vote bank. It's लोक लुभावन वही है, वही हुआ है, and that's why it's also probably the shortest budget speech, because I think the hard-hitting statements and the schemes will come in June after elections, depending on which government comes to power, because that will be the main budget that we have to watch out for. ठीक है, तो जैसा कि आपने सुना कि रोशन सर ने बताया कि किस तरीके से ये पूरा रिपोर्ट कार्ड जो है, क्योंकि स्पीच की शुरुआत में ही उन्होंने जो भी आर्थिक उपलब्धियां थी, बड़ी आर्थिक उपलब्धियां, उनको गिनाने से ही इसकी शुरुआत की थी और लगातार वो बताती रही कि किस तरीके से 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला गया, 3000 से ज्यादा ITI जो है वो बनाए और महिलाओं के लिए सर्वाइकल कैंसर के लिए जो वैक्सीन है वो वुमेन्स के लिए 9 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए भी वो तैयार करेंगे और साथ ही साथ वुमेन के लिए, फार्मर्स के लिए कई सारी ऐसी चीजें की जा रही है. इलेक्ट्रिक व्हीकल जो मैन्युफैक्चर
रिस्ट्रक्चरिंग है उसके लिए लगातार काम किया जा रहा है, और इसी तरीके से रिपोर्ट कार्ड। हालांकि जिस तरीके से उन्होंने पहले भी कहा था कि कोई बड़ा अनाउंसमेंट हम नहीं करेंगे इसमें, और पीएम मोदी बहुत श्योर है कि जो आगे बजट आने वाला है, बड़ा बजट, पूर्ण बजट जो है वो हम ही लोग पेश करेंगे, और जुलाई तक उसकी उम्मीद भी की जा रही है, और उसमें आप बड़ी उम्मीदें जो है वो कर सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए रोशन सर बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल आपको बता दूं कि जिस तरीके से बजट आया उसके बाद तमाम नेताओं की इस पर रिएक्शन आ रहे हैं, पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से, क्योंकि सभी लोगों को उम्मीदें थी, और रोजगार और महंगाई पर जिस तरीके से उम्मीद थी उस पर कितना ज्यादा खरी उतरी है, उस पर रिएक्शन सारे आपको बयान सुनाते हैं। काफी डिसअपॉइंटिंग बजट रहा है। उनकी टिप्पणी में मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन अब जैसे देखिए युवाओं के लिए फेम योजना है जिससे उनको ई व्हीकल्स की प्रोत्साहन, उस पर कदम उठाए गए हैं, और जो आवास है उसकी गति और बढ़ाई गई है, लखपति दीदी गति बढ़ाई गई है। ये सब सकारात्मक बजट है। असली बजट तो जुलाई में आएगा, इंटरिम बजट में कोई ऐसी बात नहीं। क्या क्या बेनिफिशियल चीजें थी अगर आपको लगा हो, या जो बताना चाहें आप? मुझे कुछ बताना नहीं है, ये तो वही पुराना बजट चल रहा है, जो काम है वो करनी है, और ठीक है चल रहा है। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और बहुत सारे हम उम्मीद करते हैं कि लोगों को फायदा हो। हमारी तो यही है कि वतन आगे बढ़े, तरक्की करे। देखा कि अंतरिम बजट पेश हो चुका है। इनकम टैक्स स्लैब में कोई खासा बदलाव जो है वो नहीं किए गए हैं, और साथ ही रेलवे से लेकर अन्य सेक्टर में प्रोजेक्ट्स को लेकर सरकार ने अपना विजन जो है वो जनता के सामने रख दिया है। स्टार्टअप के लिए टैक्स छूट 1 साल के लिए बढ़ा दी गई है, और लखपति दीदी योजना की जो विस्तारिता है वो यहां पर उन्होंने की, और राज्यों को ब्याज मुक्त कर्ज योजना जो है वो जारी रहेगी, ये उन्होंने बताया। 3 नए रेलवे जो कॉरिडोर है उनको बनाया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर 11% ज्यादा जो है वो खर्च करने की तैयारी में है। रक्षा खर्च की बात करें तो 11.1% जो है वो बढ़ाया गया है। जीडीपी का 3.4% होगा, और जिस तरीके से अभी हम चर्चा कर रहे थे यहाँ पर बताया भी गया कि यहाँ जो भी रेल के बारे में होता है, और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पर हर साल सरकार यहाँ पर जो अपना खर्च है उसे बढ़ाने की कोशिश भी करती है। राजकोषीय घाटा 5.1% रहने का अनुमान उन्होंने बताया। 44.90 करोड़ रुपए का खर्च है, और 30 लाख करोड़ का रेवेन्यू आने का अनुमान जता दिया गया है। आशा बहनों को भी आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाएगा, और तिलहन के आपको बता दें कि अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा, और हर महीने 300 यूनिट बिजली जो है वो भी फ्री दी जाएगी। 2014 से 2023 के दौरान 596 अरब डॉलर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी कि एफडीआई जो है वो आया है। ब्लू इकोनॉमी 2.0 के तहत नई योजनाओं की शुरुआत जो है वो भी की जाएगी। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा। 50 साल के लिए 1 लाख करोड़ की ब्याज मुक्त जो है लोन उसे दिया भी जाएगा, और लक्षद्वीप के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देंगे। ये सारी जो चीजें हैं वो आप देख रहे हैं कि सरकार आगे क्या क्या चीजें करने वाली और क्या क्या कर चुकी है, उसके बारे में ज्यादा इस पर फोकस किया गया था। 40,000 सामान्य रेल कोच वंदे भारत जैसे कोच में बदल जाएंगे, और सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीन पर ध्यान दिया जाएगा। ये बड़ी जो यहाँ पर जानकारी है निकलकर सामने। इस वक्त आप बड़ी खबर भी देख रहे हैं कि 10 साल में यहाँ पर 40,000 नॉर्मल रेल डिब्बे को वंदे भारत जैसे कोच में यहाँ पर बदलेंगे। 3 करोड़ लखपति दीदी जो है वो बनाई जाएंगी। निर्मला सीतारमण की तरफ से ये बड़े ऐलान इस वक्त आपके सामने रखे गए। इंफ्रास्ट्रक्चर पर 11% ज्यादा खर्च जो है वो किया जाएगा। सभी को पक्का मकान मुहैया जो है वो कराने की एक बार फिर से उम्मीद जताई गई है। स्किल इंडिया में 1.47 करोड़ रुपए जो है उसको यहाँ पर खर्च किए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना 2 करोड़ घर और यहाँ पर बनाने की उम्मीद जताई गई है, और बजट में किसान से लेकर महिलाओं और युवाओं को इसमें इंक्लूड करना सरकार नहीं भूली है। लगातार आपको बता रहे सरकार मध्यम वर्ग के लिए आवास योजना लाएगी। अगले 5 साल में 2 करोड़ घर जो है वो बनाए जाएंगे। पीएम आवास के तहत 3 करोड़ घर जो है वो बनाकर मिलेंगे। मत्स्य संपदा योजना से 55 लाख लोगों को नया रोजगार मिलेगा। 5 इंटीग्रेटेड अफायर सिस्टम जो है वो भी लगाए जाएंगे, और करीब 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनी। अब 3 करोड़ लखपति दीदी को यहाँ पर जो है लक्ष्य रखा गया है। और इसके बाद 390 यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। जीएसटी से 1 मार्केट 1 टैक्स जो है उसे कर दिया गया है, और उन्होंने ये भी बताया कि अभी इसमें कोई बदलाव नहीं है। भारत मिडिल ईस्ट
यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए एक परिवर्तनकारी पहल की जो है उसकी शुरुआत कर दी गई है और जीएसटी से उन्होंने बताया कि आगे जो चीजें हैं वो निकलकर सामने आई और डिफेंस के लिए 6.2 लाख करोड़ का बजट जो है वो रखा गया था। इसके अलावा 68 लाख स्ट्रीट वेंडर को मदद जो है वो दी गई है। 4 करोड़ किसानों को पीएम फसल बीमा योजना का लाभ दिया जा रहा है और पीएम किसान योजना से 11.8 करोड़ लोगों को आर्थिक मदद जो है वो भी मिली है। मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ से 86,000 करोड़ का बजट यहां पर जो है वो किया गया है। स्किल इंडिया मिशन में 1.4 युवाओं को जो यहाँ पर ट्रेड किया गया है और साथ ही यहाँ पर 3,000 नए आईटीआई जो है वो बनाए गए हैं। 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर जो है वो निकाला गया। पीएम मुद्रा योजना के तहत 22.5 लाख करोड़ मूल्यों के यहाँ पर 43 करोड़ लोग जो है वो मंजूर किए गए और महिला उद्यमियों को 30 करोड़ मुद्रा योजना जो है ऋण के तौर पर दिए गए हैं और 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता दी गई और गरीब कल्याण योजना में 34 लाख करोड़ खाते में यहाँ पर जो पैसे हैं वो भेजे गए हैं। तो सरकार ने अपना रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रख दिया क्योंकि अब चुनाव ज्यादा दूर नहीं है और इसी रिपोर्ट कार्ड के जरिए आपको समझना होगा कि यहाँ पर क्या आपको लगता है कि जो उम्मीदें आपको थी उस पर सरकार खरी उतरी है। ये रिपोर्ट उनने सामने यहाँ पर रखी है और दिखाने की कोशिश की कि आखिरी छोर पर जो व्यक्ति खड़ा है उस तक हमने लाभ पहुंचाया भी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमने अंतरिम बजट की परंपरा को जारी रखा और अंतरिम बजट में किसी तरह की लोक लुभावन घोषणाएं नहीं की जाती है। यही वजह है कि सरकार ने किसी तरह की घोषणाएं करने से परहेज किया। हालांकि कॉर्पोरेट टैक्स घटाकर 22% जो है वो कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। फिलहाल आयकर दाताओं को राहत नहीं दी गई है। 7 लाख तक की आय पर टैक्स नहीं लिया जाता है और इनकम टैक्स भरने की प्रक्रिया आसान नहीं की गई और रिफंड भी जल्द जारी किया जाता है। जीएसटी संग्रह जो है वो 2 गुना हो गया और जीएसटी से अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था जो है उसको यहाँ पर बदला गया था, ये उन्होंने बताया। उसके बाद आपको बता दें राजकोषीय घाटा 5.1% रहने का अनुमान भी जता दिया है उन्होंने। 44.90 करोड़ रुपए का खर्च और 30 लाख करोड़ का रेवेन्यू जो है वो सरकार को आने का अनुमान है। 10 साल में इनकम टैक्स कलेक्शन 3 गुना बढ़ गया और उन्होंने कहा कि मैंने टैक्स रेट में कटौती की है। 7 लाख की आय वालों को कोई कर जो है वो नहीं देना होगा। 2025 और 26 तक घाटा को और जो है वो कम करने की कोशिश की जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बायोफ्यूल के लिए समर्पित योजना जो है वो लेकर आए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ई वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। रेलवे समुद्र मार्ग को भी बढ़ावा जो है दिया जाएगा, उनको जोड़ने की कोशिश की जा रही है। पर्यटन केंद्रों के विकास में तेजी लाएंगे। पर्यटन सेक्टर में विकास तेज हो रहा है और राज्यों को ब्याज मुक्त कर्ज जो है वो दिया जा रहा है। इसी बीच बयान सामने आ रहे सुनवाते आपको फिर बताएंगे किस तरीके का रिपोर्ट कार्ड रहा। क्या हो गई 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। गरीबों के लिए आवास, 80 करोड़ लोगों के लिए अन्य योजना, कोविड में किसी को मुश्किल में नहीं आने दिया। इस तरह की अनेक बातें हैं। मेडिकल कॉलेज, IIM, IIT, इंजीनियरिंग कॉलेज, टैक्स पेयर्स की संख्या बढ़ना, जीएसटी कलेक्शन बढ़ना, मतलब हर क्षेत्र में, देश के हर सेक्टर में, हर क्षेत्र में गरीबों के कल्याण के लिए, डेवलपमेंट के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए, लड़ाकू साजो सामान के साथ विमान, पैसेंजर विमान के निर्माण की दिशा में, मतलब आप देख सकते हैं कि हर दिशा में, हर क्षेत्र में देश आगे बढ़ रहा है और इसीलिए भारत के लोग इस सरकार पर। तो यहाँ पर लगातार आपको बयान भी बीच बीच में सुनवा रहे कि किस तरीके से यहाँ पर जो उम्मीद जताई गई थी उस पर सरकार कितनी खरी उतरी है और उसी को लेकर लगातार यहाँ पर बड़े अपडेट भी आपके सामने स्क्रीन पर है कि किन चीजों में यहाँ पर बदलाव किए गए हैं और किस तरीके का रिपोर्ट कार्ड जो है वो सरकार का रहा। और साथ ही आपको बता दें कि सभी को पक्का मकान जो है वो मुहैया कराने के वायदे सरकार ने किए हैं और स्किल इंडिया में 1.47 करोड़ युवा को यहाँ पर ट्रेन भी किया गया। पीएम मत्स्य संपदा योजना को बढ़ावा जो है वो यहाँ पर आए। इसी बीच नितिन गडकरी का बयान सामने आ रहा, सुनते क्या कुछ कह रहे हैं। मुझे विश्वास है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को अब जब से ज्यादा प्रायोरिटी मिली है। हमारा भी बजट काफी बड़ा है और निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे देश का रेलवे का, हवाई जहाज, एयरपोर्ट्स, रोड और पावर, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर के चारों क्षेत्र हैं, हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड के बनेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। देश के विकास को गति देने वाला, रोजगार को बढ़ाने वाला और गांव, गरीब, मजदूर, किसान के कल्याण की सोच रखने वाला ये बजट
आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने दिया है। मैं दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं। नमस्कार। नितिन गडकरी का बयान आपने सुना। उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर और रेल पे जिस तरीके से बताया गया कि 11% जो है वो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर में और खर्च किए जाएंगे और 11.1% जो है रेल में और ज्यादा खर्च किए जाएंगे। और उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद जताता हूं कि इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर और रेल जो है वो देखने लायक होगा। फिलहाल एक और बयान बजट के भाषण में स्पष्ट हो चुका है कि देश किस तरह से आगे बढ़ रहा है। 2013-14 तक देश की स्थिति क्या थी और मात्र 10 वर्षों में देश की स्थिति क्या हो गई। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। गरीबों के लिए आवास, 80 करोड़ लोगों के लिए अन्न योजना, कोविड में किसी को मुश्किल में नहीं आने दिया। इस तरह की अनेक बातें हैं। मेडिकल कॉलेज, IIM, IIT, इंजीनियरिंग कॉलेज, टैक्स पेयर्स की संख्या बढ़ना, GST कलेक्शन बढ़ना, मतलब हर क्षेत्र में, देश के हर सेक्टर में, हर क्षेत्र में गरीबों के कल्याण के लिए, डेवलपमेंट के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए, लड़ाकू साजो सामान के साथ विमान, पैसेंजर विमान के निर्माण की दिशा में, मतलब आप देख सकते हैं कि हर दिशा में, हर क्षेत्र में देश आगे बढ़ रहा है। और इसीलिए भारत के लोग इस सरकार पर नाज है, उनको गर्व करते हैं। कैसे देखते हैं आप इस बजट को? इस बजट ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਬਜਟ ਖਾਲੀ ਖੋਖਲਾ ਸੀਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਯੁਵਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਖੋਖਲੀ ਪੀਠ ਥਪਥਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2014 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਣਗੇ, ਹਰ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਣਗੇ, किसानों की आमदन ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, 5 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ 25 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, 25 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੱਕਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਖੁਦ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਅੰਨਦਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ। ਅੱਛਾ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਖੋਖਲਾ ਉਹ 33% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਚਿੱਤਰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ है सामने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ज़मीन आसमान का अंतर हैगा। चुनावी बजट नहीं, मैं तो कहती हूँ एक तरीके से थोड़ी मुझे इसमें एरोगेंस नज़र आ रही थी कि हम जुलाई में हम बजट पेश, या तो आपकी कोई प्लानिंग है जो देशवासियों को नहीं पता, क्योंकि हर एक इलेक्शन में जो भी यहाँ पहुँचता है, पहली चीज़ आपको ये पता है, यू कैन नॉट टेक एनी इलेक्शन फॉर ग्रांटेड, क्योंकि इलेक्शन के रिजल्ट लोग क्या समझते हैं वो लोग ही जानते हैं। और आज की डेट में आप पहले से ही इतनी एरोगेंटली आप अनाउंस कर रहे हैं कि सही बजट हम जुलाई में करेंगे, तो पता नहीं आपने क्या प्लानिंग करी है और ये आपके पास ये ओवर कॉन्फिडेंस क्यों है, ये आप ही जानते हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर समझती हूँ कि आज समा था कि 10 साल में जो 2014 में आपने बोला था, आप वही चीज़ें निकाल के लोगों को बताएं और उसका वेरवा दें, ना कि आगे के और सपने दिखाएं। मैम, आज जो बजट पेश हुआ है, ये कहा गया कि विकसित भारत का बजट पेश हुआ है, आप क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है? देखिए, आज तो मैं उम्मीद कर रही थी कि जो 10 साल पहले आत्मनिर्भर भारत का बजट ऐलान किया गया था और 10 साल पहले जो बोला था कि ये सरकार आएगी तो अच्छे दिन हिंदुस्तानियों के आएंगे, हर एक के खाते में 5 लाख रुपए आ जाएंगे, 2022 तक किसान की आमदन दुगनी हो जाएगी, हर खेत तक पानी आएगा, 5 करोड़ युवा को रोजगार मिल जाएगा। 10 सालों के लंबे समय में उम्मीद तो ये थी कि जो वादे किए थे उनके क्या स्टेटस है आज 10 साल बाद, उसकी बात करेंगे। लेकिन अपनी पीठ थपथपा के कि बहुत स्टुपेंडस काम, कमाल का बेमिसाल काम किया है और 25 करोड़ लोगों को पॉवर्टी लाइन से एलिवेट किया है, और अगले ही लाइन में आप कह रहे हैं कि 80 करोड़ हिंदुस्तानियों को
मतलब 70% आबादी को आपको राशन देना पड़ रहा है क्योंकि वो खुद कमा के खाने लायक नहीं उनकी हैसियत है। तो ये दोनों कॉन्ट्रडिक्शंस कैसे चलेंगी? आज बताना था कि कितने भारत की पॉपुलेशन 140 करोड़ में से आत्मनिर्भर कितने हो गए हैं, 5 करोड़ में से कितने युवा को आपने नौकरी दे दिया है, 2022 तक आपने 22-24 तक कितने किसानों की आमदन दुगनी हो गई है, कितना नमामि गंगा हो गया है या कितना स्वच्छ भारत हो गया। ये चीज़ों के जवाब देने थे ना। अब आप अगले 5 सालों में हम ये करेंगे, पहले तो पिछले 5 साल को इतना लंबा समय उसका लेखा जोखा दीजिए। सो वो कुछ देखने को नहीं मिला था। हाँ, ये मैं ज़रूर अप्रिशिएट करती हूँ कि कोई इन्होंने, जो मैं उम्मीद कर रही थी कि शायद वोटों की राजनीति के लिए रेवड़ी बांटेंगे, वो बांटने का काम नहीं किया। ये बहुत अच्छा एक फैसला था, लेकिन इसकी दुख ज़रूर है कि कहीं ना कहीं जो ज़मीनी हकीकत आज के 60% हमारी आबादी गांव में रहती है। अब गांव की महिला हो, गांव का युवा हो, अन्नदाता हो, उनके जो हकीकत में हालात हैं और जो यहाँ पे बोला जाता है वो एक ज़मीन आसमान का फ़र्क है, कट ऑफ फ्रॉम रियलिटी कहीं ना कहीं। आप ये मानते हैं कि देखिए, खास हमारी जो गारंटी परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासी को दिया था 2014 में, हर बिंदु में उन्होंने निष्ठापूर्वक उसको पालन किया है। इसकी वजह से देश का विकास यात्रा तेज होने लगा है और आपने खुद देखी है हर लेवल पर जो डेवलपमेंट हुई है, जो परिवर्तन हुई है। और सबसे बड़ी बात है 25 करोड़ लोगों को वो गरीबी से उन्होंने उनको मुक्त किया। इतनी बड़ी सफलता आज़ादी का पिछली 75 ईयर्स के अंदर, तो मुझे लगता है कि ये अनुभव हमारे सबके लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि कांग्रेस तो बोलता था गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, वास्तव में कुछ नहीं कर पाया। लेकिन हकीकत में अगर गरीबों के लिए कोई फरिश्ता के रूप में आए, वही नरेंद्र मोदी जी। और इस बजट के जरिए ये स्पष्ट हुआ है कि अगली 2047 तक इंडिया निश्चित रूप से दुनिया का सबसे मजबूत विकसित देश बनेगा। क्योंकि सारे बिंदु में वही एक इंडिकेशन है कैसे हर पैरामीटर में आज देश विकास यात्रा पर तेज से चलने लगा है। तो इसलिए मैं तो कहूँगा कि हमारी 140 करोड़ जनता के लिए ये बजट बहुत महत्वपूर्ण है और हर के विकास के लिए ये बजट प्रस्तुत की गई है। सर और सर बजट को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डांगरिया 2014 চনত যি প্ৰতিশ্ৰুতিৰে তেখেতে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিছিল, সেই প্ৰতিশ্ৰুতি তেখেতে আখৰে পালন কৰিছে। तो लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और साथ ही साथ बयान भी सुनवा रहे हैं। अब पक्ष के जो लोग हैं यहाँ पर, उनका कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पर पेश किया गया कि करीब 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर किया गया है, ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। और साथ ही जैसे कि पहले सरकार कई बार कहती थी कि गरीबी जो है वो हटाएंगे, लेकिन हटा नहीं पाती थी, और सरकार ने जो रिपोर्ट कार्ड पेश किया उसमें वो ये दावा कर रहे हैं कि 25 करोड़ लोगों को यहाँ जो गरीब में घिस रहे थे, बेचारे परेशान हो रहे थे, उन्हें यहाँ से बाहर निकालने की जो कोशिश है वो सरकार की काफी सक्सेसफुल मानी जा रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर सबसे बड़ा जो आज का पॉइंटर रहा, और ज्यादातर यहाँ पर जो है पहले कई सारी उम्मीद की जा रही थी, लेकिन ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग फैक्टर था कि सर्वाइकल कैंसर रोकने की कोशिश जो है वो यहाँ पर सरकार की तरफ से चालू की जाएगी। इसके लिए टीकाकरण कराए जाएंगे और किसानों की आय बढ़ाने की कोशिश जो है वो भी की जाएगी, इस पर उन्होंने कहा। और सर्वाइकल जो कैंसर है उसको रोकने के लिए उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो वैक्सीनेशन है उसमें 9 से 14 साल की जो लड़कियां हैं वो वैक्सीनेशन उनको प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि ज्यादातर ये चीजें जो है वहां से शुरू हो जाती है, जिसको लेकर सरकार काफी सतर्क नजर आ रही है। इसके बाद उन्होंने कौन कौन सी बातों पर जोर दिया? उन्होंने कहा किसानों की आय बढ़ाने की जो कोशिश है वो जारी रहेगी, मिशन इंद्रधनुष में टीकाकरण जो है वो बढ़ाया जाएगा, नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे और इसके लिए कमेटी जो है वो गठित करी जाएगी, 9 से 14 साल की लड़कियों को मुफ्त टीका जो है वो लगाया जाएगा, फसलों पर नैनो डैप पर इस्तेमाल जो है उसका बढ़ाया जाएगा, डेयरी विकास के क्षेत्र में अच्छा काम जो है वो करने की कोशिश की जाएगी और दुग्ध किसानों को बढ़ावा जो है वो देने की कोशिश सरकार की इसी तरीके से जारी रहेगी। 1361 मंडियों को ई नेम से जोड़ दिया जाएगा और अगले 5 साल में विकास की नई परिभाषा जो है ये तमाम लोग गढ़ते हुए नजर आएंगे।
आशा बहनों को भी आयुष्मान योजना का जो है वो लाभ दिया जाएगा और तिलहन के अनुसंधान में बढ़ावा जो है वो दिया जाएगा और हर महीने 300 यूनिट बिजली जो है वो फ्री सरकार की तरफ से दी जाएगी। इसी बीच बयान सामने आ रहा सुना। The opposition job is to criticize and they'll continue to criticize even when they lose the next election. Sir, do you think that this budget is touch every common person's? Look, the last 10 years, the Prime Minister Narendra Modi ji's policies, his governance, his corruption-free governance, his use of technology in governance has ensured that every person, every Indian has been touched by the government and governance through various schemes and through the determination to make sure nobody is left behind. So Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas has played out not just as a slogan, as a real governance ideology and a governance theme. When are you expecting the white paper? কিছু বাংলায় জগন্নাথ আজকের বাজেটকে নিয়ে কি বলবেন, আপনার কি ফার্স্ট রিঅ্যাকশন? এ বাজেট আজকে স্বাধীনতার পর শ্রেষ্ঠ বাজেট, সবচাইতে অর্থ বরাদ্দ হয়েছে পিছিয়ে পড়া মানুষের উন্নয়নের জন্য এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেখানে ট্যাক্স আদায়ের গুরুত্ব দিয়ে সেই অর্থ পিছিয়ে পড়া মানুষের কাজে ব্যবহারের জন্য এই বাজেট। আজকে বাজেট को लेकर लगातार जैसे जैसे बयान सामने आ रहे हैं आपको सुनवा रही कि किस तरीके से यहाँ पर पक्ष और विपक्ष दोनों यहाँ पर for 1 lakh crores is a big positive. It has been a request from industry in the past that research should be supported by the government, and this is a good new initiative in this direction. No, I think while exact numbers have not been reached, they have been broadly in line with our expectations. I would say where I should give পিছিয়ে পড়া মানুষের কাজে ব্যবহারের জন্য এই বাজেট। आज के बजट को लेकर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये बहुत बढ़िया बजट हुआ। नेशनल बजट जो होना चाहिए, सबसे अच्छा आज़ादी के पास जो विकसित भारत, वो विकसित भारत जो कैसे बन रहा है, इसलिए ये जो एक जल्दी चटकदारी से सोच आ जाएगा सबका पिछले वर्ग का उन्नयन के बजट है। बजट बहुत इम्पोर्टेंट था, मतलब जो काम हमने किए हैं, युवा है, महिला है, दलित है, आदिवासी है, किसान है, ऐसे लोगों के लिए स्किल ट्रेनिंग है। 1 करोड़ नौजवानों को स्किल ट्रेनिंग दे दिया है। 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज दिया जा रहा है कोविड के टाइम से। और बहुत सारा जो हमारे सरकार का कार्यक्रम है विकास का, वो निर्मला सीतारमन जी ने देश के सामने रखा और आगे भी हमारी सरकार आएगी तो हम देश को विकास की दिशा में आगे बढ़ाएंगे। G20 का देश हमको मिली थी, इसका भी पूरी दुनिया भर में चर्चा हुई थी, इसीलिए देश का नाम पूरी दुनिया की लिस्ट में है। तो इसीलिए अगले 5 साल में हमको मौका मिलेगा विकास की गाड़ी हमारी बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। Sir, how you see this budget, and do you think that this budget meets a common persons and common man in the country? See, first of all, you must remember this is an interim budget, so you can't expect too much, right? This is government now is at the end of its tenure, but it's a statement of this government when it comes into power, as we all expect it to in the next election. And the statement of intent shows that by and large they are going to increase all the efforts they have already made successfully as far as the economy is concerned, as far as welfare schemes are concerned, as far as growth is concerned, and as far as fiscal prudence is concerned. So by and large, it covers it. There is something in this budget for everything, and it takes care of all the parameters that are necessary for a healthy economy. As opposition, including Congress, is unhappy about this budget. When was the last time you saw the opposition happy? बजट को लेकर क्या प्रतिक्रिया है? एक बहुत ही अच्छा बैलेंस्ड प्रोग्रेसिव बजट, ज़्यादातर वही स्टेटस को जिन्होंने जिस एक्शंस ने आज तक जो परिणाम दिए हैं उसी परिणामों को मेंटेन करते हुए उसी को एक बूस्ट देते हुए आज का बजट रहा। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो वचन विशेषकर महिलाओं के लिए था, वो वचन भी माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बजट के माध्यम से महिलाओं को भी कहीं
आने वाले दिनों में स्पेशल जो है वो प्रावधान प्राप्त हो, उस प्रकार का बजट हुआ है। तो मैं मानती हूँ कि एक जवाबदेही वाली सरकार जो होती है, एक रिस्पॉन्सिबल जो गवर्नमेंट होती है, जब अपना लास्ट बजट पेश करती है चुनाव से पहले वाला, और जिस प्रकार से प्रोग्रेसिव सरकार रही है, जिस प्रकार से प्रोग्रेस हो रहा है इस देश का, उसकी प्रतीति कराता हुआ ये बजट है। और बहुत ही अच्छा बैलेंस्ड, किसी पे लोड ना देता हुआ, किसी भी वर्ग, किसी भी तबके पे कोई एक्स्ट्रा लोड के बगैर ये बजट को मैं मानती हूँ। बिल्कुल ठंडा बजट कह रहा है। अब वो उनका काम है, उनको पता नहीं, हमेशा 2-3 हाइलाइट्स के माध्यम से उनका बजट पेश करने की हैबिट थी, तो वो वही करेंगे। स्वाभाविक रूप से किसी एक वर्ग, किसी तबके को बेनिफिट करते हुए उनके प्रीवियसली भी बजट रहे हैं। हालांकि और अगर आप देखें तो माननीय प्रधानमंत्री जी का बजट हमेशा से होलिस्टिक, ऑल इंक्लूसिव और प्रोग्रेसिव रहा है, और उसी दिशा में आज का भी बजट रहा है। ये जो बजट है वो सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी और सर्वांगीण विकास का बजट है, और अमृत काल के समय में इस बजट को आत्मनिर्भर भारत बनाने में भूमिका इस बजट के माध्यम से बनेगी, और हर वर्ग को, हर गरीब को ताकत देने वाला बजट। 11,11,111 करोड़ का बजट आवंटित किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि देश के विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत संकल्प, और इस पर उनका फोकस है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से जो विकास को और तेज गति मिलनी चाहिए। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ा करके भारत के डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका ये बजट निभाएगा। शुक्रिया सर। It is a budget oriented towards the elections only. All big empty announcements for the falsification of driving the people towards BJP. We are, as the DMK party, member of the parliament, we are very upset that the funds which our chief minister had asked as the recent rain havoc relief fund, that has not been announced. That is a great disappointment, and not a word about Manipur. That was also very disappointing to me as a woman. She is from a southern part of this country. How you see that you are saying that there is nothing on the flood and nothing for the Tamil Nadu? That's a major grouse. And Tamil Nadu has always stood up for all the progressive thoughts and ideas like secularism, treating for the equality of the people, and it will hold its ideal. But even after repetitive plea from the members of the parliament, our floor leader had went and met the Union Home Minister, and so much appeal had been given by the party leaders as well as the people. Nothing has been announced for the relief, and that is the greatest disappointment and grouse. வெறும் வெற்று காற்றடைக்கப்பட்ட பலூன், ஒரு சின்ன ஊசி குத்துனா அப்படியே எல்லாம் வெளியே போயிடும். வெறும் வெற்று வார்த்தைகளில், வெற்று நம்பிக்கைகளில் வருகின்ற தேர்தலை ஒட்டி அறிவிக்கப்பட்ட ஒரு இடைக்கால பட்ஜெட் இது. वर्ष है और उसमें ये बजट आया है, किस तरह से देखते हैं इस बजट? मुझे लगता है कि जो हमने 10 सालों में, मतलब जो हमने सरकार हमारे आने के बाद जो काम हमने किया है, उस काम का लेखा जोखा पूरे देश के सामने निर्मला सीतारामन जी ने रखा है, और देश विकास की दिशा से आगे बढ़ रहा है। देश का हो रहा है विकास, इसलिए पूरे देश भर में दिख रहा है नरेंद्र मोदी जी का प्रकाश। पूरा आकाश नीला नीला दिख रहा है आकाश, क्यों नहीं होगा देश का विकास? तो देश का विकास करने की कोशिश सरकार के माध्यम से हुई है, और महिला हो, युवा हो, जैसे किसान हो, दलित हो, आदिवासी हो, सबके लिए सरकार ने काम किया है। ये जानकारी आज निर्मला सीतारामन जी ने दी है। First reaction on this budget? Well, I think it's a budget which gives a lot of hope, it raises the aspirations of the country, the women, the youth, the farmers. So I'm very happy because I come from a place
a rural place where, farmers are actually getting the benefits of the present government's policies. So I think in the future, I see them reaching the targets of farmers doubling or tripling their income. So it gives me a lot of hope. But opposition is saying that nothing is happening. Well, that's the opposition has to say that. They have to oppose whatever it is. I think that's what's natural. So I wouldn't give much credence to that. Thank you, ma'am. Thank you. 4 जातियां हैं उनकी, गरीब है, किसान है, युवा है, इस तरह की उन्होंने 4 जातियां बताई हैं। ये जो बजट है इसको आप किस तरह देखते हैं, क्योंकि इसके बाद आप लोगों को चुनाव में जाना है सीधे? देखिए, निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश में एक नई परिभाषा, एक नई किस्म की राजनीति की शुरुआत की। जो जात की राजनीति करते हैं, क्षेत्र की राजनीति करते हैं, संप्रदाय की राजनीति करते हैं, उनको करारा जवाब है। देश के इन 4 जातियों, जिसको प्रधानमंत्री जी ने कहा है, बिना उनके उत्थान, कल्याण और विकास के इस देश का विकास नहीं हो सकता। लेकिन विपक्ष जिस तरह से लगातार सवाल उठाता रहा, आज वित्त मंत्री जी ने अपने छोटे से भाषण में बहुत सारा कुछ जो आरोपों का जवाब भी दिया। क्या कहना है, क्योंकि विपक्ष अभी भी बात मानने को तैयार नहीं है? देखिए, विपक्ष का काम ही बात ना मानना, और वो माने ना माने, जनता तो मानती है। और यहाँ वो आते हैं जिनको जनता मानती है। हमको विपक्ष के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। देश की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है, इसमें कोई संशय नहीं। हेलो, लेकिन जो प्रशासन है उसने कल से ही कार्रवाई शुरू कर दी। नीलेश यादव ने भी उसके ऊपर जताया है संदेह कि अपनी टिप्पणी करी है कि इतनी जल्दी जो है सब चीजें हो रही हैं कि जो दूसरा पक्ष है उसको अपना लीगल कोर्स ऑफ एक्शन जो है प्रिवेंटिव मेजर लेने की भी उसको समय नहीं दिया। देखिए, ये तो इनकी पटकथा 2024 के चुनाव के लिए लिखी जा रही है, क्योंकि इनको लग रहा था कि हम अयोध्या में जो है 4 शंकराचार्यों को घर बिठा करके और जो है खुद करके कुछ हो जाएगा, तो वो तो जनता ने उसको दिखा दिया, कुछ नहीं है, वो चला। अब नया ये शगुफा छोड़ा है, और मैं उस पर नहीं जाना चाहता कि ऑनरेबल कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, वो मेरे ख्याल जज साहब कल ही रिटायर हो गए थे फैसला करते हुए, और दूसरे पक्ष को न्याय की प्रक्रिया तो कम से कम, न्याय दो ना दो, कम से कम ऐसा लगे तो सही कि हाँ, न्याय की प्रक्रिया पूरी हुई है। Budget presented, interim budget presented today by the finance minister. So many things have been, so many announced for the youth, for the farmers and the women, especially Asha workers and Anganwadi workers. A new definition has been given to the GDP. How do you see this, ma'am? See, this budget is, if you speak generally, it's very disappointing. And about the whatever is announced, they had 10 years to implement everything. Now, when there is only less than month left out, what is the point of saying anything? And what is the point of now? This is a election stunt. What else can you expect in a budget like this, when in 10 years they didn't do anything for women, they didn't do anything for the youth, and now they want this to be make it look like a very glossy and bright and nice, and again showing the carrot. They want to show the carrot, so whatever they are showing is only showing the carrot to the people, but people will realize that 10 years में कुछ नहीं किया है, अब क्या करेंगे? ബഡ്ജറ്റ് വളരെ നിരാശാജനകമാണ്. 10 വർഷമായി സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ യുവാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയോ തൊഴിലില്ലായ്മ പിടിച്ചു നിർത്തുവാനോ വിലക്കയറ്റം പിടിച്ചു നിർത്താനോ ഒന്നും ചെയ്യാത്ത കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കുറെ അവസാന ഘട്ടത്തിലെത്തി പാർലമെന്റ് ഇലക്ഷൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പടിവാതിക്കൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ പല സ്കീമുകൾ പറയുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമാണ്. ജനങ്ങളെ ഇത്തരത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ പൊടിയിട്ടുകൊണ്ട് വോട്ട് നേടാനാണ് അവരുടെ ശ്രമമെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായും പരാജയപ്പെടും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല.
10 വർഷം ചെയ്യാതിരുന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നതിൽ അതിന്റെ പിന്നിലത്തെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യം വളരെ വ്യക്തമാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാഗ്ദാനമായി മാത്രമേ ഇതിനെ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ਸਰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਇਹ ਬਜਟ ਜੋ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈਗਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਬਜਟ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਬਜਟ ਅਸੀਂ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗਿਣਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਆਸ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਲਿਤ ਔਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਦੀ ਸਪੀਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਪੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿੰਨੇ ਪਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ PM ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 17 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਖੋਖਲਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਸੀਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਏ ਆ। ਕਰਕਸ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਨਾ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਜਟ ਨੂੰ? 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ 2 ਨੰਬਰ ਦਵਾਂਗਾ ਸਿਰਫ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਕੈਸੇ economy status? One more question to the same issue that India aspires to have a 7 trillion economy by 2030 and a 30 trillion economy by 2047. So how practical or how बजट में मतलब खास ही खास है। बजट के भाषण में स्पष्ट हो चुका है कि देश किस तरह से आगे बढ़ रहा है। 2013-14 तक देश की स्थिति क्या थी और मात्र 10 वर्षों में देश की स्थिति क्या हो गई। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। गरीबों के लिए आवास 80 करोड़ लोगों की। बजट तो है ही, लेकिन ये बजट इंक्लूसिव और इनोवेटिव बजट है। इस बजट में कंटिन्यूटी का कॉन्फिडेंस है। ये बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को एम्पावर करेगा। निर्मला जी का ये बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। इस बजट में 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है। मैं निर्मला जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, इस बजट में युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का, भारत की यंग एस्पिरेशंस का प्रतिबिंब है। बजट में 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। रिसर्च और इनोवेशन पर 1 लाख करोड़ रुपए का फंड बनाने की घोषणा की गई है। बजट में स्टार्टअप्स को मिलने वाली टैक्स छूट के विस्तार का भी ऐलान किया गया है। साथियों, इस बजट में फिस्कल डेफिसिट को नियंत्रण में रखते हुए कैपिटल एक्सपेंडिचर को 11,11,000
111 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक ऊंचाई दी गई है। अर्थशास्त्रियों की भाषा में कहें तो एक प्रकार से स्वीट स्पॉट है। इससे भारत में 21वीं सदी के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के साथ ही युवाओं के लिए अनगिनत रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे। बजट में वंदे भारत स्टैंडर्ड की 40,000 आधुनिक बोगियां बनाकर उन्हें सामान्य यात्री ट्रेनों में लगाने का ऐलान किया गया है। इससे देश के अलग अलग रेल रूट पर करोड़ों यात्रियों में आरामदायक यात्रा का अनुभव बढ़ेगा। साथियों, हम एक बड़ा लक्ष्य तय करते हैं, उसे प्राप्त करते हैं और फिर उससे भी बड़ा लक्ष्य अपने लिए तय करते हैं। गरीबों के लिए हमने गांवों और शहरों में 4 करोड़ से अधिक घर बनाए। अब हमने 2 करोड़ और नए घर बनाने का लक्ष्य रखा है। हमने 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा था। अब इस लक्ष्य को बढ़ाकर 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का कर दिया गया है। आयुष्मान भारत योजना ने गरीबों की बहुत मदद की है। अब आंगनवाड़ी और आशा वर्कर, उन सबको इस योजना का लाभ मिलेगा। साथियों, इस बजट में गरीब और मध्यम वर्ग को एम्पावर करने, उनके लिए आय के नए अवसर बनाने पर भी बहुत जोर दिया गया है। रूफटॉप सोलर अभियान में 1 करोड़ परिवारों को सोलर रूफटॉप के माध्यम से मुफ्त बिजली प्राप्त होगी। इतना ही नहीं, सरकार को अतिरिक्त बिजली बेचकर लोगों को 15 से 20 हजार प्रति वर्ष की आय भी होगी और ये हर परिवार को होगी। साथियों, आज जिस इनकम टैक्स रेमिशन स्कीम की घोषणा की गई है, उससे मध्यम वर्ग के करीब 1 करोड़ लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। पिछली सरकारों ने सामान्य मानवी के सिर पर दशकों से ये बहुत बड़ी तलवार लटका कर रखी थी। आज इस बजट में किसानों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण और बड़े निर्णय लिए गए हैं। नैनो डीएपी का उपयोग हो, पशुओं के लिए नई योजना हो, पीएम मत्स्य संपदा योजना का विस्तार हो और आत्मनिर्भर ऑयल सीड अभियान हो। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और खर्च कम होगा। मैं एक बार फिर सभी देशवासियों को इस ऐतिहासिक बजट के लिए शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। के लिए अन्य योजना कोविड में किसी को मुश्किल में नहीं आने दिया। इस तरह की अनेक बातें हैं। मेडिकल कॉलेज, आईआईएम, आईआईटी, इंजीनियरिंग कॉलेज, टैक्स पेयर्स की संख्या बढ़ना, जीएसटी कलेक्शन बढ़ना, मतलब हर क्षेत्र में, देश के हर सेक्टर में, हर क्षेत्र में गरीबों के कल्याण के लिए, डेवलपमेंट के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए, लड़ाकू साजो सामान के साथ विमान, पैसेंजर विमान के निर्माण की दिशा में, मतलब आप देख सकते हैं कि हर दिशा में, हर क्षेत्र में देश आगे बढ़ रहा है और इसीलिए भारत के लोग इस सरकार पर नाज है, उनको गर्व करते हैं।
बोलो कैसे देखते हैं आप इस बजट को? ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਬਜਟ ਖਾਲੀ ਖੋਖਲਾ ਸੀਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਯੁਵਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਖੋਖਲੀ ਪੀਠ ਥਪਥਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2014 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਣਗੇ, ਹਰ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਣਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, 5 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ 25 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, 25 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੱਕਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਖੁਦ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਅੰਨਦਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ। ਅੱਛਾ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਖੋਖਲਾ ਉਹ 33% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਚਿੱਤਰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत जमीन आसमान का अंतर हैगा। चुनावी बजट नहीं, मैं तो कहती हूँ एक तरीके से थोड़ी मुझे इसमें एरोगेंस नजर आ रही थी कि हम जुलाई में हम बजट पेश, या तो आपकी कोई प्लानिंग है जो देशवासियों को नहीं पता, क्योंकि हर एक इलेक्शन में जो भी यहाँ पहुँचता है, पहली चीज आपको ये पता है, यू कैन नॉट टेक एनी इलेक्शन फॉर ग्रांटेड, क्योंकि इलेक्शन के रिजल्ट लोग क्या समझते हैं वो लोग ही जानते हैं। और आज की डेट में आप पहले से ही इतनी एरोगेंटली आप अनाउंस कर रहे हैं कि सही बजट हम जुलाई में करेंगे, तो पता नहीं आपने क्या प्लानिंग करी है और ये आपके पास ये ओवर कॉन्फिडेंस क्यों है, ये आप ही जानते हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर समझती हूँ कि आज समा था कि 10 साल में जो 2014 में आपने बोला था, आप वही चीज़ें निकाल के लोगों को बताएं और उसका वेरवा दें, ना कि आगे के और सपने दिखाएं। मैम, आज जो बजट पेश हुआ है, ये कहा गया कि विकसित भारत का बजट पेश हुआ है, आप क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है? देखिए, आज तो मैं उम्मीद कर रही थी कि जो 10 साल पहले आत्मनिर्भर भारत का बजट ऐलान किया गया था और 10 साल पहले जो बोला था कि ये सरकार आएगी तो अच्छे दिन हिंदुस्तानियों के आएंगे, हर एक के खाते में 5 लाख रुपए आ जाएंगे, 2022 तक किसान की आमदन दुगनी हो जाएगी, हर खेत तक पानी आएगा, 5 करोड़ युवा को रोजगार मिल जाएगा। 10 सालों के लंबे समय में उम्मीद तो ये थी कि जो वादे किए थे उनके क्या स्टेटस है आज 10 साल बाद, उसकी बात करेंगे। लेकिन अपनी पीठ थपथपा के कि बहुत स्टुपेंडस काम, कमाल का बेमिसाल काम किया है और 25 करोड़ लोगों को पॉवर्टी लाइन से एलिवेट किया है, और अगले ही लाइन में आप कह रहे हैं कि 80 करोड़ हिंदुस्तानियों को, मतलब 70% आबादी को आपको राशन देना पड़ रहा है क्योंकि वो खुद कमा के खाने लायक नहीं उनकी हैसियत है। तो ये दोनों कॉन्ट्रडिक्शंस कैसे चलेंगी? आज बताना था कि कितने भारत की पॉपुलेशन 140 करोड़ में से आत्मनिर्भर कितने हो गए हैं, 5 करोड़ में से कितने युवा को आपने नौकरी दे दिया है, 2022 तक आपने 22-24 तक कितने किसानों की आमदन दुगनी हो गई है, कितना नमामि गंगा हो गया है या कितना स्वच्छ भारत हो गया, ये चीज़ों के जवाब देने थे ना। अब आप अगले 5 सालों में हम ये करेंगे, पहले तो पिछले 5 साल को, इतना लंबा समय, उसका लेखा जोखा दीजिए। सो वो कुछ देखने को नहीं मिला था। हाँ, ये मैं ज़रूर अप्रिशिएट करती हूँ कि कोई इन्होंने, जो मैं उम्मीद कर रही थी कि शायद वोटों की राजनीति के लिए रेवड़ी बांटेंगे, वो बांटने का काम नहीं किया, ये बहुत अच्छा एक फैसला था। लेकिन इसकी दुख ज़रूर है कि कहीं ना कहीं जो ज़मीनी हकीकत, आज के 60% हमारी आबादी गांव में रहती है, अब गांव की महिला हो, गांव का युवा हो, अन्नदाता हो, उनके जो हकीकत में हालात हैं और जो यहाँ पे बोला जाता है, वो एक ज़मीन आसमान का फ़र्क है, कट ऑफ फ्रॉम रियलिटी कहीं ना कहीं। आप ये मानते हैं कि देखिए, खास हमारी जो गारंटी परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासी को दिया था 2014 में, हर बिंदु में उन्होंने निष्ठापूर्वक उसको पालन किया है। इसकी वजह से देश का विकास यात्रा तेज होने लगा है और आपने खुद देखी है, हर लेवल पर
जो डेवलपमेंट हुई है, जो परिवर्तन हुई है, और सबसे बड़ी बात है 25 करोड़ लोगों को वो गरीबी से उन्होंने उनको मुक्त किया। इतनी बड़ी सफलता आज़ादी का पिछली 75 ईयर्स के अंदर। Okay. Hello and welcome to the Indian Express, to this special broadcast on the Union budget. As we know, it's the interim budget for the next financial year, which will start in April 2024-25. I have with me Mr. Vaidyanathan Iyer, and we will also be joined by a whole string of senior editors who track the budget in this broadcast. So let me first kickstart with asking Vaidi, what's your first takeaway from the budget? It looks like fiscal deficit is the big news that is dominating. Yeah, I think, behind the fiscal deficit, I think what is interesting to note is how this fiscal deficit has been achieved at first place, because, you can see a sharp cut in expenditure across, key sectors, be it health, be it education. And even on the capital account, you see the expenditure, coming down by almost 50,000 crore rupees compared with the budget estimate. So I think that is something remarkable in achieving this fiscal deficit of 5.8% of GDP. And going forward, I think they have been ambitious, and they are, expecting a slow movements towards fiscal consolidation. That was one thing. The other bit, I think, is the underwhelming assumptions on growth. Because the budget documents clearly suggest that it is a 10.5% nominal GDP growth rate. So I would assume that even if we take the upper band of RBI's inflation at 4%, then the budget makes an assumption of 6.5% of GDP growth rate, real GDP growth rate. Whereas even the chief economic advisor's recent review talks about a 7% plus growth rate. So those two things came out strongly to me. Right. I mean, fiscal deficit coming down is a good news, but if it comes down because capital expenditure is being held back, then that will also perhaps take away from the growth impulse that typically capital expenditure provides. Let us go across to some of our senior editors. I think Sandeep Singh, who's the resident editor in Mumbai, is there with us. Sandeep, can you hear us? Yeah. Hi, Udit. Yeah, hi, Sandeep. So let's first start with you. What is the reaction that you're seeing, and what's your one big takeaway from the budget? I think for me, looking at the corporate sector and all that, I mean, basically government capex has been going on, and they have been pushing it. But the big issue was the crowding in of the private sector into it. And I think the government visualizes that, okay, maybe this year would be a key year when they may come in for investment. So that is what I think they are looking for. So as they reduce their borrowing and stating that it will allow them to borrow more, the private sector. That also led to a softening in the bond yields. I mean, I just saw it had come down to 7.06. So yesterday it was 7.14. So 8 basis points already down. So and that if it softens further, this is like without a rate cut, the borrowing cost for the corporate sector going down, which is one thing. So in a way, both by limiting their borrowing, it has led to this decline in yield, softening of the yield, and also I think the government expects that private sector will come in. So this year, maybe I think they are expecting that should happen for potentially higher growth going forward. Yeah. Right. So I mean, viewers should understand that government borrowing too much is never a great idea, because it tends to eat up all the investable money that is there for the private sector. So at one level, it is a good thing. And as Sandeep pointed out, borrowing costs may soften from here if the government is not borrowing as much itself. But there is another side to the whole story, which is about growth. And as Vaidi also mentioned, the estimates for nominal GDP growth. Let's go to Ishan Bakshi, who's on the edit page with the Indian Express.
Ishan, can you give us some macro understanding about how you see the budget, the big numbers? So I'll take up from what Sandeep said. The finance minister has reiterated her commitment to a fiscal deficit target of less than 4.5% by 2025-26. With next year's decline, that means you are going to compress the deficit by about 1.4 percentage points over 2 years. And that's a very steep consolidation path. That does seem to suggest that they believe that the private sector, corporates and households will push up or provide the stimulus to growth. And that is why they seem to be withdrawing in a sense. That is one. Second, the finance ministry review that was released a few days ago sort of seems to suggest that 7% from here on is the new normal, at least till 2030. That's what they seem to suggest. That would mean a nominal growth of about 10.5%, 11%, depending on which way the GDP deflator goes. This year it hasn't. The first advance estimates are much lower than what the budget estimates, but they seem to be in line with most independent assessments as well, including that of the International Monetary Fund, give or take half a percentage point here or there. The third thing I would believe is that they are waiting for the elections to get over, and perhaps they will ramp up spending in certain areas once they present the full budget. We don't know how that will shape up, but I'm guessing that this is what has held them back this time. Right, absolutely. And let's go across to Harish, who tracks not just agriculture but also the rural economy. Harish, this being just before the election and interim budget, did you see any indication that this is like either targeted towards election? I mean, what's your sense on that aspect? I think there are two features of this budget, rather I would say two assumptions. First assumption is Modi government is coming back. Okay, so which is why there are no SOPs. You forget about no income tax SOPs. I mean, everybody expected that the PM Kisan, the outlay, the payments would be increased from say 6,000 rupees per year to 9,000 rupees. That hasn't happened. Okay, whereas if you remember the 2019-20 interim budget, you had actually PM Kisan was actually announced during that budget, and plus you had all those tax rebates and all which happened. But this time there's been nothing of that kind. So which means whereas if you remember in 2019-20 you had the assembly elections before that, and I think BJP had lost those Hindi heartland states, right? I mean, I think they lost Madhya Pradesh, they lost Rajasthan, they lost Chhattisgarh. Whereas this time it has been the reverse, they have surged, So I think the first assumption is they are coming back, and hence no need for any populist giveaways or anything of this kind. The second assumption, I think, which even Sandeep was talking about, is that now it's going to be. I mean, after the elections, the private sector will come and it will be all and they are going to invest in a big way. See, the economy basically has four engines, right? I mean, Udit, you will know it better than me. One is private consumption. The second is private investment. The third is exports, and the fourth is private investment, right? And I think the first three engines are kind of sputtering, right? Whether it is consumption, whether it is right now I think it's only one engine which is firing, which is basically government expenditure, right? I mean, government spending has been huge. I mean, whether it is capital expenditure and also all those subsidies, etc., which and those transfers. But the other three engines have not been really firing. See, whether it is private consumption, whether it is private investment, or whether it is exports, right? I mean, all three are kind of the thing. So I think the assumption is that now that the government will borrow less,
So therefore, there will be more resources. And once the new government comes in, there is certainty and all these things. The private sector, especially the corporate sector, will start investing huge, in a big way. And we haven't seen this, and this cycle has not been there for a long time, right? I mean, I think that is the whole calculation. So these are the two assumptions, I think. I mean, number one, we are coming back. Number two, the private investment is raring to go. Yeah. Right. So let's just check with Sandeep and then with Vedi on the second assumption, which is on economics terms the most important one: whether the private sector will, sort of join in this party. I mean, Sandeep, what's your reading on this thing? Is the private sector absolutely on the brink, right, about to join in? There is, I mean, when we talk to bankers here and even in the people in the India Inc., people are looking forward to it. But the thing that is holding back is that capacity utilizations have to reach a certain level before they can step in. But with this, and yes, there has been rise in capacity utilization levels. So a lot of people say that maybe by the end of this year we are still, say, 3 to 4 quarters away from the investments actually starting to happen. So maybe this is the grounding work that the government has done, maybe just to let the capital be freed up, and maybe from the RBI side we'll say liquidity also being made available, or all that is there, so that when the capacity utilizations reach at a threshold level, say 80-85% it hits, and then the corporate sector feels okay that in a particular sector, so as to say, and then when they feel that yes, now it's time to start investing, because see, if we are looking at a growth in economy of 7%, if that assumption is taken, maybe and they start building the capacities, it will take 1.5-2 years to build that capacity, or even more, depending on which sector it is. So so whenever it hits 80-85%, they have to build up for the next leg of growth. And they can't be chasing once the demand is there and the other capacities are not there. So maybe we'll see that happening. A lot of people are top bankers say that by the end of this calendar year we'll start seeing progress on that front, activity on that front. Yeah. Yeah, I mean, maybe on the face of it, capacity utilization has been going up. Indian banks are now rid of the NPAs, and government has done both the tax cut on the corporate side and a fair amount of capex. What do you sense? What's holding back private investment? And we are one of the fastest growing major economies. So I mean, like, all the things are there. It's a bit of a conundrum. Yeah, I think, on both the fronts, right? Like the twin deficits that we talked about, or the twin balance sheet problem that we talked about, on the corporate balance sheet as well as the banking sector, financial sector balance sheet, I think they have come clean to suggest that, they can, banks are ready to lend, they have got resources to lend, and corporates balance sheets, even if top lines haven't really grown, their bottom lines have been pretty robust. And you can't also forget that the stock markets are doing well, extremely well, for them to raise finances. So, these are the best time for probably good corporates to raise finances. And when we talk to, say, analysts or to mutual fund expert or mutual fund experts, or even corporates, they say that the boards are sitting and talking about expansion, but they have not yet just committed. So my sense is that they are waiting for, one, that capacity utilization kind of reaches a threshold level, say 81%, 82%, for them to go towards the next stage. They're waiting on proposals to expand. Second is also, you don't forget that the larger geopolitical alignment that has happened, and where there is a China plus one strategy, which I genuinely think that which is coming to play, and I can see that there are examples of some of the countries or big companies coming to India. So I think, and India's own strategy, which is a without risk no return kind of strategy, where you have that product incentives for product
production linked incentive schemes in certain sectors. They're doing well in certain sectors, not doing very well in certain sectors. So the banking on manufacturing as an engine of growth, I think these things put together, my sense is, and with also huge positive impression from FIIs who come to India, and then we also get to interact with them, that this is the India that they kind of saw in when China was opening up in the early 80s. This is what the inflection point they see in India right now. So I think these kind of seem to suggest that investments will take off, and then everything falls in order also. So why expenditure is less this year? Because run up to elections, we always know that capex kind of slows down, so you really don't have capacity to spend. So probably the government is aware that next 2-3 months are not going to be months where they can spend a lot, so they have cut down their expenditure. And this huge reduction in both gross and net borrowings, which the finance minister talked about, compared with even last year, suggests that yields will soften, which Sandeep points out too. So I think lower borrowings, implicit assumption that corporate sector will borrow, and you need to prevent that crowding effect. So I think that my sense is that we are on the cusp of that. Okay, I want to go to Ishan for the other big concern on the economy, which is private consumption demand being slightly weak, and that's considered to be a reason why maybe the private sector is also not playing ball. Ishan, what's your sense, both on the private consumption demand being weak and also the impact of this kind of a budget or this kind of a thinking, the assumptions of this budget on that? So one reason why capacity utilization is still stuck at the mid-70s levels is because of low demand, right? Your low domestic demand or low external demand, there are two factors, right? So, and low demand, we've seen data from the national accounts, it's been very sluggish for the entire household sector as a whole. Now, when it comes to investments, I have a slightly different view. There are two other sectors apart from private corporate sector. One is the household sector and the other is the MSME sector. What we've seen over the last year and a half or so is household sectors, investments in physical assets, real estate, residential real estate primarily, that is pushing up investments in the economy. You can see those numbers from the bank credit data as well. Now, the thing is, we don't know much about what's happening in the MSME investments. Corporate investments are happening in certain sectors where capacity utilizations have gone up. And also where there is a big export market. You have companies like Apple and the ancillary ecosystem where investments are happening, right? So it's a mix of both domestic and external demand, and where they see some spurts in demand happening. Again, it goes back, the whole domestic demand issue again goes back to I think the fundamental problem that has been highlighted by a lot of experts as well, is the problem of jobs. You've had this massive increase in the labor force participation rate over the last 5 odd years. I mean, the numbers that have come from the PLFS are pretty significant. Yet, I mean, at some level, you have to acknowledge that the last decade, 2 decades, we have not seen a commensurate increase in employment opportunities, either in the casual labor segment or of the regular salaried employment kind, which is what leads to sort of self-employment in less productive, less wage earning, less income earning forms of employment. One could argue that this also shows up in an increased dependence on unsecured personal loans, because you want to maintain a certain level of consumption. And so this is, again, so I don't think that this budget has addressed that. I think there is a belief that it seems to be there, that the private sector, and I mean the corporate households and the MSMEs, will sort of pick up the slack from the government reining its expenditure to GDP. So I am less sure about the growth momentum, which seems to have been more sort of exuberantly described in the finance ministry review.
That's well put. Okay, last two questions. One to Harish on the issue of this. In the run up to the budget, we were hearing a lot about the GYAN acronym, which was the four castes that the Prime Minister has been talking about: Garib, Youth, Annadata, and Nari Shakti. So, what happened to GYAN? I mean, how do you sort of see this budget in that framework? I mean, is there much for Annadata? I think for the Garib and youth, the main thing is employment. I think that is the real Achilles heel of the economy today. There are no jobs. And you can see it in the like for example, see during the COVID period, you had a boom as far as the IT services and startups were there, right? I mean, you had I think basically because of the demand for digitization, etc. So if you look at I think just you look at the five big IT majors, you look at just TCS, Infosys, Wipro, HCL, and Tech Mahindra. I think their head count itself went up from something like I think about 11.5 lakh to about 16 lakh in a matter of I think a few quarters. Whereas if you see that has now started falling. I think in the last 1 year probably I think the number of the head count has fallen by has actually declined. Rather than net additions. And I think today we have news of even I think Wipro deciding to lay off. So I think one sector which was doing well was IT services, and the second was of course the startup thing, and that of course had to do mainly with because you had cheap money, because you had the central banks, ultra low interest rates, etc. So these two sectors are not kicking in. I mean, I think these two sectors, the employment doesn't seem to be very good. And which is why now you're seeing, people from whatever, there are no campus placements happening now in IIMs or IITs and all. You forget about other engineering colleges. So I think youth and poor, I think number one is employment. And the second thing which we have to ask is, after all this government spending, whatever 10 lakh crore of capex, why is it not leading to a crowding in of private investment? I think everything now depends on when the private investment, when that returns. I mean, as Vaidi says, the conditions are all very are perfect, right? I mean, we don't have we don't have a twin balance sheet problem, right? I mean, we have macroeconomic stability, we have political stability. Now what more? So why is the private sector not investing? I think that is something which is which is a mystery for me, because under the usual Keynesian expenditures, government investment is supposed to crowd in private investment. We are not seeing, and private investment in turn is supposed to be generating jobs, whereas we have seen now jobs being shed even in the sectors which was doing very well even during the most bleak COVID period. Yeah. Yeah, right. Yeah, that's true. I mean, the finance minister herself very eloquently asked the India Inc. Leaders, why isn't Hanuman flying on this issue? I would like to come to Sandeep for one last look at the markets. How have the stock markets reacted to the budget? Yeah. I mean, is there any No, message I there? think it's largely stable, which is a positive thing, because see, from a peak, you need one bad news to sort of trigger a correction. Yeah, you are at a peak and you are and it is holding. 100 points down is nothing on a base of 72,000. It is 0.15%. Yeah, so I think it has taken it positively. Because there's also profit booking that people, there are traders, investors, all kind of people are there in the market. A lot of people react to things, so they would profit book and then come later. But I think it's holding up, so I think there is optimism that is there from the budget. I mean, that is how I would see it based on how the markets have moved and reacted. Yeah. Because from a peak, I mean, you can't expect it will jump 2% from here or something. Now, I think it will see how it plays out, and it's also an interim budget, so maybe it will wait for July for broader things for the formal final budget to come for 24-25. So I think that is how I'd see it. Yeah. Okay. Thanks. So we'll wrap it up with the last comment from Vaidi. Vaidi, the interim budget is out and there seems to be no bad news. There is some conundrum still
there, why one thing is happening or not. But the focus now shifts totally to politics. Yeah, I think so, because as Harish said in his, very nicely put, that there seems to be an assumption that they have won the elections, because because they are leaving a lot of room for going forward or putting out their blueprint on several areas, including, again, going back to history and looking at 10 years of the UPA government or what has not gone well so far. So I think if at all, aggressive blueprint of reforms, which I think hasn't quite happened in the last, say, few years. They could have done that much more in the first few years of the second term. That probably is what officials in North Block are preparing for. Right. So with that, we'll finish this, special broadcast. The big takeaway is that government has held back its expenditure and tried to control its borrowing levels. But there are, different kinds of conclusions one can draw about this on growth, on jobs, and the overall momentum in the economy. And moreover, all the details are still there in the budget. Often we find a lot of details in the budget when we start reading the documents. So with that caveat, we'll bring this to a close. Have a good day. Thank you. Thank you for all the panelists also. Thank you. Thank you. तो मुझे लगता है कि निर्धारित है इस बजट में दिया गया है, और आगे आने वाले समय में जब जुलाई महीने में जो आदरणीय अर्थमंत्री जी ने बताया, निर्मला सीतारमन जी ने, जब हमारी सरकार बनेगी फिर से और हम पूर्णांग बजट पेश करेंगे, संपूर्ण बजट पेश करेंगे, उसमें आपको पूरा लेखा जोखा सामने आ जाएगा। तो बांग्लाয় আপনার রিঅ্যাকশন চাইবো, যেভাবে অপোজিশন বলছে কি বাজেটটা পুরোই ঠান্ডা বাজেট, কিছুই নেই বাজেট। দেখুন, আমাদের অপোজিশন বরাবরই ঠান্ডাই থাকবে, ও তারাই ঠান্ডা আসলে, সেই জন্য তারা ঠান্ডার কথা বলছে। আমাদের অপোজিশন জানে যে এটা ভোট অন অ্যাকাউন্ট, পূর্ণাঙ্গ বাজেট নয়। ভোট অন অ্যাকাউন্টের জন্য পুরো বাজেট থাকে না, কিন্তু তার মধ্যেও 2 কোটি মানুষ আগামী দিনে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় টাকা পাবে। তো তৃণমূলের তো লাভালাভি করা উচিত, বাংলাও কিছু বাড়ি পাবে, সেখান থেকে কাটমানি প্রতি বাড়িতে 20,000 টাকা 30,000 টাকা করে কাটমানি খাবে তৃণমূলের নেতারা। বললে তাদের মহিলাদের জন্য 9 থেকে 14 বছরের বয়সী মহিলাদের টিকাকরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে, সার্ভাইকাল ক্যান্সারের হাত থেকে বাঁচার জন্য। মহিলাদের কথা আগে কে ভেবেছে? বিনা পয়সায় টিকাকরণ হবে সার্ভাইকাল ক্যান্সারের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য মহিলাদেরকে। অনেকে নারী প্রেমী বলে, কিন্তু নারীদের জন্য কাজ তো কেউ করেনি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী করছেন। যারা রুফটপ সোলার প্যানেল বসাবে তাদের জন্য 300 ইউনিট পর্যন্ত ফ্রি। আগামী দিনে রাজ্যগুলোকে 50 বছরের জন্য কম ইন্টারেস্টে লোন, বিনা ইন্টারেস্টে লোন, রিসার্চের কাজে যারা ব্যবহার করবে, গবেষণার কাজে, তাদের জন্য লোনের ব্যবস্থা বিনা ইন্টারেস্টে অথবা খুব কম ইন্টারেস্টে। এই যে সিদ্ধান্তগুলো সরকার নিয়েছে, নরেন্দ্র মোদী নিয়েছে, এটা প্রমাণ করছে যে আগামী দিনে এই বাজেটের মধ্য দিয়ে বিকশিত ভারত তৈরির রাস্তা প্রশস্ত হবে। बजट इंटरिम बजट आज पेश किया गया है, निर्मला सीतारमन जी ने कहा, लेकिन ऑपोजिशन भी वही कह रहा है कि बजट जो है एकदम अच्छा नहीं है। देखो, इस देश का दुर्भाग्य ये ऑपोजिशन में बैठता है तो उनका काम ही है हर चीज़ का विरोध करना, विरोध करने के लिए विरोधिता करना, ये उनका स्वभाव है। इसलिए मैं उनके ऊपर कुछ नहीं कह सकता हूँ। किंतु इस बजट में सबसे बड़ी बात है, एक शक्तिशाली देश की पहचान दिया, स्थायी सरकार की पहचान दिया, एक कॉन्फिडेंट सरकार की पहचान दिया, जो कि इस देश के लिए बहुत ज़रूरत है। इस बजट में वो दिखता है, जो इसमें एक भारत एक शक्तिशाली देश है, इस बजट में दिखता है। चाहे तो महिला के लिए हो, चाहे युवा के लिए हो, गरीबों के लिए हो, किसानों के लिए हो। और जो जिस तरीके से 2 करोड़ और भी मकान गरीबों को देने का बंदोबस्त, 25 करोड़ परिवार, 25 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा से ऊपर उठ के आए कोरोना काल रहते हुए भी, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है माननीय प्रधानमंत्री जी की। और युवाओं को आकर्षित करने के लिए उनको रोजगार देने, स्टार्टअप में सहज तरह लोन देने का बंदोबस्त इसमें है। और कुल मिला के इंफ्रास्ट्रक्चर हो, स्पिरिचुअल सेक्टर हो, हमारे एजुकेशन सेक्टर हो, हमारे बाकी सब जो कम्युनिकेशन सेक्टर हो, एवरीवेयर इस बजट में एक स्थायी, शक्तिशाली, व्यवस्थित, दूरदर्शी सरकार की पहचान दिया। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, निर्मला सीतारमन जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साथ साथ सभी पत्रकार बंधुओं को भी देता हूँ।
Sir, I need your one reaction on budget. I have not studied that budget. So have you listened to Nirmala Sitharaman has said in the House that all classes and masses are taken care of in upcoming budget? Yes, that's true. I appreciate that. Thank you. Any expectations in upcoming? In coming days, it will be definitely, the growth is going on continuously. So I am sure that Prime Minister and government is taking care properly. Thank you so much, sir. ये अनुभव हमारे सबके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि कांग्रेस तो बोलता था गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ, वास्तव में कुछ नहीं कर पाया। लेकिन हकीकत में अगर गरीबों के लिए कोई फरिश्ता के रूप में आए, वही नरेंद्र मोदी जी। और इस बजट के जरिए ये स्पष्ट हुआ है कि अगली 2047 तक इंडिया निश्चित रूप से दुनिया का सबसे मजबूत विकसित देश बनेगा, क्योंकि सारे बिंदु में वही एक इंडिकेशन है कैसे हर पैरामीटर में आज देश विकास यात्रा पर तेज से चलने लगा है। तो इसलिए मैं तो कहूँगा कि हमारी 140 करोड़ जनता के लिए ये बजट बहुत महत्वपूर्ण है और हर के विकास के लिए ये बजट मस्ट भी है। सर और सर बजट को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी for young girls and for against the cervical cancer. So all these things are very important addition to what we have. But more importantly, offering of Ayushman coverage for Anganwadi workers and Asha workers is a big move. And I think that will go down very well and boost the morale of our frontline health workers. And that is what we are dependent on as we improve the health of the nation, that those are the real people. Once we can actually upskill them over a period of time, they will be a big asset to us. So I think overall, in spite of the fact that it is a limited presentation, a lot of our expectations about medical education, increasing the number of the medical colleges and the other facilities for the paramedical personnel, I think is excellent. And so my compliments. Okay. Thank you. ডাঙৰীয়া 2014 চনত যি প্ৰতিশ্ৰুতিৰে তেখেতে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিছিল, সেই প্ৰতিশ্ৰুতি তেখেতে আখৰে পালন কৰিছিল। সেইকাৰণে আজি 10 বছৰ ভিতৰতে দেশৰ উন্নয়নটো ইমান ক্ষিপ্ৰতাৰে আগবাঢ়ি গ'ল। আজি 10ম স্থানৰ পৰা 5ম স্থানলৈ দেশৰ অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাটো শক্তিশালী ৰূপ দিলে আৰু দেশৰ প্ৰতিগৰাকী নাগৰিক ইয়াৰ পৰা বিশেষভাৱে লাভান্বিত হৈছে। সেইকাৰণে সামাজিক নিৰাপত্তা, অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন সকলোৰে বাবে সম্ভৱ হৈছে। গতিকে সবকা সাথ সবকা বিকাশ নীতি প্ৰকৃতাৰ্থত প্ৰতিফলন হৈছে। গতিকে আজি দেশৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ 8খন ৰাজ্য কিমান পিছ পৰি আছিল কংগ্ৰেছৰ দিনত। কংগ্ৰেছে সম্পূৰ্ণৰূপে এখন অন্ধকাৰত ৰাখিছে। আজি সেই অন্ধকাৰত ৰখা গোটেই অঞ্চলটোক তেখেতে বিকাশ যাত্ৰাত যেনেধৰণে চামিল কৰিলে, যিমান যেনেধৰণে সহযোগিতা কৰিব লাগে বাজেটৰ পৰা, যিমান ধৰণৰ প্ৰয়োজন হয় যাতায়াত, যোগাযোগ, অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান, শিক্ষা, বিজ্ঞান, কৃষি, উন্নয়ন আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ সৰু ডাঙৰ উদ্যোগ, সকলো ক্ষেত্ৰতে আজি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ভাৰতবৰ্ষক যেনেধৰণে গুৰুত্ব দিলে, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত যেনেকৈ গুৰুত্ব দিলে, তাৰ বাবে আমি সকলো গৌৰৱান্বিত। গতিকে এইখন বাজেট সম্পূৰ্ণৰূপে ভাৰতবৰ্ষৰ 140 কোটি মানুহৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা বাজেট আৰু 2047 যে এই বাজেটে এই কথাটো সম্পূৰ্ণৰূপে স্পষ্ট ইংগিত দিছে যে 2047 নিশ্চিত ৰূপে ভাৰতবৰ্ষ বিশ্বৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ উন্নত ৰাষ্ট্ৰ হ'ব। So this is an interim budget, as you know, and this is certainly our Honorable Finance Minister has done an excellent job in summarizing what has happened and how India has transformed in the last 10 years. From a fragile 5 economy that was a situation in 2014, we are today the top 5 economies of the world. We are the fastest growing economy in the fastest growing major economy in the world. And it is clear today that India is on a launch pad to become a developed nation in our lifetime. So this has been an excellent summary, the interim budget, of what the qualitative and quantitative transformation of the Indian economy has gone through in the last 10 years. But the opposition criticized this particular budget. No, the opposition will obviously criticize it. What else can they do? They certainly can't admire our performance.
The opposition job is to criticize, and they'll continue to criticize even when they lose the next election. Sir, do you think that this budget is touch every common person's? Look, the last 10 years, the Prime Minister Narendra Modi ji's policies, his governance, his corruption-free governance, his use of technology in governance has ensured that every person, every Indian has been touched by the government and governance through various schemes and through the determination to make sure nobody is left behind. So Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas has played out not just as a slogan, as a real governance ideology and a governance theme. When are you expecting the white paper? কিছু বাংলায় জগন্নাথ আজকের বাজেটকে নিয়ে কি বলবেন আপনার কি ফার্স্ট রিঅ্যাকশন এ বাজেট আজকে স্বাধীনতার পর শ্রেষ্ঠ বাজেট সবচাইতে অর্থ বরাদ্দ হয়েছে পিছিয়ে পড়া মানুষের উন্নয়নের জন্য এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেখানে ট্যাক্স আদায়ের গুরুত্ব দিয়ে সেই অর্থ পিছিয়ে পড়া মানুষের কাজে ব্যবহারের জন্য এই বাজেট आज के बजट को लेकर হয়েছে পিছিয়ে পড়া মানুষের উন্নয়নের জন্য এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেখানে ট্যাক্স আদায়ের গুরুত্ব দিয়ে সেই অর্থ পিছিয়ে পড়া মানুষের কাজে ব্যবহারের জন্য এই বাজেট आज के बजट को लेकर क्या प्रतिक्रिया है देखिए ये बहुत बढ़िया बजट हुआ नेशनल बजट जो होना चाहिए सबसे अच्छा आज़ादी के पास जो विकसित भारत जो कैसे बन रहा है इसलिए ये जो एक जल्दी चटकदारी से सोच आ जाएगा सबका पिछले वर्ग का उन्नयन के बजट है बजट बहुत इम्पोर्टेंट था मतलब जो काम हमने किए हैं युवा है महिला है दलित है आदिवासी है किसान है ऐसे लोगों के लिए स्किल ट्रेनिंग है 1 करोड़ नौजवानों को स्किल ट्रेनिंग दे दिया है 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज दिया जा रहा है कोविड के टाइम से और बहुत सारा जो हमारे सरकार का कार्यक्रम है विकास का वो निर्मला सीतारमन जी ने देश के सामने रखा और आगे भी हमारी सरकार आएगी तो हम देश को विकास की दिशा से आगे बढ़ाएगी G20 का देश हमको मिली थी इसका भी पूरी दुनिया भर में चर्चा हुई थी इसीलिए देश का नाम पूरी दुनिया की लिस्ट में है तो इसीलिए अगले 5 साल में हमको मौका मिलेगा विकास की गाड़ी हमारी बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी Sir, how you see this budget and do you think that this budget meets? This was a budget that ensured stability, that ensured growth. For us, the focus on the healthcare sector and women especially was encouraging to see. 3 areas of focus, the first being mother and child health and encouraging more women to therefore come into the workforce. The vaccination program for young women, for young girl children will prevent cervical cancers of the future. The third aspect of bringing Anganwadi and Asha workers into the Ayushman Bharat will ensure that they have access to quality healthcare. What was most encouraging to see was the grant, 50-year research grant without interest for innovation and especially in the clinical space. Apollo has been very focused on clinical innovation and therefore our clinical outcomes are at 1/10 of international cost. We believe that this will continue to increase standards of clinical outcomes, not only in Apollo but in other hospitals as well. This will also increase international patients coming into India's healthcare system because of the value that it creates. A common person and common man in the country? See, first of all, you must remember this is an interim budget, so you can't expect too much, right? This is government now is at the end of its tenure, but it's a statement of this government when it comes into power, as we all expect it to in the next election. And the statement of intent shows that by and large they are going to increase all the efforts they have already made successfully as far as the economy is concerned, as far as welfare schemes are concerned, as far as growth is concerned, and as far as fiscal prudence is concerned. So by and large, it covers it. There is something in this budget for everything, and it takes care of all the parameters that are necessary for a healthy economy. As opposition, including Congress, is unhappy about this budget. When was the last time you saw the opposition happy? This was a budget that ensured stability,
that ensured growth. For us, the focus on the healthcare sector and women especially was encouraging to see. 3 areas of focus, the first being mother and child health and encouraging more women to therefore come into the workforce. The vaccination program for young women, for young girl children will prevent cervical cancers of the future. The third aspect of bringing Anganwadi and Asha workers into the Ayushman Bharat will ensure that they have access to quality healthcare. What was most encouraging to see was the grant, 50-year research grant without interest for innovation, and especially in the clinical space. Apollo has been very focused on clinical innovation, and therefore our clinical outcomes are at 1/10 of international cost. We believe that this will continue to increase standards of clinical outcomes, not only in Apollo but in other hospitals as well. This will also increase international patients coming into India's healthcare system because of the value that it creates. बजट को लेकर क्या प्रतिक्रिया है? एक बहुत ही अच्छा बैलेंस्ड प्रोग्रेसिव बजट, ज़्यादातर वही स्टेटस को जिन्होंने जिस एक्शंस ने आज तक जो परिणाम दिए हैं उसी परिणामों को मेंटेन करते हुए, उसी को एक बूस्ट देते हुए आज का बजट रहा। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो वचन विशेषकर महिलाओं के लिए था, वो वचन भी माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बजट के माध्यम से महिलाओं को भी कहीं आने वाले दिनों में स्पेशल जो है वो प्रावधान प्राप्त हो, उस प्रकार का बजट हुआ है। तो मैं मानती हूँ कि एक जवाबदेही वाली सरकार जो होती है, एक रिस्पॉन्सिबल जो गवर्नमेंट होती है, जब अपना लास्ट बजट पेश करती है चुनाव से पहले वाला, और जिस प्रकार से प्रोग्रेसिव सरकार रही है, जिस प्रकार से प्रोग्रेस हो रहा है इस देश का, उसकी प्रतीति कराता हुआ ये बजट है। और बहुत ही अच्छा बैलेंस्ड, किसी पे लोड ना देता हुआ, किसी भी वर्ग, किसी भी तबके पे कोई एक्स्ट्रा लोड के बगैर ये बजट को मैं मानती हूँ। बिल्कुल ठंडा बजट कह रहा है। अब वो उनका काम है, उनको पता नहीं, हमेशा 2-3 हाइलाइट्स के माध्यम से उनका बजट पेश करने की हैबिट थी, तो वो वही करेंगे। स्वाभाविक रूप से किसी एक वर्ग, किसी तबके को बेनिफिट करते हुए उनके प्रीवियसली भी बजट रहे हैं। हालांकि और अगर आप देखें तो माननीय प्रधानमंत्री जी का बजट हमेशा से होलिस्टिक, ऑल इंक्लूसिव और प्रोग्रेसिव रहा है, और उसी दिशा में आज का भी बजट रहा है। ये जो बजट है वो सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी और सर्वांगीण विकास का बजट है, और अमृत काल के समय में इस बजट को आत्मनिर्भर भारत बनाने में भूमिका इस बजट के माध्यम से बनेगी, और हर वर्ग को, हर गरीब को ताकत देने वाला बजट। 11,11,111 करोड़ का बजट आवंटित किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि देश के विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत संकल्प, और इस पर उनका फोकस है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से जो विकास को और तेज गति मिलनी चाहिए। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ा करके भारत के डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका ये बजट निभाएगा। शुक्रिया सर। It is a budget oriented towards the elections only. All big, empty announcements for the falsification of driving the people towards BJP. We are, as the DMK party, member of the parliament, we are very upset that the समाहित है। ऐसे सर्वस्पर्शी एवं सर्व समावेशी और देश के जन जन और हर क्षेत्र के सर्वांगीण कल्याण के लिए समर्पित बजट है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी एवं उनकी पूरी टीम को मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से हार्दिक बधाई भी देता हूं और उनका अभिनंदन भी करता हूं। पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने अथक परिश्रम के साथ जहां लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर लाया है, तो वहीं
दूसरी ओर भारत ने अर्थव्यवस्था में प्रगति के सारे रिकॉर्ड भी तोड़ डाले हैं। यह बजट विकसित भारत के लक्ष्य की बुनियाद है। हम गरीबी हटाने का नारा नहीं देते, बल्कि गरीबी दूर करके दिखाते हैं। हम विकसित और विकास की केवल बात नहीं करते, बल्कि विकास को घर घर पहुंचाने में यकीन रखते हैं। अंतरिम बजट में मध्यम वर्ग के लिए आवास योजना लाए जाने का निर्णय एक क्रांतिकारी कदम है। अगले 5 साल में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लगभग 2 करोड़ घर बनाने का निर्णय लिया गया है। अगले 5 साल में अब हमारी सरकार 3 करोड़ से अधिक लखपति दीदी बनाने का सुनियोजित लक्ष्य रख करके चली है। एमएसएमई सेक्टर को ग्लोबल बनाने के लिए सरकार ने जो निर्णय लिया है, वो आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करने में मदद देगा। इस बजट में पर्यटन पर भी खासा ध्यान रखा गया है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए हमारी सरकार प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना में 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाने का निर्णय ले रही है। यह अंतरिम बजट में किसान, मध्य वर्ग, महिला से लेकर सभी वर्गों को और उसकी रूपरेखा रखी है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते और उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रही है। मैं पुनः इस लोक कल्याणकारी बजट के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी और उनकी पूरी टीम को कोटि कोटि साधुवाद देता हूँ। Funds which our Chief Minister had asked as the recent rain havoc relief fund that has not been announced, that is a great disappointment, and not a word about Manipur. That was also very disappointing to me as a woman. She is from a southern part of this country. How you see that you are saying that there is nothing on the flood and nothing for the Tamil Nadu? That's a major grouse, and Tamil Nadu has always stood up for all the progressive thoughts and ideas like secularism, treating for the equality of the people, and it will hold its ideal. But even after repetitive plea from the members of the parliament, our floor leader had went and met the Union Home Minister, and so much appeal had been given by the... यानी ये तो ज़्यादातर जो मीडिया या जो मर्सी पिटीशन मीडिया जो है, या जो गोदी मीडिया है, या कुछ लोग आजकल मोदी मीडिया भी कहते हैं, उनकी बात ना करें। हकीकत क्या है, और हकीकत ये है कि अपोजिशन जो है इंडिया ब्लॉक बहुत मजबूत हुआ है और बहुत उभर कर सामने है। मीडिया की बात कर रहे हैं, गोदी मीडिया, मोदी मीडिया की आप बात करें, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि पॉलिटिशियन ही तो एकजुट नहीं हो रहे। ममता दीदी ने तो बहुत से जगह पर राहुल आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? नहीं दे रहे। आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? अभी मैंने कहा कि पोस्ट नहीं, प्री नहीं तो पोस्ट हो जाएगा। हैं, साथ हैं। ये तो नहीं कहा कि हम इंडिया ब्लॉक के साथ नहीं है, साथ हैं। तरीके थोड़े अलग हो जाएंगे। और बिहार में जो हुआ है, अब उसमें मैं कह चुका हूँ, और आपके एएनआई को भी कह चुका हूँ और पीटीआई को भी कह चुका हूँ, तो मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। थैंक यू। By the party leaders as well as the people, nothing has been announced for the relief, and that is the greatest disappointment and grouse. வெறும் வெற்று காற்றடைக்கப்பட்ட பலூன், ஒரு சின்ன ஊசி குத்துனா அப்படியே எல்லாம் வெளியே போயிடும். வெறும் வெற்று வார்த்தைகளில், வெற்று நம்பிக்கைகளில் வருகின்ற தேர்தலை ஒட்டி அறிவிக்கப்பட்ட ஒரு இடைக்கால பட்ஜெட் இது. वर्ष है और उसमें ये बजट आया है, किस तरह से देखते हैं इस बजट? मुझे लगता है कि जो हमने 10 सालों में, मतलब जो हमने सरकार हमारे आने के बाद जो काम हमने किया है, उस काम का लेखा जोखा पूरे देश के सामने निर्मला सीतारमन जी ने रखा है, और देश विकास की दिशा से आगे बढ़ रहा है। देश का हो रहा है विकास, इसलिए पूरे देश भर में दिख रहा है नरेंद्र मोदी जी का प्रकाश। पूरा आकाश नीला नीला दिख रहा है आकाश, क्यों नहीं होगा देश का विकास? तो देश का विकास करने की कोशिश सरकार के माध्यम से हुई है, और महिला हो, युवा हो, जैसे किसान हो, दलित हो, आदिवासी हो, सबके लिए
सरकार ने काम किया है, ये जानकारी आज निर्मला सीतारमण जी ने दी है। First reaction on this budget? Well, I think it's a budget which gives a lot of hope, and it raises the aspirations of the country, the women, the youth, the farmers. So I'm very happy because I come from a place, a rural place where farmers are actually getting the benefits of the present government's policies. So I think in the future I see them reaching the targets of farmers doubling or tripling their income. So it gives me a lot of hope. But opposition is saying that nothing is going to be done. Well, that's the opposition has to say that. They have to oppose whatever it is. I think that's what's natural. So I wouldn't give much credence to that. Thank you, ma'am. Thank you. किसानों का बजट पेश हुआ, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये जो बजट है किसानों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। इसी की लड़ाई हम किसान बहुत समय पहले से लड़ रहे हैं। अब जो कारपोरेट को देने की बात सरकार कर रही है, ये तो जो 3 कृषि कानून थे उसमें भी सरकार ने यही किया था, उसके लिए किसान लड़े। अब ये किसानों को फिर लड़ना पड़ेगा किसान इसकी लड़ाई। और टिकैत साहब ने ये 26 जनवरी को कहा ही था कि किसान सरकार जो है किसानों के हित में काम ना करके कारपोरेट के हित में काम कर रही है। तो ये तो सरासर किसानों के साथ एक जो बजट पेश हुआ है एक सरासर धोखा है। लेकिन बड़े बड़े वायदे किए गए हैं और मोदी जी ने भी कहा है कि वो सब एक दिखावा है, किसान के साथ एक छलावा है। सिर्फ कागजों में बड़े बड़े दावे होते हैं किसानों के लिए, वो सरकार करती ही है, मगर हकीकत में उसका होता कुछ नहीं है। सरकार की मंशा शुरू से ही किसान विरोधी रही है और जो बजट पेश हुआ उससे और क्लियर कर दिया उन्होंने कि हम जो है कारपोरेट को देना ही चाहते हैं जमीन। मेरा नाम जुबैद आलम है, मंडल सचिव भारतीय किसान यूनियन टिकैत। आज सरकार ने किसानों का बजट पेश किया लोकसभा में, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, बजट पास किया है, बजट सही है, हम उसका स्वागत करते हैं, इसका स्वागत करते हैं। लेकिन स्वागत के साथ ये है कि इसका जो सीधा लाभ है वो किसान को मिलना चाहिए, ज़मीन पर उतर के किसान के घर तक पहुंचना चाहिए। बीच में ये जो बीच वाले जो मान लो इसमें जो बीच वाले दलाल हैं वो फ़ायदा उठा लेते हैं, किसान को कहाँ मिल पाता है। सही है, सही तो किसान तभी मानेगा जब किसान के हाथ में कुछ लगना चाहिए, मिलना चाहिए। बजट पेश किया, इसको लेकर क्या कहेंगे? इसका हम स्वागत करते हैं, ये सही है। सुभान अली। मेरा नाम रोशन सिंह। किसानों का बजट पेश किया गया, सरकार ने बड़े बड़े दाम बड़े जो आपने जो बजट पेश किया है उसको चलो ठीक है, जैसे ही मानते हैं, पर किसानों तक पहुंचता ही नहीं है। पहुंचता है तो बीच में ही दलाल लोग खा जाते हैं और मतलब जो आता भी है तो हमारे धान या गेहूं कम रेटों में खरीद पाते हैं तो लोग वो कभी तो बाढ़ मार जाती है, कभी कुछ हो जाता। हम तो भैया नदी के किनारे के रहने वाले, तो हमारे तो ऐसे हो जाए, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं और खा रहे हैं, यहाँ तक हमारे पास तक लाभ आता ही नहीं है। और जो योजना अभी तक हमारे पास मिली नहीं है, और सीधी मिलेगी तो आपको स्वीकार करते हैं हम सरकार को। देसी भाई, आज जो बजट पेश किया गया उसमें वित्त मंत्री ने कहा है कि किसानों के हित में काम होंगे और फसल कटाई के बाद निजी निवेश को बढ़ा दिया जाएगा, इसको क्या कहेंगे आप? देखो, हमने तो पहले ही कहते आ रहे हैं कि जो निजी निवेश को ये बढ़ावा दे रहे हैं तो खेती को समाप्त करना है और उद्योगपतियों के हाथों में देना है सारी खेती। और जो किसानों के बेटे हैं, जो किसान हैं, उन्हें बंधुआ मजदूर ये बड़ी बड़ी कंपनियां बनाएंगी। इस पर हमने पहले भी आंदोलन किया और आंदोलन जारी रहेगा। ये हमने पहले कहा, ये निजी निवेश को तो पहले से बढ़ावा दे रही गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि खेती को कैसे समाप्त किया जाए, ये आंदोलन, ये प्रदर्शन कैसे समाप्त किए जाएं। ये है कि जब उद्योगपतियों के हाथ में सारी चीज़ें दे दी, खेती भी उद्योगपतियों के हाथ में चली जाएगी, लाला के हाथ में चली जाएगी, तो किसी की जरूरत नहीं कोई लाला के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर दे। प्राइवेट फैक्ट्री के साथ कैसे करोगे आप? तो ये सरकार की मंशा है और हमारी तो मांग ये थी, अगर किसानों को बढ़ावा देना है तो किसानों के लिए जो 5 एकड़ तक के किसान हैं उन्हें जो ट्रैक्टर लेता है उस पर 14-15% ब्याज लगता है।
उस पर क्रेडिट कार्ड के हिसाब से ब्याज लगना चाहिए 3%। जो 5 एकड़ तक के किसान हैं उन्हें मतलब ब्याज मुक्त कर्ज देना चाहिए। और जो खेती है, जो गेहूँ 1978 को आधार मानते हुए 1978 में हमारा गेहूँ 76 रुपये क्विंटल बिकता था। 20 क्विंटल गेहूँ बेचने के बाद एक ट्रैक्टर आता था। 1 क्विंटल गेहूँ बेचने के बाद 1 तोला सोना मिलता था। आज सोने की कीमत 60,000 है। जो किसानों की चीज़ें थी, जो किसानों ने पैदा करा, उन पे तो कीमत बढ़ी 5%, 10%, और जो उद्योगपतियों ने पैदा किया उस पर 200 गुना, 300 गुना, 150 गुना कीमतें बढ़ी। तो किसान के बेटों का मुंह भंग इसी नहीं तो हो गया, वो शहर को अपनी 100 बीघे जमीन छोड़कर शहर की तरफ को एक लाला की नौकरी करने के लिए 5,000 की मजदूरी करने के लिए मजबूर है। और सरकार की यही मंशा है, इसीलिए निजी निवेश को बढ़ावा दे रही है। बजट जो आते हैं क्या किसानों के हित की बातें बताई गई हैं, इसको क्या मानते हैं? इसे भारतीय किसान यूनियन टिकैत नकारती है। कहीं भी किसानों का कोई भी इसमें लाभ नहीं है, खाली लॉलीपॉप दे दिया। अगर लाभ होता तो खाद है इनका, खाद पे कीमत नहीं बढ़ती। जो किसान के इस्तेमाल में आने वाली दवाएं हैं उन पे कीमत नहीं बढ़ती। सब पे कीमतें बढ़ी हुई हैं। ये तो किसानों की एक झुंझुना दे दिया। किसानों को खुद एक पता, आप बताओ कहाँ है, एक जगह बता दो ये किसानों को यहाँ लाभ मिलेगा। कोई लाला किसी को लाभ दे देगा? निजी निवेश को आप बढ़ावा दे रहे हो, कौन सा ऐसा लाला किसी को अपना, वो पहला अपना निकालता बात को आपको देगा? ऐसा कुछ नहीं है इसमें, इसे नकारते हैं और इसमें कुछ ऐसा नहीं है। किसानों के हित की कोई बात ही नहीं है। किसानों ने तो बहुत उम्मीद की थी कि हमें कर्जा मुफ्त मिलेगा। हमें ये नहीं चाहिए कि साहब हमें किसान सम्मान निधि मत दो, 2,000 रुपये का रोप मत दो, मगर उसकी फसल का लाभकारी मूल्य दे दो। जो बाजार में जो है उसकी हर चीज़ सस्ती कर दो, डीजल, पानी, खाद सब सस्ता करके। और आज गेहूँ की कीमत है 2300 रुपये। बाजार में प्राइवेट आज बिक रहा है 2500-2600 रुपये, 3000। अब किसान का यही गेहूँ आ जाएगा, तो जब किसान का गेहूँ आएगा तो 1800 रुपये। तो तुम उसका लाभकारी मूल्य नहीं दिलवा पाते, तो क्या बजट में पास किया? बजट में कोई ऐसा कुछ हमें तो लगता नहीं जो कुछ किसान के हित में हो। हमें तो यही है, किसानों के हित में जब भी होगा जब किसान का, जो किसान खरीदता है, जो फसल में आने वाली इस्तेमाल चीज़ें हैं उनको सस्ता किया जाए, और जितना जो कर्ज है, कर्ज ब्याज मुफ्त दिया जाए और किसान को आगे बढ़ाया जाए। तभी किसानों का पलायन रुकेगा गांव से, नहीं तो किसानों का पलायन नहीं रुक रहा। शहर की ओर किसानों के बेटे भाग रहे हैं। आपका नाम जानना चाहूँगा? मेरा नाम हसीब अहमद, प्रदेश महासचिव भारतीय किसान यूनियन टिकैत। ऊपर जुनून है ऑपोजिशन के लिए और ख़ासकर इंडिया ब्लॉक के लिए, तो ये अभी कहने, ये तो ज़्यादातर जो मीडिया या जो मर्सी पिटीशन मीडिया जो है, या जो गोदी मीडिया है, या कुछ लोग आजकल मोदी मीडिया भी कहते हैं, उनकी बात ना करें। हकीकत क्या है, और हकीकत ये है कि ऑपोजिशन जो है इंडिया ब्लॉक बहुत मजबूत हुआ है और बहुत उभर कर सामने आया। मीडिया की बात कर रहे हैं, गोदी मीडिया, मोदी मीडिया की आप बात करें, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि पॉलिटिशियन ही तो एकजुट नहीं हो रहे। ममता दीदी ने तो बहुत सी जगह पर राहुल, आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? नहीं दे रहे। आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? अभी मैंने कहा कि पोस्ट नहीं, प्री नहीं तो पोस्ट हो जाएगा। हैं, साथ हैं। ये तो नहीं कहा कि हम इंडिया ब्लॉक के साथ नहीं है, साथ हैं। तरीके थोड़े अलग हो जाएंगे। और बिहार में जो हुआ है, अब उसमें मैं कह चुका हूँ, और आपके ANI को भी कह चुका हूँ, और PTI को भी कह चुका हूँ, तो मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। थैंक यू। बजट में खास क्या है? सबसे पहले तो बजट अंतरिम बजट था, उसके बावजूद भी 2 करोड़ लोगों को नए मकान देने की बात इस बजट में की गई है। दूसरा कि 10 वर्षों में क्या उपलब्धियां की गई हैं, और 10 वर्ष यूपीए के शासन कैसे थे, दोनों पर श्वेत पत्र लाने की बात फाइनेंस मिनिस्टर ने किया है। इससे देश की जनता को, खास करके जो नव मतदाता हैं, जो विगत 10 वर्ष में केवल मोदी जी का ही शासन देखे हैं, उन्हें भी इस बात का निर्णय लेने में सुविधा होगी कि यूपीए का शासन कैसा हुआ करता था और आज का शासन कैसा है। इसके अलावा यह पूरा बजट जो था वह देश आगे कैसे बढ़े, इसके बारे में माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम जब जून में आएंगे तो एक विकसित भारत का रोड मैप देंगे,
और इस बार जो भी 10 वर्षों में हुआ उन सभी का हिसाब फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया. Company, but services backend, or country which is using its human capital to serve the needs of the world, but actually lead the world, through our own products and new age, kind of areas. And I think the innovation part is the one that's going to drive that to the best possible way. And what the government is also demonstrating through its increased prioritization of infrastructure of the normal kind that we all know about, but also the digital infrastructure, the entire digital public infrastructure building blocks that we have, in the financial services. Of course, we've seen that, 45% of the world's transactions in digital happen in India. Anybody can just scan a QR code and make a payment through a UPI. So we've demonstrated our ability to create world-class infrastructure there. And I think growing that requires a very strong effort by government, private sector, all, research, all to work together. So my visions, and when I see this thing that, investing in research should become as cool as investing in startups. Because, that is one layer before the startups get created. And the government itself is showing that and demonstrating that by building strong digital public infrastructure. So I think government becoming a buyer of innovation, working with private sector, is a very unique thing for India. And, we can then take this to Africa, which is now part of G20, other countries in the global south, South America, and actually position India much, much stronger. And all of this will enable us to get, of course, much greater and stronger revenue growth. I think we see our tax collections in GST, etc., have doubled in India. So, a good revenue backed by smart expenses, will always drive, your fiscal deficit. And hopefully, in times to come, we will see how India strengthens its size, not only the size of our GDP, which will poised to be the third largest, driven by $1 trillion of our digital economy, which is expected to happen by 2030, but more importantly, do it, in a fiscally prudent manner. I think that's the beauty of this entire budget that has come out pretty well. Earlier, just IMF released a report in which we were the fastest growing economy of the world. And people were saying that the optimism is in the air. So how do you see that kind of optimism according to your industry in which you work, as a digital disruption happens and people are also skeptical about AI and future of in industry 4.0. So how do you see your industry? How to take this? Sure. So I think, we are in a very disruptive industry by definition, right? So when we look at ourselves as drivers of leadership in the digital age, we operate in a manner where we have to be able to deal with uncertainty, new technologies, equip ourselves quickly. And therefore, if you see our group Jetline, which was earlier investing more in building more plants and more lines, and investing capital there, to Jet Synthesis, which is now, synthesizing in near real time systematically, but still at an accelerated pace in a more asset-like manner to be able to deliver outcomes to where the world is moving. We have become much greater adopters of Gen AI, much greater adopters of blockchain. Blockchain builds trust. Gen AI builds, better personalized service to customers. So we need to understand the power of these technologies. All are led on digital, and the ability to therefore deliver better experiences to consumers and customers at a lower price. If we look at the video gaming and esports industry, which comprises a large part of our new age businesses, we find that the world global industry is a $180 billion industry. India is not even a $2 billion industry. So we are less than 1% of the world industry. So our catch-up potential is huge from India. A large part of consumption in this economy happens with young people. So we have 17% of the probably the utilization of that consumption, but monetization or our contribution to the global industry is so small. So that clearly shows a very high growth CAGR for us of 40% for the next 10 years in areas like this. And we have to be able to deal with new technologies, because what happens is AI, for example, will change
the way machine and man will work together, because so many jobs that man is doing will be taken over by machines. But then, how do you really create new skills with people to then be able to do a lot more? I think that's important. So in our industry, we see that happening, on the art side, we see that happening on many areas. कैसे देखिए आप इस बजट को? ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਬਜਟ ਖਾਲੀ ਖੋਖਲਾ ਸੀਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਯੁਵਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਖੋਖਲੀ ਪੀਠ ਥਪਥਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2014 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਣਗੇ, ਹਰ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਣਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, 5 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ 25 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, 25 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੱਕਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਖੁਦ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਅੰਨਦਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ। ਅੱਛਾ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਖੋਖਲਾ ਉਹ 33% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਚਿੱਤਰ दिखा रही है सामने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत जमीन आसमान का अंतर हैगा। चुनावी बजट नहीं, मैं तो कहती हूँ एक तरीके से थोड़ी मुझे इसमें एरोगेंस नजर आ रही थी कि हम जुलाई में हम बजट पेश, या तो आपकी कोई प्लानिंग है जो देशवासियों को नहीं पता, क्योंकि हर एक इलेक्शन में जो भी यहाँ पहुंचता है पहली चीज आपको ये पता है, यू कैन नॉट टेक एनी इलेक्शन फॉर ग्रांटेड, क्योंकि इलेक्शन के रिजल्ट लोग क्या समझते हैं वो लोग ही जानते हैं। और आज की डेट में आप पहले से ही इतनी एरोगेंटली आप अनाउंस कर रहे हैं कि सही बजट हम जुलाई में करेंगे, तो पता नहीं आपने क्या प्लानिंग करी है और ये आपके पास ये ओवर कॉन्फिडेंस क्यों है, ये आप ही जानते हैं। लेकिन मैं ये जरूर समझती हूँ कि आज समा था कि 10 साल में जो 2014 में आपने बोला था, आप वही चीजें निकाल के लोगों को बताएं और उसका वेरवा दें, ना कि आगे के और सपने दिखाएं। मैम, आज जो बजट पेश हुआ है, ये कहा गया कि विकसित भारत का बजट पेश हुआ है, आप क्या कहेंगे, आपको क्या लगता? देखिए, आज तो मैं उम्मीद कर रही थी कि जो 10 साल पहले आत्मनिर्भर भारत का बजट ऐलान किया गया था और 10 साल पहले जो बोला था कि ये सरकार आएगी तो अच्छे दिन हिंदुस्तानियों के आएंगे, हर एक के खाते में 5 लाख रुपए आ जाएंगे, 2022 तक किसान की आमदन दुगनी हो जाएगी, हर खेत तक पानी आएगा, 5 करोड़ युवा को रोजगार मिल जाएगा। 10 सालों के लंबे समय में उम्मीद तो ये थी कि जो वादे किए थे उनके क्या स्टेटस है आज 10 साल बाद, उसकी बात करेंगे। लेकिन interim budget speech, it was interesting in the sense that one should take a lesson from Prime Minister Modi how to manage populist posturing without breaking the bank. He has consistently managed to remain the most popular Prime Minister. He has cultivated that image of being a populist, but he hasn't really, the welfare spending he has done, but nobody can accuse him of being, indulging in fiscal profligacy. Today's interim budget is one classic example of that. I think I have with my colleague Shobna Subramanian. Shobna, what is your initial take? You're absolutely right. No one can accuse this government of being fiscally profligate. And with a 5.1% deficit targeted for FY25, I think they're absolutely on the path of fiscal consolidation. Yeah, absolutely. In fact, this interim budget's biggest story is that how the government has, normally interim budgets are supposed to be a simple accounting exercise. But over the last 3 or 4 interim budgets, as we have seen, and FE has done a detailed coverage on that, and the successive finance ministers have used
the interim budget as a vehicle to bring in, to sell a story to the voters. This interim budget, however, has gone completely away from that path, and one must congratulate Finance Minister Nirmala Sitharaman for that. In this budget, you'll really need a microscope to find out what is exactly the takeaway for the voters. Apparently, there is nothing much. This budget, according to me, Shobna, it shows a confident government which believes in continuity and which thinks that the elections will come and go and they will emerge victorious. And now they are talking about how to consolidate. The fact this 5.1% fiscal deficit is clearly the biggest takeaway from this budget. Shobna. Yeah, no, you're absolutely right. I think they've been very prudent, very conservative. All the numbers are very, very balanced, and there is no even room. They've not left for too much optimism, whether it is on tax collections or any other receipts. In fact, as you know, there's no disinvestment head. It's part of miscellaneous capital receipts, which is fine. I mean, if they want to sell any assets later in the year, they can always sell that. It doesn't prevent them from monetizing any of the assets. So yes, it is very, very tempered, I would say. The expectations are not high, and they will not sort of disappoint people at the end of the year. Right, absolutely right. So just staying on this path of something which has surprised many, because many were expecting that she will come out with some IT rebate here. Last time Piyush Goyal, her predecessor, had come out with that PM Kisan scheme of 6,000 rupees, etc., etc. This budget has completely avoided that path at all. In fact, I would say that over the last few budgets of this government, and we must give credit to this government, that it has been essentially there have been fewer accounting tricks in the budget figures. Successively, I'm not talking specifically about the interim budget. There have been a fine balance between, I would say, mindless austerity, that I won't spend anything, I'll just store money so that there is no fiscal issue. There is a balance between mindless austerity and fiscal profligacy. As a result of which, I think the budget numbers have been credible. This interim budget essentially continues that tradition, and that is the biggest thing. Apart from that, if you come to sectoral issues, do you have any? Do you think that there have been any disappointments? No, I don't think. Like you pointed out, she can't make any big announcements on, say, tax measures or any changes in any of the tax regimes. So, so there was no scope for that, which is what really people are looking for. Any higher rebate in the new income tax regime, or, streamlining and rationalizing capital gains tax across assets. So since there was no scope for that, the finance minister has just left it there, put out the broad numbers. And then later in the year, in a few months from now, I think the government will get back to work, and then we'll see in July all the changes. In the meantime, there are announcements for specific sectors. They're not very big bang announcements, but for rural India, fisheries, agriculture, green energy, EVs, there are small announcements here and there. The key of which I would say is the Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin, where another 20 million houses are proposed to be built. And, apart from that, here and there, some small measures, all of which will help. But I think she will sort of elaborate on them, or, we'll get more deeper insights and budgeting in July. Right, absolutely. One interesting takeaway, and I think it's a very good move, I thought, is this 1 lakh crore that she has announced for innovation. I mean, she's
clearly saying that this is, I think possibly this is the only thing which has been targeted at the youth, as the budget papers say. Now that was a much needed step perhaps from the government because our R&D investment in R&D has been much less than what has been desired. So one hopes that this additional, we have to see the details because she just announced it, we don't know the details. But this 1 lakh crore, if it is used effectively, and this government had shown that they, as far as implementation is concerned, they have been excellent. So if this money is used properly, this will, some might say it is just a drop in the ocean, but at least a glass half full is better than seeing it as a glass half empty. I think that's a very significant, apart from what Shobna, you said about the small things for but specific industry groups. The point is there is no effort to score any brownie points with the voters. That is the biggest thing. But I have, one disappointment with this interim budget. I think since the focus was mostly on a policy, blueprint that the government lays out if it comes back to power, I think she should have mentioned and also, maybe taken some more initiative on what we call the physical capital and the social capital. For example, on health, apart from announcing that some more aims, etc., will come up, she hasn't mentioned anything. If you look at the numbers, this government itself has set a target of investment in health of 2.5% of GDP. Actual numbers is just about 0.35%. Now this interim budget is also silent, and I hope that in the next budget, if this government comes back to power, which seems most likely, they will announce something on that. And the other disappointment I have is nothing specific on education. Now, social capital has to be built. Now, education doesn't mean some stray skilling initiative here and there. There has to be a proper strategic plan as far as investment in education is concerned. Now, on spending on education has actually decreased the share of total expenditure, which one wishes that the finance minister had at least told us something about it. But these are, maybe quibbles. I am sure in the next budget she will not disappoint us. But overall, as we have repeatedly said, this budget lays a firm blueprint for growth. Confident government believes in continuity, believes in fiscal rectitude. Markets will take heart from this fact. Shobna, anything else you want to add? No, absolutely. I think the markets will be very happy. I also think on health and education, if the government believes that it doesn't have the resources, because, it has to take care of defense, which is very, very important, I think it could, in July, come up with incentives for the private sector to invest in both health and education. So, that would be a better way to do it because, you can't expect the government to be spending on everything, though I agree, that social capital needs to be built. And we do need to up the ante on both fronts. Possibly there could be some sorts or incentives for the private sector to step up, investments in both health and education. Maybe we could see that in July. A lot of people are talking about how this reduced in that sense, meaning last year it was about 37% increase in capex. This time I think it is about 11% capex. So that has helped largely in the government bringing down its fiscal deficit number considerably. But there is a hope that now there is scope for private sector, more private sector borrowing to happen and private capex to happen, which has been disappointing so far. Do you agree that this might happen? Actually, if you look at the net number, it's a fall, but it's not a significant fall.
I think it's 11.8 last year and 11.75 if my memory is right. Okay. So it's a fall. So to that extent, yes, you are, allowing the private sector to borrow. I mean, personally, I think that it will not be so high also. And the reason for that is that in June when the FPI bonds come in, so if you get even say 20 billion, that would be a big amount. Even if you get 15 to 18 billion, it would be a good amount. So I think for the moment the number is here, but because July will be after June, so we'll have a much better sense of the money that has come in then. Right. So then we'll have a better idea. So yes, I mean cost of capital will come down, but actually the net borrowing is not that much smaller. Right. So thank you for your patience. I mean, this was our rough summary of the budget, but we hope that in July some of the quibbles that we have or I have will be sorted out by the finance minister when this new government comes back to power. Thank you very much. To the center to the states, and the action to enable the states to get on the same momentum as the center is established is one that will take India far ahead, and therefore we welcome this budget. I think it's an excellent one. Thank you. अपनी पीठ थपथपा के कि बहुत स्टुपेंडस काम, कमाल का बेमिसाल काम किया है और 25 करोड़ लोगों को पॉवर्टी लाइन से एलिवेट किया है, और अगले ही लाइन में आप कह रहे हैं कि 80 करोड़ हिंदुस्तानियों को, मतलब 70% आबादी को आपको राशन देना पड़ रहा है क्योंकि वो खुद कमा के खाने लायक नहीं उनकी हैसियत है। तो ये दोनों कॉन्ट्रडिक्शंस कैसे चलेंगी? आज बताना था कि कितने भारत की पॉपुलेशन 140 करोड़ में से आत्मनिर्भर कितने हो गए हैं, 5 करोड़ में से कितने युवा को आपने नौकरी दे दिया है, 2022 तक आपने 22-24 तक कितने किसानों की आमदन दुगनी हो गई है, कितना नमामि गंगा हो गया है या कितना स्वच्छ भारत हो गया, ये चीजों के जवाब देने थे ना। अब आप अगले 5 सालों में हम ये करेंगे, पहले तो पिछले 5 साल को, इतना लंबा समय, उसका लेखा जोखा दीजिए। सो वो कुछ देखने को नहीं मिला था। हाँ, ये मैं जरूर अप्रिशिएट करती हूँ कि कोई इन्होंने, जो मैं उम्मीद कर रही थी कि शायद वोटों की राजनीति के लिए रेवड़ी बांटेंगे, वो बांटने का काम नहीं किया। ये बहुत अच्छा एक फैसला था, लेकिन इसकी दुख जरूर है कि कहीं ना कहीं जो जमीनी हकीकत, आज के 60% हमारी आबादी गांव में रहती है। अब गांव की महिला हो, गांव का युवा हो, अन्नदाता हो, उनके जो हकीकत में हालात हैं और जो यहाँ पे बोला जाता है, वो एक जमीन आसमान का फर्क है। Certainly, our Honorable Finance Minister has done an excellent job in summarizing what has happened and how India has transformed in the last 10 years. From a fragile 5 economy that was a situation in 2014, we are today the top 5 economies of the world. We are the fastest growing economy in the fastest growing major economy in the world. And it is clear today that India is on a launch pad to become a developed nation in our lifetime. So this has been an excellent summary, the interim budget, of what the qualitative and quantitative transformation of the Indian economy has gone through in the last 10 years. But the opposition criticized this particular budget. No, the opposition will obviously criticize it. What else can they do? They certainly can't admire our performance. The opposition's job is to criticize, and they'll continue to criticize even when they lose the next election. Sir, do you think that this budget has touched every common person? Look, the last 10 years, the Prime Minister Narendra Modi ji's policies, his governance, his corruption-free governance, his use of technology in governance has ensured that every person, every Indian has been touched by the government and governance through various schemes and through the determination to make sure nobody is left behind. So Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas has played out not just as a slogan, as a real governance ideology and a governance theme. Agriculture and for women, we have seen an interesting committee to be formed on medical colleges, an interesting proposal on housing for middle class, a very interesting scheme on vaccinations for cervical cancer, which I'm very, very proud about. And apart from that, in terms of development, a focus on increased productivity, modern farming techniques,
generally on green energy, as I mentioned. Something that I think was a very interesting one is a 1 lakh crore corpus for R&D on deep technology, which I think will be very, very interesting and good for India to protect its IP. So, like you coming from a industrial body, so do you rate it as an industrial friendly budget for the industries? I think I'm yet to read the fine print, but overall I would say yes, the fact that the corporate tax has remained similar, a focus on MSMEs, a focus on development, a focus, as I said, a foundation on just the larger full budget to come around. So I think in the current regime, when you have so much geopolitical instability in the world, and yesterday you saw the Fed announce stable interest rates. Given all these things, I think just having stability for right now is the right way forward. So if I were ask you to summarize a budget in a single sentence, okay, what would you say? I would say it's an exciting budget. It's positive, and as I said, a strong foundation for the full budget. I think there's not that much more for me to say right now, but I have yet to read the fine print, and the full budget should be very positive. So your first reaction after listening this budget? Okay. First of all, I don't think we should call this a budget. It was more of a vote on count, because a lot of things had been done in the last year's budget as far as the income tax changes were concerned. So in this year's budget, we were not expecting much on the tax rates front, and because this is not the norm also. Normally whatever happens in the previous budget, and now what will happen in the June-July budget will come after the new government comes in. But overall, I think it was fair, I would say, and a little concession which the finance minister has given this time about some old demands which are outstanding on the portals, reflecting on the portals, and people's refunds were getting adjusted against those demands. Those demands have been removed to an extent, although the threshold limit is very less, about 25,000 rupees for demands up to 2010-11 and 10,000 of demand for still assessment year 14-15. I think the amount is less, but it's a step in the right direction, that all those demands will now be removed from the income tax portal, and the income tax payer will be really facilitated on that account. So in terms of direct taxes, how would you say? See, I would say that we should have more coming in the next budget, which comes in June and July, which we have very high expectations. Because in last year's budget, there were a lot of changes to the income tax slabs which were done, and someone who's earning an income of 15 lakh rupees was getting a tax saving of up to 37,500. That is about at least 20% of his tax liability was getting reduced in the last year's budget. But in spite of that, the direct tax collections on personal income tax have increased by 26%. So there's a 20% tax reduction, and still the tax collection has increased by 26%, which clearly shows that the Indian taxpayer likes to pay tax at a moderate rate of tax. So if the tax rate reduces, the tax collection increases. So that should act as an incentive for the government to reduce the taxes more in the future for the personal income taxpayers, so that probably lower tax, lower burden on the middle class, and they have higher consumption available with them. So if I ask you to summarize this budget, what would you say? It's the election year, and so this is a roadmap. Yeah, yes. I think it's a roadmap to India's overall growth plan. The finance minister has projected a good increase in rate of taxes, a lot of financial discipline in the form of lower fiscal deficit. The target of the long-term fiscal deficit target is 4.2. So now she's aiming for a fiscal deficit of 5.1% in financial year 24-25, which is very good as against 5.7 right now. So she's all things moving the right direction, and of course the main budget is going to come in June, July, and that is where we'll have more to comment. Thank you. So the budget has been announced. In your opinion, how this budget is going to help Indian economy? This budget has been very good and conducive to the growth of Indian economy. I would congratulate the finance minister on two grounds. A, the fiscal deficit
of the country has been brought down from 6.4 in 2022-23 to 5.9%. Secondly, the borrowing program of the country is going to be 11.75 trillion this year compared to 15.43 erstwhile. So these two measures are going to be very instrumental in bringing down the interest rate of the borrowing of the country. In future, we can expect a lowering of interest rates as the government's borrowing program is going to be much lesser, and this will also aid in improving the creditworthiness of the country, and we can expect a improvement and upgradation of the country's sovereign rating. Sir, your first reaction after listening to this budget? So this budget was limited actually. If you see overall, there was much, announcement actually. This was just basically keeping the things continue. But it's a good budget where if I see from the startup point of view, government has told in the budget, this FM has told that this guarantee scheme for the startup, there is a good progress, although the number now have not disclosed in the announcement. So we'll know the number in the fine print that what is the progress of the guarantee scheme for the startup which were announced last year by the government. So that is one thing which they have covered, and I think I believe in the next full budget I think they will come out with the many things for the startups. As PhD Chamber of Commerce, we have also given the recommendation to the government on various things for startups. I think these will be considered in the full budget, where we have requested, where we have basically given the recommendation for the funding for the startups which are in the rural or semi-rural areas basically, because you see that most of the startups are based in Mumbai, Bangalore or Gurgaon. They are getting money for their growth or for their expansion, but practically the startups which are in tier 2, tier 3 towns, they don't have such opportunities, and unless until the government will not come out with specific fund for the smaller cities, these startups will always be facing the challenge of the funding, and their growth will be limited. And one thing I have observed, because I have visited into a tier 2, tier 3 cities, the startups funding requirement is very less in comparison to startups which are in the metro cities actually. They are working very efficiently, their resources are limited, and they are doing the same innovation or same business solutions, of they are solving the same problem which the metro city startup is solving in the 50% of the cost actually. So we should give them the boost up by way of bringing some specific funding. That's why the one suggestion which we have given. That's another suggestion why the sector specific the funding for the startups, which the government should create some fund, where the sector like education, healthcare, biotech, or the other sectors, this should be considered also. So these 2-3 things which we have suggested to the government, I hope that government will come out maybe later on. And on the other side, this the guarantee scheme for the startups. Although the scheme has come, so as I have seen in the system, or I am interacting with all the banks, because this big scheme has been rolled out through banks. But practically, the progress is not happening, because the banks are not tuned up to the evaluation of the startups, the underwriting of the startup proposals, because the startups are not profit making actually. So whenever you are putting the condition that whenever any startup will come for funding, they will be क्या यार सबका पकड़ो क्या आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर और हम सब स्वास्थ्य विभाग के सब लोग एक साथ ही जुड़े हैं। ये आयुष्मान कार्ड बनने से सभी को बहुत ज्यादा सुविधाएं मिल रही हैं, क्योंकि जिसका बजट नहीं है अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराने का, वो अब किसी भी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो महिलाओं के लिए तो ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि डिलीवरी जो ऑपरेशन से होती है, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में हम लोग डिलीवरी करवा सकते हैं।
उसमें सभी को लाभ मिलेगा, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में डिलीवरी के बहुत ज़्यादा चार्जेस है। आयुष्मान कार्ड से हम डिलीवरी या कोई भी ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से हॉस्पिटल में करवा सकते हैं। तो उसका फायदा मिला। कोविड जैसा टाइम भी था तो उसमें भी बड़ी परेशानी रही, बहुत ज्यादा दिक्कत है। स्वास्थ्य विभाग ने तो बहुत ज्यादा मदद करी है अपनी ड्यूटी कर करके कोरोना काल में। तो वित्त मंत्री जी ने महिलाओं के लिए और जो घोषणा की है, कितनी अच्छी घोषणा है। बहुत अच्छी घोषणा करी है मंत्री जी, वित्त मंत्री जी का धन्यवाद। महिलाओं के लिए बहुत अच्छा योजना दे रहे हैं वो, और आयुष्मान कार्ड बनने से सभी को बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा, और हमारा बनेगा तो हमें भी बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेंगी। प्राइवेट हॉस्पिटल में अच्छे से अच्छे ट्रीटमेंट करा सकते हैं जी। उन्होंने महिलाओं के दर्द को इसीलिए समझा हुआ क्योंकि वो खुद ही एक महिला है। अच्छे से अच्छा महिलाओं की केयर हो। डिलीवरी के टाइम इतनी प्रॉब्लम रहती है महिलाओं को, और रोजगार के लिए भी बहुत अच्छे से, और बिजनेस के लिए भी दिया। हाँ, बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छे से ध्यान रखती है सबका। मैं आंगनवाड़ी वर्कर हूँ जी। क्या नाम है? बीना रानी। बीना जी, अब वित्त मंत्री जी ने घोषणा की है, कैसा लग रहा है आपको? हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे आंगनवाड़ी आशा वर्कर के लिए और हेल्पर के लिए आयुष्मान कार्ड की घोषणा की है। इससे हमारे इलाज करने में सुविधा होगी और हमें आसानी होगी जरा इलाज के लिए। कितनी परेशानी होती थी? बहुत परेशानी होती थी। हमारे पास इतना बजट भी नहीं हो पाता था जो हम अपना इलाज अच्छे से करवा सके, और इस टाइम हमारा आयुष्मान कार्ड बन जाएगा तो हमें और सुविधा हो जाएगी इलाज करवाने में। पुष्पा। पुष्पा, क्या है आप? आशा वर्कर। अच्छा, किस तरीके से आपने खुशी जाहिर की है? पोस्टर जो दिखाया है, ये हमें इसलिए खुशी जाहिर की है कि हमें जब ये आयुष्मान कार्ड बन जाएगा तो हमें कुछ लाभ मिलेगा, परेशानियां दूर होंगी। कितनी आपका? बीना रानी। बीना रानी, क्या करती हैं? मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूँ। और आपने किस चीज की खुशी जाहिर की है पोस्टर दिखाते हुए? हमने पोस्टर दिखाते हुए इस बात की खुशी जाहिर की है कि हमारा आयुष्मान कार्ड बनेगा और आशा वर्कर, सहायिका, आंगनवाड़ियों का आयुष्मान बनेगा, और उससे हमारा इलाज फ्री होगा, और हमें कोई भी समस्या होगी इलाज करने में तो हमारी समस्या का समाधान होगा। पहले कितनी दिक्कत होती थी आपको? पहले हमें बहुत दिक्कत होती थी क्योंकि हमारे पास इतना बजट नहीं हो पाता था कि हम अपना इलाज सही से करवा सकें, और अब हमें इस बात की खुशी है कि अगर कोई हमें परेशानी या दिक्कत आती है तो हमारा इलाज फ्री होगा आयुष्मान के जरिए, आयुष्मान कार्ड के जरिए। फायदा मिलेगा इससे? इससे हमें बहुत फायदा मिलेगा, इसलिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। मेरा नाम बीना रानी। बीना जी। हाँ जी। तो एक और बात ये कहनी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं पिछले 2 साल में जिस प्रकार से। जी सर, क्या नाम है आपका? रविंदर धीर। सर, आज बजट पेश हुआ, उसके बारे में क्या कहना है आपका? क्या आपको आज जो बजट केंद्र सरकार द्वारा, केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में पेश किया गया है, वैसे तो ये अंतरिम बजट है, इससे उम्मीदें तो नहीं होती, फिर भी ये थी आशा थी कि ये चुनावी बजट है तो शायद सरकार कोई लघु उद्योगों के लिए कोई सुध लेगी। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की कुछ समस्याएं थी, कुछ मांगे थी, लेकिन इस बजट में उसके लिए कोई भी प्रोविजन नहीं रखा गया। R&D सेंटर की डिमांड थी हमारी, एंटी डंपिंग ड्यूटी की डिमांड थी, GST रेट कम करने की मांग थी, लेकिन चूंकि ये अंतरिम बजट होता है, आशा भी नहीं होती, पर चुनावी वर्ष के कारण उम्मीद थी कि सरकार कुछ करेगी, लेकिन बजट में स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के लिए कुछ नहीं है। सर, बजट में और क्या क्या है? इस बजट में क्या और रखा गया है? GST का घटाया गया कुछ? नहीं, कुछ होता ही नहीं है। ये जो अंतरिम बजट होता है, वैसे तो ये लेखा अनुदान मांगे होता है, कोई ऐसा कुछ पूरक बजट तो होता ही नहीं है। फिर भी चूंकि चुनावी वर्ष है, इसलिए उम्मीदें बहुत थी लघु उद्योगों को, खासकर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जी सर, क्या नाम है आपका? रमेश नंद जी। सर, आज जो बजट पेश हुआ है उससे क्या आपको वो कैसा रहा, आपके हक में रहा? नहीं, हक में कहाँ रहा, ये तो निराशा ही हाथ लगी है इस बजट से, तो क्योंकि स्पोर्ट्स का, हमारा स्पोर्ट्स का बिजनेस है, इसमें फिटनेस, बच्चों को खेलों का सामान, वो उसमें GST वगैरह कुछ कम होना चाहिए था, उसमें कुछ भी नहीं हुआ। अगर
खेल की प्राइस ही बहुत होगी तो बच्चे खेलेंगे कैसे, देश कैसे आगे बढ़ेगा। फिर चला गया एक समर्पित दूरदर्शी बजट है। इस बजट में मातृशक्ति का दर्शन है तो राम राज्य का विजन भी है। इस बजट में विकसित भारत का संकल्प है तो आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य भी है। यह बजट गरीब कल्याण, किसान का उत्थान, मातृशक्ति का सम्मान और नौजवानों की मुस्कान समाहित है। ऐसे सर्वस्पर्शी एवं सर्वसमावेशी और देश के जन जन और हर क्षेत्र के सर्वांगीण कल्याण के लिए समर्पित बजट है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी एवं उनकी पूरी टीम को मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से हार्दिक बधाई भी देता हूं और उनका अभिनंदन भी करता हूं। पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने अथक परिश्रम के साथ जहां लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर लाया है, तो वहीं दूसरी ओर भारत ने अर्थव्यवस्था में प्रगति के सारे रिकॉर्ड भी तोड़ डाले हैं। यह बजट विकसित भारत के लक्ष्य की बुनियाद है। हम गरीबी हटाने का नारा नहीं देते, बल्कि गरीबी दूर करके दिखाते हैं। हम विकसित और विकास की केवल बात नहीं करते, बल्कि विकास को घर घर पहुंचाने में यकीन रखते हैं। अंतरिम बजट में मध्यम वर्ग के लिए आवास योजना लाए जाने का निर्णय एक क्रांतिकारी कदम है। अगले 5 साल में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लगभग 2 करोड़ घर बनाने का निर्णय लिया गया है। अगले 5 साल में अब हमारी सरकार 3 करोड़ से अधिक लखपति दीदी बनाने का सुनियोजित लक्ष्य रख करके चली है। एमएसएमई सेक्टर को ग्लोबल बनाने के लिए सरकार ने जो निर्णय लिया है, वो आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करने में मदद देगा। इस बजट में पर्यटन पर भी खासा ध्यान रखा गया है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए हमारी सरकार प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना में 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाने का निर्णय ले रही है। यह अंतरिम बजट में किसान, मध्य वर्ग, महिला से लेकर सभी वर्गों को और उसकी रूपरेखा रखी है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते और उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रही है। मैं पुनः इस लोक कल्याणकारी बजट के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वित्त मंत्री माननीय अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन यांनी मांडलेला अंतरिम अर्थसंकल्प विकसित भारताचा संकल्प सांगणारा अर्थसंकल्प आहे। विशेषतः गरीब, मध्यमवर्गीय, महिला, शेतकरी आणि युवा या सर्व घटकांकडे विशेष लक्ष या अर्थसंकल्पाने दिलेलं आहे। 1 कोटी लोकांना रूफटॉप सोलर देऊन 300 रुपयापर्यंत वीज मोफत देण्याचा विषय असेल होणार आहे आणि त्यातनं रोजगार आणि थेट मार्केट लिंकेज मिळालं पाहिजे पेश किया है। विकसित भारत की संकल्पना विशद करने वाला इस प्रकार का ये बजट है। इस बजट में विशेष रूप से गरीबों, मध्यम वर्गीयों के लिए कई योजनाएं उन्होंने रखी है, जिसमें 1 करोड़ सोलर रूफटॉप, जिसके माध्यम से 300 यूनिट तक की बिजली ये हमारे नागरिकों को मुफ्त मिलने वाली है। जो लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं या चौल में रहते हैं, ऐसे लोगों को उनका घर खरीदने का या नया घर लेने का सपना पूरा हो, इसके लिए भी योजना लाई जा रही है। हमारी महिलाओं के लिए
लखपति दीदी, ये जो एक कार्यक्रम हाथ में लिया गया है, 3 करोड़ लखपति दीदी हमारे देश में तैयार होने वाली है और विशेष रूप से 9 करोड़ महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जिस प्रकार से अधिकारिता दी जा रही है, वो भी मैं ऐसा मानता हूं बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे युवाओं के लिए जो एक इनोवेशन का 1 लाख करोड़ का इंटरेस्ट फ्री इस प्रकार का एक फंड तैयार किया है, इससे स्टार्टअप और इनोवेशन की इकोसिस्टम को बहुत मदद मिलेगी और बड़े पैमाने पर रोजगार इसके कारण निर्माण होगा। हमारे किसानों के लिए अगर हम देखें तो नैनो डीएपी जैसी योजना या फिर किसान संपदा योजना हो या हमारे मछुआरों के लिए योजना हो, इन सारी योजनाओं से हमारे किसानों को, मछुआरों को बहुत बड़े पैमाने पर फायदा होगा। विशेष रूप से जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट 11 लाख करोड़ से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट जो होने वाली है, ये एक बहुत ही अप्रत्याशित इस प्रकार की इन्वेस्टमेंट है, निवेश है। और विशेष रूप से रेलवे के नए कॉरिडोर तैयार करना, एयरपोर्ट्स तैयार करना, पोर्ट्स तैयार करना, रोड्स तैयार करना, इस प्रकार की अलग अलग चीजों में ये जो निवेश होगा, इसके कारण हम विकसित भारत की ओर आगे बढ़ेंगे। इसमें मैं एक और चीज के लिए अर्थमंत्री जी का बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत आत्मविश्वास के साथ ये कहा है कि जब पूरा बजट पेश होगा तो विकसित भारत का रोड मैप उस बजट में रखा जाएगा। मैं अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन जी ने जो अंतरिम बजट पेश किया है, विकसित भारत की संकल्पना विशद करने वाला इस प्रकार का ये बजट है। इस बजट में विशेष रूप से गरीबों, मध्यम वर्गीयों के लिए कई योजनाएं उन्होंने रखी है, जिसमें 1 करोड़ सोलर रूफटॉप, जिसके माध्यम से 300 यूनिट तक की बिजली ये हमारे नागरिकों को मुफ्त मिलने वाली है। जो लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं या चौल में रहते हैं, ऐसे लोगों को उनका घर खरीदने का या नया घर लेने का सपना पूरा हो, इसके लिए भी योजना लाई जा रही है। हमारी महिलाओं के लिए लखपति दीदी, ये जो एक कार्यक्रम हाथ में लिया गया है, 3 करोड़ लखपति दीदी हमारे देश में तैयार होने वाली है और विशेष रूप से 9 करोड़ महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जिस प्रकार से अधिकारिता दी जा रही है, वो भी मैं ऐसा मानता हूं बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे युवाओं के लिए जो एक इनोवेशन का 1 लाख करोड़ का इंटरेस्ट फ्री इस प्रकार का एक फंड तैयार किया है, इससे स्टार्टअप और इनोवेशन की इकोसिस्टम को बहुत मदद मिलेगी और बड़े पैमाने पर रोजगार इसके कारण निर्माण होगा। हमारे किसानों के लिए अगर हम देखें तो नैनो डीएपी जैसी योजना या फिर किसान संपदा योजना हो या हमारे मछुआरों के लिए योजना हो, इन सारी योजनाओं से हमारे किसानों को, मछुआरों को बहुत बड़े पैमाने पर फायदा होगा। विशेष रूप से जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट 11 लाख करोड़ से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट जो होने वाली है, ये एक बहुत ही अप्रत्याशित इस प्रकार की इन्वेस्टमेंट है, निवेश है। और विशेष रूप से रेलवे के नए कॉरिडोर तैयार करना, एयरपोर्ट्स तैयार करना, पोर्ट्स तैयार करना, रोड्स तैयार करना, इस प्रकार की अलग अलग चीजों में ये जो निवेश होगा, इसके कारण हम विकसित भारत की ओर आगे बढ़ेंगे। इसमें मैं एक और चीज के लिए अर्थमंत्री जी का बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत आत्मविश्वास के साथ ये कहा है कि जब पूरा बजट पेश होगा तो विकसित भारत का रोड मैप उस बजट में रखा जाएगा। मैं अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। लेकिन जो प्रशासन है उसने कल से ही कार्रवाई शुरू कर दी। नीलेश यादव ने भी उसके ऊपर जताया है संदेह कि अपनी टिप्पणी करी है कि इतनी जल्दी जो है सब चीजें हो रही हैं कि जो दूसरा पक्ष है उसको अपना लीगल कोर्स ऑफ एक्शन जो है प्रिवेंटिव मेजर लेने की भी उसको समय नहीं दे रहा। देखिए, ये तो इनकी पटकथा 2024 के चुनाव के लिए लिखी जा रही है, क्योंकि इनको लग रहा था कि हम अयोध्या में जो है चारों शंकराचार्यों को घर बिठा करके और जो है खुद करके कुछ हो जाएगा, तो वो तो जनता ने उसको दिखा दिया, कुछ नहीं है, वो चल रहा। अब नया ये शगुफा छोड़ा है
और मैं उस पर नहीं जाना चाहता कि ऑनरेबल कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो मेरे ख्याल जज साहब कल ही रिटायर हो गए थे फैसला करते हुए, और दूसरे पक्ष को न्याय की प्रक्रिया तो कम से कम न्याय दो ना दो, कम से कम ऐसा लगे तो सही कि हाँ न्याय की प्रक्रिया पूरी हुई है। Budget presented, interim budget presented today by the finance minister. So many things have been, so many announced for the youth, for the farmers and the women, especially Asha workers and Anganwadi workers. A new definition has been given to the GDP. How do you see this now? See, this budget is, if you speak generally, it's very disappointing. And about the whatever is announced, they had 10 years to implement everything. Now, when there is only less than month left out, what is the point of saying anything? And what is the point of now? This is a election stunt. What else can you expect in a budget like this when in 10 years they didn't do anything for women, they didn't do anything for the youth, and now they want this to be, make it look like a very glossy and bright and nice, and again showing the carrot. They want to show the carrot, so whatever they are showing is all schemuകൾ പറയുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടി महिला है उन्होंने रही है ये बजट फुल फ्लैग बजट असं जुलाई से पेश करांगे, लेकिन सरकार तो 10 साल के ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗਿਣਾ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਆਸ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਲਿਤ ਔਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਦੀ ਸਪੀਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਪੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿੰਨੇ ਪਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ PM ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 17 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਖੋਖਲਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਸੀਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਏ ਹੈ। ਕਰਕਸ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਨਾ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਜਟ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ? 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ मैं 2 नंबर ਦਵਾਂਗਾ सिर्फ। आखिरी कार्यकाल का जो है बजट पेश किया है, कैसे क्या कहेंगे? मेरा अपना मानना है कि सरकार अभी भी डिनायल में है। सरकार अभी भी समस्याओं को सुधारने की तो बात छोड़ दीजिए, स्वीकार करने के लिए भी तैयार नहीं है। इस बजट में ऐसा कुछ नहीं है जिससे उपभोग बढ़ेगा। इस बजट में एग्रीकल्चर, कृषि के लिए कुछ नहीं है। इस बजट में 42 बार वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री बोला, लेकिन एक बार भी नौकरी, जॉब्स या एम्प्लॉयमेंट नहीं बोला। तो असलियत यह है कि इस बजट से, इसके फाइन प्रिंट से 3-4 चीजें साफ हो गई हैं कि चाहे कृषि हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे सोशल वेलफेयर हो, जितना बजट में अमाउंट किया गया था उससे कम खर्चा किया गया है इस साल। और फिर आते हैं डिफेंस पे, फर्टिलाइजर पे और फूड सब्सिडी पर। इस साल जितना खर्चा किया गया उससे कम बजट किया गया अगले साल के लिए। तो सरकार की जो नीति और नियत है वो साफ नहीं हो पा रही है। और रूरल सेक्टर में, कृषि में और ग्रामीण क्षेत्रों का जो दर्द है वो साफ बयां हो रहा है। सरकार ने 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे मनरेगा के लिए, खर्चा 86,000 करोड़ करने पड़ रहे हैं और उसके बाद भी सरकार मुगालते में है। मेरा अपना मानना है कि ना कृषि पर, ना रोजगार के सृजन पर और ना आम आदमी के लिए इस बजट में कुछ भी है। मैम, लेकिन निर्मला सीतारमण जी कह रही है कि 2047 में विकास करेगा भारत,
इसके लिए बजट है ये? नहीं, ऐसे जुमले तो हम 10 साल से सुन रहे हैं। 2022 में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जानी थी, हर साल 2 करोड़ रोजगार बनने थे, हर सबके सिर पर छत हो जानी थी, ऐसे जुमले हम सुन रहे हैं। और निर्मला सीतारमण जी ने एक और जुमला आज बोला। निर्मला जी ने पार्लियामेंट के अंदर सपाट झूठ बोल के कहा इनकम 50% बढ़ गई है, बल्कि सरकार का अपना डेटा, जो सरकार का अपना डेटा आता है पीएलएफएस का, उसमें पूरी तरह से साफ है पीएलएफएस का कि 25% रियल इनकम घटी है। तो या तो निर्मला जी गलत बोल रही हैं या डेटा गलत बोल रहा है सरकार का। तो इस तरह के जुमले, इस तरह का झूठ 10 साल का पर्याय बन चुके हैं। एक बार फिर निराशा हाथ लगी है कि ना रोजगार के लिए, ना किसानों के लिए, ना गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए भी कुछ नहीं किया गया। बिल्कुल, बड़ी बड़ी बातें हैं लखपति दीदी और इन सब चीजों की। असलियत यह है कि महिलाओं का सबसे बड़ा दुश्मन महंगाई होता है। असलियत यह है कि महंगाई के चलते एक औरत एक रोटी कम खाती है रात को कि उसके घर के बच्चे खा लें। उनके लिए क्या है इस बजट में? महिलाओं के रोजगार के लिए क्या है इस बजट में? असलियत यह है कि ना कृषि के लिए, ना रोजगार के लिए, ना युवाओं के लिए कोई बड़ा विजन ही नहीं है, कोई बड़ा बजट ही नहीं है। और ये 10 साल से जुमले हम सुन रहे हैं, उसमें एक और जुमला ऐड हो गया। जो नियत और नीति है वो सरकार के आंकड़े दिखा रहे हैं कि आप कृषि पर, आप स्वास्थ्य पर, आप शिक्षा पर, आप सोशल वेलफेयर पे पैसा काट रहे हैं, पैसा कम खर्च कर रहे हैं, और अगले साल के लिए भी फूड सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी, डिफेंस तक पे खर्चा कम करने की बात हो रही है। तो ये किस तरह से विकसित भारत का बजट है, ये शायद सिर्फ निर्मला जी और जुमलेबाजों की टोली ही बता सकती है। मैसेज डाल दूंगा। ठीक है मैम, आज 2024 का बजट पेश हुआ है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, कैसे देखते हैं? जो भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार ने आज बजट प्रस्तुत किया है, वो बिल्कुल इस बात को साबित कर देता है कि ये एक जुमलों की सरकार है। मोदी जी ने वादा किया था 2014 में कि बहुत हुई बेरोजगारी की वार, अब की बार मोदी सरकार, कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। आज 10 साल बीत गए, कहां है नौकरियों का हिसाब किताब? क्या 20 करोड़ नौकरियां इस देश के लोगों को मिली हैं? बिल्कुल नहीं मिली। बहुत बड़ी बात होगी अगर 1 करोड़ भी नौकरियां पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने देश के युवाओं को दी हैं। आप प्राइवेट नौकरियां छोड़िए, आज के दिन में सेंट्रल गवर्नमेंट की 10 लाख से ज्यादा वैकेंसियां खाली हैं, पोस्ट खाली हैं, लेकिन वहां पे भर्तियां नहीं हो रही हैं। तो जो युवा रोजगार ढूंढ रहे हैं, ना उनको प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां मिल रही हैं, ना उन्हें सरकारी सेक्टर में नौकरियां मिल रही हैं। आज फिर से एक नया जुमला हो गया कि 55 लाख नौकरियां हम देंगे। भाई, अभी तक 10 साल में कितनी नौकरियां दी? दूसरी बात, महंगाई की वार शायद आज जितनी है 10 साल पहले भी उतनी नहीं थी। आज आटा, दाल, सब्जी, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, एक आम आदमी को, एक आम परिवार को जो खर्चा करना है, उसको अपना महीने का खर्चा नहीं चल रहा है। लेकिन आज के बजट में भी महंगाई की वार कम करने के लिए एक भी कदम नहीं उठाया गया है। दिल्ली के लिए बजट कितना मायने रखेगा, कितना खास होगा, कुछ है इसमें? दिल्ली के प्रति सौतेला व्यवहार हमेशा केंद्र सरकार करती आई है। उन्होंने उसी ट्रेंड को कंटिन्यू किया है। दिल्ली को अगर अपना राइटफुल शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्सेस मिले, जो दिल्ली के लोग इनकम टैक्स के तौर पर देते हैं, तो दिल्ली को कम से कम केंद्र सरकार से 15,000 करोड़ मिलना चाहिए। लेकिन कितना मिला है? 1,000 करोड़। दूसरी बात, देश भर की अर्बन लोकल बॉडीज के लिए केंद्र सरकार ने बजट में पैसा रखा है, लेकिन दिल्ली की एमसीडी के लिए 1 रुपया भी नहीं रखा है। तो ये बिल्कुल साफ है कि दिल्ली के प्रति सौतेला व्यवहार है। लेकिन दिल्ली सरकार दिल्ली के लोगों के विकास के प्रति प्रतिबद्ध है। हम तो काम करते रहेंगे, लेकिन केंद्र सरकार का ये सौतेला व्यवहार ठीक नहीं है। आज के बजट में मुख्य पॉइंट रहे कि आयुष्मान जो कार्ड है उसको बढ़ाया जाएगा, जो आंगनबाड़ी के वर्कर्स हैं उन तक भी पहुँचाया जाएगा। एक लखपति दीदी योजना है, उसको भी बढ़ावा देने की बात हुई। उसके साथ जो अपना बजट है डिफेंस का, उसको भी 11% के आसपास बढ़ाया गया है। तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट देखती हैं आप इनको? या देखिए, आज के दिन में आयुष्मान भारत के नाम पर इतनी ज्यादा टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। आपके घर में 2 व्हीलर तो नहीं है, आपके घर में फ्रिज तो नहीं है, आपके घर में कूलर तो नहीं है। तो वास्तविक तौर से आयुष्मान भारत किसके लिए उपलब्ध है? दूसरी तरफ आप देखिएगा तो हेल्थ के में जो पूरा एक्सपेंडिचर किया गया है वो बजट के 1.5% मात्र है। शिक्षा पे जो बजट दिया गया है वो पूरे बजट का 2% मात्र है।
तो ये सब बिल्कुल जुमले हैं कि हम दीदियों को लखपति बनाएंगे, हम महिलाओं को रोजगार देंगे, हम शिक्षा देंगे, हम स्वास्थ्य की व्यवस्था देंगे, जबकि वास्तविक तौर पे कोई भी बजट एलोकेशन नहीं। So they don't nurture the CPSUs, they don't patronize the MSME, but what is the use of telling this and that? தேர்தலுக்கு முன்பாக ஒன்றிய பாரதிய ஜனதா கட்சி அரசு இன்றைக்கு और जिस देश की फिनेंस मिनिस्टर एक महिला हैं, जिस देश के प्रमुख ओहदों पे महिलाएं हैं, जिस देश में अगर हम 26 जनवरी की परेड देखें तो महिलाएं उसको लीड कर रही हैं, और आप एक जर्नलिस्ट हैं ANI की, आप महिला हैं, और मैं भी एक प्रवक्ता होने के नाते, एक महिला मोर्चा की अध्यक्षा होने के नाते यहाँ पर खड़ी हूँ, तो देश में आज भारत माता की जय सही में दिख रही है, बहनों की जय सही में दिख रही है। ये केवल कहने की बात नहीं है, जो कहा सो किया, जो वादा किया था बहनों से वो मोदी जी ने पूरा किया। हर क्षेत्र में, हर जगह हम देख रहे हैं कि बहनें पुलिस की वर्दी से लेके कमांडो तक बन रही हैं, और आज राजनीति में भी बहनें आगे बढ़ रही हैं। देखिए, अभी तक आदि आबादी के बारे में किसी ने नहीं सोचा। पहली बार नारी जो शक्ति स्वरूपा है उसके बारे में, और सक्षम सशक्त नारी से ही सशक्त भारत बन सकता है, इस सोच के साथ मोदी सरकार ने निरंतर महिलाओं के सम्मान के लिए योजनाएं बनाई हैं, और आज विकसित भारत के संकल्प में समर्थ स्वाभिमानी नारी अपना योगदान दे रही है। उसी के अनुरूप ये बजट में भी प्रावधान है, और इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं निर्मला जी को, धन्यवाद करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को। नारी शक्ति रोजगार अधिनियम भी पास किया गया था, क्या करेंगे? देखिए, बहुत पहले ये हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसी सोच नहीं थी। पहली बार महिलाओं को पॉलिसी मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग में भागीदार बनाया गया है, और ये महिला के सम्मान में वृद्धि के साथ साथ महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारा देश गार्गी मैत्रेयी का देश रहा है और महिलाओं का सम्मान हमारी सोसाइटी में हमेशा होता रहा है, लेकिन मोदी सरकार का विजन है कि उस आधी आबादी को सशक्त बनाना, पॉलिसी मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग में भागीदारी देना, इसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। Comment on overall budget which presented by the Okay. So the budget, I must say, was a bit of a surprise, because many of us were expecting a commitment to stay with the fiscal deficit at 5.3, which was the earlier commitment. The surprise is that the government has announced a fiscal deficit of 5.1, which is even stricter than what they had originally indicated and which the markets had readily accepted. So this clearly comes from a great confidence the government has in terms of growth continuing, revenues continuing. Maybe there's some disinvestment funds in there. We don't know on what basis they believe that the revenues will be good and healthy enough to enable the fiscal deficit at 5.1. Because on the other hand, there has been no scaling back of capital expenditure, fortunately. The program not only continues, but there's an increase of 11.1% and an absolute number which is, well ahead of where we have been spending thus far. And we have had a pretty big allocation in capital expenditure thus far. So these are two huge positives. CapEx up, fiscal deficit down. Now, within that, there is, of course, commitment being made for poor, women, youth and farmers, 4 very important constituencies. The government already has amazing programs there. I can certainly speak for the women self-help group movement, which today at 83 lakh self-help groups and 9 crore women beneficiaries is a huge movement in the country. And the ability to deliver through these self-help groups health programs, livelihood creation, enabling these women to earn, and therefore the economic power that comes with that, so that they can repay these loans. And already the repayment of these loans are at 98, 99%. So these loans don't go bad. This movement got mentioned deservedly, rightly,
in the interim budget, and I'm sure that this is one program which will absolutely continue. I can also say that given the work I do in water and sanitation through the not-for-profit I chair, which is the India Sanitation Coalition, that we have seen the success of the Swachh Bharat mission that has happened through this government in terms of allocation of resources to creation of, in the first instance, toilets, in the second, encouraging people to use the toilets, although there we have to continue to ensure that people use the toilets and that the toilets, of course, get repaired. But there is a program called the Lighthouse Initiative, which we are working with at the India Sanitation Coalition with the ministry. And this, I give you this example because it's an indication of what is happening on the ground, because the funding that has been provided, and I hope continues to be provided through what this interim budget indicates, because there's no indication of scaling back, that money goes from the centre and often sits at the state level and the Gram Panchayat level. And the public-private partnership that we have developed is for the private sector to come in and help the Gram Panchayats to use that money so that the villages at the Gram Panchayat level can be declared model villages. So the government turns to the private sector and says, we don't need your money. We need you to help ensure that in the areas where you work, where your factories are, where you're doing CSR work, that the money we have allocated for very important programs gets spent. So I think what we are understanding here is the interim budget is saying there are wonderful programs in place. Let's make sure that they continue. Let's make sure that the absorptive capacity of the economy is increased with the help of partnerships. We don't need to throw more money at it till we know that the money that we have allocated is getting properly used. And 6 months later, we will see in the budget whether there is need for some of these funds to be enhanced or how it will happen. There was mention very clearly of the state allocations will depend on outcomes. So it's really saying if you use the money, you get more. If you don't use it properly, you don't get more. So the allocations being based on outcomes is a great way to manage this. And therefore, good programs continuing. There's no indication of a pullback. New programs hopefully get announced 6 months later where required. Some new programs already announced here, which is the fund, which is to help new initiatives that helps youth. It can help women. It could even help farmers if there are new futuristic initiatives where the commitment is interest-free loans for 50 years. This is like free money. It's money like venture capital, which we've always had a shortage of in the country. We relied on a lot of offshore venture funds. This is now the government saying we are creating a huge corpus for you to be able to access. So that, I think, was a big new announcement, which will help youth, can help women entrepreneurs, can help startups, which are very important constituents in terms of the growth of the economy. As you have covered all the things, and I just want to ask you specifically about the capital expenditure increased 11.1% of infrastructure, how it will help in country growth. You know, capital expenditure helps each and every one of us. As a citizen, when I travel from one place to another, that it takes me half the time that it took me to drive to Dehradun, to drive to Savai Madhopur. You feel that as a citizen. For every business, small or big, improvement in logistics is money saved, time saved, and it is hugely important for the economy. So we are seeing the logistics, and the finance minister mentioned logistics in many ways through the interim budget discussion. Railways, 3 new economic corridors to move, I think she said cement, minerals and energy. That helps in terms of the speed at which goods move. That saves money, it saves time, it gets goods to where they should. As passengers, announcement of more Vande Bharat bogies being converted. That helps you and me as citizens when we travel. More airports, that helps goods, it helps us as citizens. The improvement of logistics in the country, ports, I mean, there's no end to the logistics support and the benefit it provides
the economy as a whole at every level. Smooth movement of goods, smooth movement of people. So that, I think, is a story which we have to continue to invest in. India's logistic costs have been notoriously high, not just for lack of infrastructure, but also the paperwork and the soft side of it, which is being digitized now. And if we can improve that, the economy as a whole benefits hugely. I think if we can look at the digital architecture and infrastructure of the country and the full infrastructure, as in the bricks and mortar infrastructure, which this government has actually developed so well, it is absolutely the direction for us to ensure high growth in the future. So the benefit is huge for every one of us. It connects India, it connects each one of us, it connects us to the rest of the world. Okay, ma'am, you have talked about the fiscal deficit. So what does the revision mean, and how is the new target going to help the country? So the new target helps because it shows that we are back to fiscal prudence, which means government does not overborrow. If market borrowing is high, what you get is inflation. If market borrowing is high, it squeezes out the ability of the private sector to borrow. So both ways, it's not healthy. We rightly increased our market borrowing, and the previous commitment on fiscal commitments went out the window over COVID. And it happened across the world. Every government had to step in to save its citizens. Now that we are over that hump, now that we have growth, the desire to pull that back into some level of reason is what has been demonstrated and is needed. But it can't happen quickly and suddenly, because it shouldn't take the growth momentum out of the economy, and which is why it's a glide path. So we are not back to where we were. We are heading in that direction, and the commitment was made earlier to head there. We are now even over-promising on that commitment by saying, okay, we had said 5.3, but we can actually do 5.1. So it is, in fact, actually a surprise that in an election year, the government has chosen to show such responsible behavior. To me, it is an endorsement of the fact that there's confidence in our growth story on the one hand, and the tax and revenue collections therein, and on the other, that our growth is there to stay and is not going to require huge amounts of government support alone. I think what is unsaid but is required is for the private sector to come in now with its capital expenditure programs. The green shoots of that are evident already, and I expect that there will be more public sector capital expenditure as well. Okay, no change in tax structure, no in indirect and direct. Do you accept will be cut in tax structure when full budget? It's an interim budget, and she has very clearly marked what all we have done and what is to be done in the coming years, particularly the infrastructure activities which are going to take place in the country, the continuation of the infrastructure activities, and also what all we have done for the women, for the youths, farmers. So there are so many achievements, and also what the continuation will be, and regarding the industries, regarding the education, everything, and she has made it very, very clear. And also she has mentioned about the growth in the economy, and the fiscal deficit has come down. So the country is going in the right direction with the beautiful economic growth, and how the next year will be, which is being viewed by her, and it is quite natural. We all know that it is 100% sure that we are going to be there next year also, and BJP government will come out with the full budget during June or July. Yeah, but see, they are free to have alliance with anyone, but when he says that with a national outlook, we welcome it. And it is their party's decision. So, as far as BJP is concerned, it is their internal party issue. But as far as BJP is concerned, BJP is a national party with a national outlook, along with the states' rights.
As far as this Hemant Soren issue is concerned, it is really shameful that a chief minister has been arrested when in power, and the problem is that he has been caught because he has been involved in a land grabbing of a tribal land belonging to tribals. So he cannot say that, it is a vendetta, political vendetta, but see, without any prima facie, the arrest would not have been made, and there is also money laundering in this issue, and that is the reason he has been arrested. So let him see the court, let him face the court. What is that? See, even after 3, 4, 5 years of, introduction of this amendment, I am really surprised these people doesn't understand what is CAA. The controversy is unwanted form, because this CAA amendment is not applicable to any Indian citizen, and it is applicable only to those who entered India before December 2014. So it's very clear that to minorities in Pakistan, Bangladesh and Afghanistan who are there in India, who wants to apply. And no way the state is connected. The main issue is that no way the state is connected. It is totally, it is pertaining to the central government. So how can Mr. Stalin say that they will not allow, you cannot have the foothold? I don't understand. It is very clear that these people have not understood what is CAA. I can only pity these people that they want to do anything, they want to oppose anything what BJP does. So it's really, it's a comedy, that's all. See, again, but he was very, very clear when he was in power. So he told, in fact, he explained about the CAA in a very excellent manner when he was the Chief Minister of Tamil Nadu. I think he will stick on to what he said. Sir, today there was a protest. See, even yesterday I have told, see, every day in Tamil Nadu, at least minimum 5 to 10 people are dying. They are killed or met with an accident for the, after consuming liquor. This is what is happening. And in fact, I have very clearly stated with the dates. So many thousands of people have died in the last 2.5 years after drinking. The son killing his mother, mother killing the father, and son killing father, and a drunkard killing his friend. See, this is happening every day, in and out it is happening. And I am really astonished to see why these people are not taking any steps to close this taskmark. The government itself is selling the liquor. So instead of doing that, they kill, whether it is murders, every day murders are happening and suicides are happening, accidents are happening. You people don't bother about that, but it is your inefficiency in education that you have not, you don't have the standard of education. That is the reason the kids, the students are afraid of writing NEET, or they fail in NEET. So instead of motivating them, instead of empowering them with a better education, I don't understand why these people are doing this. First and foremost is that you close your taskmark shops, which creates hundreds and hundreds of murders. Do that. Don't talk about this. It is a Supreme Court order. If at all you want anything, go to Supreme Court. Why you are not doing this? This is really atrocious. And they are playing with the sentiments of the parents and the people and the students. It is wrong. No, it is not a question of confusing. They are literally damaging the students' education. They are literally destroying the students' education and the future of Tamil Nadu. That is what these people are doing. See, if the more the Tamil Nadu students qualify in NEET, the more the seats they get throughout India. After NEET, Tamil Nadu students who were getting seats only in Tamil Nadu, now they get more seats, additional seats all over India. This is a record, this is a fact. So these people don't understand.
That is the main problem. In order to develop, in order to encourage the distilleries, these people are allowing this liquor, the quality less liquor. Definitely it is to be highly condemned. So let them stop all these things and stop selling liquor. See, it is a very silent revolution what Mr. Annamalai is doing, or the party president, because he is reaching almost each and everyone in Tamil Nadu, because he travels across all constituencies and people are thronging to see him. It is really a silent revolution what he is doing. Though the media here is trying to, curtail the events, but he is in touch with. It is a last mile connectivity what he is doing, and we have strengthened our booth level organization, and we are receiving. People, we are receiving more and more people, more and more, voters, more and more partymen coming in, and we are happy. We are getting very stronger. In charge for Tamil Nadu for the parliament election. Now, Mr. Arvind Menon is a very nice personality, and he knows the organization better. And Mr. Sudhakar Reddy, both, he is also an experienced campaigner. So all are charged up. So definitely BJP in Tamil Nadu in the coming parliamentary elections, we are going to make a very, very big impact in Tamil Nadu. Target number, sir? Now we have already said at least 25 parliamentarians should go, minimum, from Tamil Nadu. That is our target. We are saying this for the past 2 years. It's visible and evident because in the last 2-3 years we have been growing, and as I told you, more number of people are coming from various political parties, also students, farmers, women. So we have also strengthened our booth level activities. So it is very evident. Thank you. What do you think? It's very difficult to achieve all three objectives by a government, and they have proved over the last 10 years that somewhere they've been able to create brick by brick a social security framework which is available to every citizen of India irrespective of caste, creed, religion, region, language, and that includes providing houses to poor in rural areas. They have mentioned 3 crore houses were provided over the last 10 years, and 2 crore more will be provided in the next 5 years. Even for urban poor or middle class, they want to provide housing facilities in some ways, so that you can see coming up in the next budget. And so, of course, providing food, providing free food for 80 crore people, free ration, Ayushman Bharat, that is for the medical and health-related activities, then pension scheme, Atal pension scheme, and insurance scheme also. So they are basically slowly, brick by brick, they have built what is known in the world as social security in developed countries. And if you have to become or call ourselves as a developed country in 2047, if we don't have that, then literally we are not taking every citizen along. And that's where, without brouhaha, this government has been able to build and also execute. It is one thing to announce, the other thing to execute. They've been able to execute a framework using direct benefit transfer, Jan Dhan Aadhaar Mobile, very high-tech activities. The world is not still used to any country doing at this scale. And that's where I think this government is focused on creating that basic social security framework based on which India can create a runway to become a developed country in 2047. And so I'm pretty much extremely proud of the social security framework that is created over the last 10 years vis-a-vis other achievements. There have been great achievements on infrastructure, on fiscal controls, on the growth, but the social security is what gets you everyone along and gives everyone an equal opportunity to live with dignity and also realize their potential. And then infrastructure is what is going to give you the ability to create that growth using everyone's hard work and skills.
So how you look this Vande Bharat or rail network in budget? What you think? So in a way, we are spending a lot of money on creating infrastructure of roads, ports, airports. We have always had a situation where there were comments made by international experts that our logistics costs are high. That's why the manufacturing is not coming into India, because it was supposed to be in high double digits. Whatever has happened over last 10 years in terms of roads, ports, airports, the logistics cost has come down to, by many estimates, to a higher single digits from double digits. And that's a very welcome move. But the Atmanirbhar technology that has been developed in Vande Bharat and many metros, that is going to basically reduce the cost of logistics even further, not only of freight but also passenger traffic. And that's where basically government is now very keen to use indigenously developed technologies for high-speed train, the bogies and things like that, instead of importing from outside, because it happens at a much, literally fraction of a cost. And we are able to cover the entire country in a very short time. That's where, for me, the focus on railways, the budget outlays have been increased, and execution has been the mainstay. Sir, after budget, market is flat. I'm not positive. What do you have to say about this? No, in a way, the expectations get built up. This was a vote on account, so not much was expected either. But internationally, there is a issue on the US interest rates and European interest rates going down. So once that clarity comes, you will see a lot of foreign money coming in. Indians have been investing. The Nifty has given the highest returns across all the large markets in the world over last 3 years and last 1 year and last 2 years. And that's where Indian investors have been putting a lot of money. So what I look at it is how the budget is directionally. It was vote on accounts, which is basically giving you just the accounts. And this budget speech was also one of the shortest because of the same. So going forward, the new budget after the election is what one would wait for. But currently, a lot of people are happy that government has been able to achieve their budget deficit targets, the fiscal deficit targets, lower than what they had announced. And they have also been able to give 3 years roadmap to bring it down to 4.5%. And so these are very, very positive numbers that have been given. एक मिनट, अच्छा सर, किस तरह से बजट को देखते हैं? आपने कहा कि की पॉइंट जो है महिलाएं हैं, फार्मर्स हैं, मतलब जवान तबका और जो गरीब हैं उनके ऊपर किया गया है. किस तरह से सोशल सिक्योरिटी और जो राशन देने की बात की है, क्या किस तरह से? जब बजट पेश हो रहा था तब स्पीच को सुनते सुनते मेरे दिमाग में 3 शब्द आए थे कि एक वेलफेयरिज्म, एक ग्रोथ और एक फिस्कल रिस्ट्रेंट. तो वेलफेयरिज्म, जो सोशल सिक्योरिटी जो विकसित देश हैं, उन्होंने अपने सभी नागरिकों के लिए एक मिनिमम जीने की सुविधा दी हुई है, जिसमें खाने की जो हम आज उसको फ्री राशन के नाम से जानते हैं, भारत में 80 करोड़ लोगों को मिलता है, या उनकी हेल्थ के लिए आयुष्मान भारत जैसे हमने क्रिएट किया है, या तो उनके ओल्ड एज पेंशन के लिए भी सुविधा अटल पेंशन योजना बनाई है, इंश्योरेंस स्कीम भी बनाई गई है जो आफ्टर डेथ फैमिली के लिए फायदेमंद होती है, और जो स्कूलिंग, स्किल डेवलपमेंट, वो सभी चीज जो है वो सोशल सिक्योरिटी के दायरे में आती है. और उसमें ये सरकार ने, मुझे लग रहा है, बहुत ध्यान दिया है. और जनधन आधार मोबाइल और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत उन्होंने एक चीज बनाई है जिसमें जो लीकेज होती थी वो बहुत कम हो गई है, या तो नहीवत है, जिसकी वजह से जो बेनिफिशियरी है उनको वो बेनिफिट पहुंच रहे. तो मुझे लग रहा है ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है. और कोई भी देश अपने आप को विकसित देश कहता है तो उसके लिए ये मिनिमम सोशल सिक्योरिटी एक मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट होती है. तो जो अब धीरे धीरे करके भारत देश अपने नागरिकों के लिए एक पूर्ण करने जा रहा है, और उसी के ऊपर फिर आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हो तो जितने भी नागरिक जो है वो अपने स्किल्स के द्वारा अपने जीवन को और अच्छा कर सकते हैं और ग्रोथ आ सकता है. दूसरे देशों को जो मैन्युफैक्चरिंग चाहिए या सर्विसेज चाहिए वो दोनों दे सकते हैं. तो उसी की वजह से ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर रहा, जिसकी वजह से अब ग्रोथ आपको मोमेंटम दिखने लगा है. तो अगले 25 सालों में ये बेसिक जो बुनियादी चीजें बनाई गई है सोशल सिक्योरिटी की, तो वो
चार तबका, जैसे चार कास्ट कही आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नाम से मैडम वित्त मंत्री जी ने, कि गरीब, युवा, किसान और महिला, ये चार अलग कास्ट है और उनको अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाए, उनको बेनिफिट और दिए जाएंगे। तो क्योंकि उनके पास एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की भी एक सुविधा है जो पहले किसी ने सोची नहीं थी, किसी ने बनाई नहीं थी और टेक्नोलॉजी के द्वारा उपलब्ध की गई है। तो मुझे लग रहा है कि ये चार चीजों पे ज्यादा आगे जाके भी भार, ये चार ग्रुप्स पे ज्यादा भार दिया जाएगा। युवाओं को स्किल की आवश्यकता है, रोजगार की आवश्यकता है। स्किल के बगैर रोजगार जो है उतना अच्छा नहीं रहता है, तो स्किल्स वगैरह दी जाएगी। जो महिलाओं को भी कैसे बुनियादी सुविधा दे सकते हैं इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, और परिवार के लिए जो चाहिए होता है, बच्चों की शिक्षा वगैरह, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। सर हाँ, और गरीबों को ये जो सोशल सिक्योरिटी की जो बातें हैं उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल ये चार तबकों को साथ में लेकर के चला जाएगा। उसके सामने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा जो ग्रोथ मोमेंटम दे सके, बिजनेसेस अपने आप अच्छा बढ़ सके, जहां पर ये जो चार ग्रुप्स है उसके साथ दूसरे ग्रुप भी जोड़ के वो चीजों को एक तरह से वर्चुअस साइकिल बना के आगे चलेंगे। सर देखा गया कि जो चेंज नहीं हुआ है डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस में, कोई स्लैब में, किस तरह से देखते हैं? और दूसरी बात, बजट आने के बाद मार्केट फ्लैट है, कुछ ना ज्यादा ऊपर गई नीचे गई, किस तरह से देखते हैं? तो एक तरह से टैक्सेस का अनाउंसमेंट नहीं किया है, वो भी दर्शाता है कॉन्फिडेंस कि आपने टैक्स तो बढ़ाया नहीं है, लेकिन आपका फिस्कल डेफिसिट आपने कम करने की बात कही है 5.8% से 5.1% और फिर 4.5%। तो आपको लग रहा है कि टैक्स बढ़ेगा। टैक्स क्यों बढ़ेगा? क्योंकि ग्रोथ बढ़ेगा। तो आपने एक तरह से ग्रोथ का प्रेडिक्शन अच्छा किया है कि जो आपके टैक्स में रिफ्लेक्ट होगा। तो मुझे लग रहा है कि ये चीजें जैसे जैसे लोग ज्यादा पढ़ेंगे वैसे वैसे उनको ध्यान में आएगा कि ये सरकार जो है वो अलग तरीके से सोच रही है। और दूसरा है कि जो भी बिजनेसमैन खास करके फॉरेन से आते हैं, बट जो इंडियन बिजनेसमैन ऑल्सो थोड़े हर साल जो टैक्स चेंज होते हैं उससे तंग आ जाते हैं। तो एक कंसिस्टेंट फ्रेमवर्क जो बन जाता है, जो डायरेक्ट टैक्स का भी और इनडायरेक्ट टैक्स का भी, तो उससे कईयों को एक्सपेक्टेशंस में अपने बजट बनाने में राहत मिलती है। तो मुझे लग रहा है कि वो चीज भी ध्यान में रखा गया है कि ज्यादा टिंकरिंग जो पहले होता था वो न हो। और ओवरऑल कहीं ना कहीं जो ग्रोथ का मॉडल जो बनाया गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल सिक्योरिटी को लेकर के और फिस्कल रिस्ट्रेंट रख के, क्योंकि जब देश में बहुत खर्चा हो जाता है और उसके सामने ग्रोथ नहीं आता है तो देश एक समस्याओं का सामना करता है कि जो उनकी ऋण लेने की क्षमता कम हो जाती है। तो वो फिस्कल रिस्ट्रेंट रख के करेंगे तो मुझे लग रहा है कि आगे जाकर के ग्रोथ और उत्तरोत्तर बढ़ सकता है। हाँ सर, मार्केट के बारे में और मार्केट, एक तो भारतीय बजट जो वोट ऑन अकाउंट था तो लोगों को उतना अपेक्षा भी नहीं थी कि यहाँ पे कुछ नया आएगा। बजट में कोई नए टैक्स नहीं डाले हैं, तो उससे एक राहत तो सबके दिमाग में है। लेकिन यूएस और यूरोप में इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर एक चर्चा चल रही है कि पिछले 2 साल से इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़े थे, उसको कैसे और कब कम किया जाए। तो उसके ऊपर एक थोड़ी अभी भी दुविधा जारी है। पिछले 2 दिनों से बहुत एक्सपेक्टेशंस थे जो खरे नहीं उतरे हैं। तो उसकी वजह से भी एक तरह से फॉरेन पैसा जो है वो एक कगार पे बैठा हुआ है और जो इंडियन निवेशक है वो काफी खुश है। और धीरे धीरे जो एक डायरेक्शनल मूवमेंट आप देखेंगे तो भारतीय ग्रोथ के अनुरूप, एक्सपेक्टेशन के अनुरूप आपको देखने मिलेगा। सर किस तरह से देखते हैं बजट को 1 से 10 नंबर? नहीं, इन्हें वे जैसे मैंने कहा वेलफेयरिज्म में मैं तो 12 मार्क दूंगा 10 में से, क्योंकि वेलफेयरिज्म हैज बीन अ की स्टोन ऑफ द गवर्नमेंट विच नॉट मेनी पीपल हैव एक्चुअली डिस्कस्ड अबाउट। और जो ग्रोथ है उसमें और फिस्कल रिस्ट्रेंट दोनों में मैं 10 में से 10 दूंगा। तो ओवरऑल ये बजट जो है इन टर्म्स ऑफ पास्ट है, वोट ऑन अकाउंट पिछले जो नंबर है 2023-24 के उसके ऊपर ही वोट ऑन अकाउंट होने वाला है। तो वो जो है वो काफी बढ़िया मैनेज हुआ है, ज्यादा खर्चा नहीं हुआ है, काम अधिक हुआ है और जो उन्होंने प्रॉमिस किया था वो सब एक्चुअली हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल 10 on 10 वाजबी है। थैंक यू सर। थैंक यू। मैं ये भी देख रहा हूं
कि भाजपा को और भाजपा के नेताओं को जो है विपक्ष के नेताओं की ज़्यादा चिंता रही लोगों की बजाय। आज वो सत्ता में है, लोगों के काम कराएं, विकास कार्य कराएं, लेकिन जो है विपक्ष के नेताओं की उनको ज़्यादा चिंता रहती है। अभी मैं मुख्यमंत्री जी का बयान था 2 दिन पहले, हमने देखा कुछ रोज़ पहले मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि कांग्रेस की सेहत के लिए ये अच्छा हो कि दीपेंद्र को पीछे कर दिया जाए। आपने भी देखा होगा बयान। अब मुख्यमंत्री जी को कांग्रेस की इतनी सेहत की चिंता और वो हमें ये सुझाव दे रहे हैं कि दीपेंद्र को पीछे करें तब कांग्रेस सेहत सुधरेगी। तो कांग्रेस की हम समझ रहे हैं कि वो बड़ी अच्छी सच्ची नीयत से कांग्रेस की सेहत की वो शायद जो है चिंता कर रहे होंगे, हमारी चिंता कर रहे होंगे। तो क्या ऐसे ही अभी कल मैं देख रहा था उनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का जो बयान था, तो ये लोग जो मैं समझता हूँ कि विपक्ष को निशाने पे लेते हैं, मेरे को निशाने पे लेते हैं, ये इनकी कार्यशैली का हिस्सा बन गया है। मैंने तो कल भी कहा नारनौल में कि शायद इसलिए निशाने पे लेते हैं कि ईमानदारी से हम लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हर वर्ग की लड़ाई लड़ रहे हैं, हरियाणा के विकास की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसी के साथ अन्याय हो तो हम ईमानदारी से लड़ाई लड़ते हैं। चाहे वो अग्निपथ योजना जब कैंसिल हुई तो हम जवान के साथ खड़े हुए, 3 कृषि कानून काले आए तो हम किसान के साथ खड़े हुए, महिलाओं के साथ अन्याय हुआ तो हमने अपनी बेटियों, खिलाड़ियों, पहलवानों का साथ देने का काम किया। और शायद ये बातें इनको सही नहीं लगती, इसीलिए ये शायद निशाने पे लेते हों। लेकिन अब ऐसा समय आ गया है कि जब भाजपा के सारे नेता प्रेस में मेरे खिलाफ बयान अच्छे से उनके बयान नहीं छपे, तो उस रात जब मैं बयान जब जो है रात को सोते टाइम जब बयान दिखते हैं कि सभी ने ठोक के आज खिलाफ बोले हैं, बीजेपी सारी लोगों के कामकाज छोड़ के, सरकार की चिंता छोड़ के मेरी ही चिंता कर रही है, तो बयान पढ़ने के बाद मेरे को नींद अच्छी आ जाती है क्योंकि मुझे लगता है कि शायद मैं सही में ईमानदारी से जो है ये लोगों के हकों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। अब आपने 10 साल बजट पहले भी देखे होंगे, ये लास्ट बजट है 2024 के चुनाव से पहले, तो क्या आपको लगता है कि कुछ मिलेगा? देखिए मैं समझता हूँ ये जो बजट है, ये बजट तो एक तरीके से घोषणा पत्र आप मान सकते हैं इसको, लेकिन आज का जो क्रियान्वयन करने का समय था वो तो जो है मैं समझता हूँ कि पिछले 10 वर्ष में जो हो सकता था हो गया। अब तो अगली बात कह रहे हैं, अगली बात तो चुनाव के बाद की बात है। ये तो इंटरिम बजट के रूप में इसको देखा जाना चाहिए। दुर्भाग्य ये है कि केंद्र सरकार के हरियाणा के बड़े बड़े प्रोजेक्ट इन 10 वर्षों में हरियाणा से स्थानांतरण किए गए या ठंडे बस्ते में डाल दिए गए, जो कि हरियाणा के लिए मंजूरशुदा प्रोजेक्ट है। और कोई एक नई बड़ी परियोजना केंद्र सरकार की तरफ से हरियाणा में किसी भी बड़ी परियोजना का बजट दिया नहीं गया। अभी 10 वर्ष में जो ये बजट है, ये तो इंटरिम बजट है, इसको तो हम घोषणा पत्र के रूप में आप ले सकते हैं। आगे करेंगे नहीं करेंगे वो तो समय बताएगा। 10 साल से तो उन्होंने कुछ किया नहीं। ये इस बात का हमें थोड़ा सा जो है बजट को लेकर कहना है। भाजपा interim budget. Now, I think the budget was definitely one that has built upon, the directions of previous budgets, foundation, building blocks. At the same time, continuing to invest in the very important areas of capital expenditure, infrastructure, encouraging, the entire growth and innovation, focus on development, women, poverty alleviation, and all of those. At the same time, also maintaining by looking at the fiscal deficit being at 5.1% coming down in the coming year and going down further to 4.5% in 2026. I think that to me is a very strong point of this budget. So yes, I think overall, we were wondering whether this budget will become very populist because of the election. But I think it's a solid budget building upon what has been working in the past for India, but also strengthening it with
important new initiatives, as we move forward. Yeah, I was hearing that industry body CII has recommended 5.6% fiscal deficit, but Government of India has keep it at 5.1% fiscal deficit. So what is your take on fiscal prudence on these things? And I think it's very important for a country, like India to demonstrate the ability to drive these outcomes, basis the need. Yes, during the pandemic, our fiscal deficit did go up a little bit. It was 5.8%, but showing that we are working, to bring it down and still increasing our expenditure when it comes to capital expenditure, and important initiatives is very, very important. I think the entire 1 lakh crore allocation of the corpus to research and development and a long-term perspective of 50 years at near 0% or, very low interest rates, I think is a big driver of innovation. हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करेगा लेकिन हेमंत विश्व शर्मा को नहीं करेगा. हेमंत विश्व शर्मा हो, अजित पवार हो, नारायण. I think for a country like India, we have to see how we can be more valuable to the world, not only as a services company, but, services backend or, country which is using its human capital to serve the needs of the world, but actually lead the world, through our own products, and new age, kind of areas. And I think the innovation part is the one that's going to drive that to the best possible way. And what the government is also demonstrating through its increased prioritization of infrastructure of the normal kind that we all know about, but also the digital infrastructure, the entire digital public infrastructure building blocks that we have, in the financial services, of course, we've seen that, 45% of the world's transactions in digital happen in India. Anybody can just scan a QR code and make a payment through a UPI. So we've demonstrated our ability to create world-class infrastructure there. And I think growing that requires a very strong effort by government, private sector, all, research, all to work together. So my wishes, and when I see this thing that, investing in research should become as cool as investing in startups. Because, that is one layer before the startups get created. And the government itself is showing that and demonstrating that by building strong digital public infrastructure. So I think government becoming a buyer of innovation, working with private sector is a very unique thing for India. And, we can then take this to Africa, which is now part of G20, other countries in the global south, South America, and actually position India much, much stronger. And all of this will enable us to get, of course, much greater and stronger revenue growth. I think we see our tax collections in GST, etc., have doubled in India. So, a good revenue backed by smart expenses, will always drive, your fiscal deficit. And hopefully, in times to come, we will see how India strengthens its size, not only the size of our GDP, which will poised to be the third largest, driven by $1 trillion of our digital economy, which is expected to happen by 2030, but more importantly, do it, in a fiscally prudent manner. I think that's the beauty of this entire budget that has come out pretty well. Earlier, just IMF released a report in which we were the fastest growing economy of the world. And people were saying that the optimism is in the air. So how do you see that kind of optimism according to your industry in which you work, as a digital disruption happens and people are also skeptical about AI and future of industry 4.0. So how do you see your industry? How to take this? Sure. So I think, we are in a very disruptive industry by definition, right? So when we look at ourselves as drivers of leadership in the digital age, we operate in a manner where we have to be able to deal with uncertainty, new technologies, equip ourselves quickly. And therefore, if you see our group Jetline, which was earlier investing more in building more plants and more lines, and investing capital there to Jet Synthesis, which is now, synthesizing in near real time systematically, but still at an accelerated pace in a more asset-like manner to be able to deliver outcomes to where the world is moving.
We have become much greater adopters of Gen AI, much greater adopters of blockchain. Blockchain builds trust. Gen AI builds, better personalized service to customers. So we need to understand the power of these technologies. All are led on digital, and the ability to therefore deliver better experiences to consumers and customers at a lower price. If we look at the video gaming and esports industry, which comprises a large part of our new age businesses, we find that the world global industry is a $180 billion industry. India is not even a $2 billion industry. So we are less than 1% of the world industry. So our catch-up potential is huge from India. A large part of consumption in this economy happens with young people. So we have 17% of the probably the utilization of that consumption, but monetization or our contribution to the global industry is so small. So that clearly shows a very high growth CAGR for us of 40% for the next 10 years in areas like this. And we have to be able to deal with new technologies, because what happens is AI, for example, will change the way machine and man will work together, because so many jobs that man is doing will be taken over by machines. But then how do you really create new skills with people to then be able to do a lot more? I think that's important. So in our industry, we see that happening, on the art side, we see that happening on many, many areas when we look at certain types of tasks that are getting automated when it comes to customer service, etc. But we are creating newer jobs, in areas that are more meaningful for us. Building digital safety using blockchain, enabling those capabilities to then drive smarter outcomes for us over the next few years is becoming something very important. And I think India can do that. It's not only companies like ours which are leading in certain areas of digital, but India as a country can lead in this space because of the government's push on looking at technology differently. Imagine every engineer of ours is blockchain ready. The world will need that, because blockchain builds trust, it builds transparency, it builds visibility. Not only the financial, but if you look at healthcare, you look at agriculture, you look at so many areas that are going to use these technologies in the future. So I think India has a big potential, and as Jetline Group and Jet Synthesis, we are really leading that change, because we truly believe in the power of this optimism that you said, and India's ability, and us also being able to deliver much greater outcomes over the next 2 decades. My last question to you: what would you say if you have to ask some question or recommend some things to the government? What would you say? When I look at this, while yes, we are demonstrating fiscal prudence and all of that. As you know, the finance minister has presented the interim budget, and you may be aware of the facts that there have been a 5.1% of fiscal deficit and major push on infrastructure development, and with that of 11% increase on infrastructure outlay. So what is your overall take on the interim budget? So 2 or 3 broad comments. One, because it was an interim budget, but an interim budget just before the election, many people expected this to have populist measures in it. I think the government has been wonderfully responsible in not doing anything populist, in containing both the revenue and the fiscal deficit, and continuing the glide path that they had announced in the previous budgets. It also appears to be a budget coming from a sense of confidence that they are going to continue this spend over the coming years. So big focus on infrastructure, especially on the areas of railways, big focus on agriculture and farmers, big focus on women and youth, and also encouragement to private enterprise to do more research and innovation, especially at the stage of startups. I also like the fact that they are encouraging state governments to take interest-free loans for specific areas of development, focusing on clean energy, focusing on civic infrastructure. So overall, the budget directionally and in terms of scale, considering where we are in the political landscape of the elections, I think has been done very well.
including things like housing for juggies, allowing people either to buy their own homes or to build new homes and to provide funding for those. I also like the fact that they've used the technique of more with less, which is allowing and encouraging more medical seats with the same hospital capacities. So this is what a country like India needs to leapfrog, because we have not only to cater to the middle class of India, we have to cater to all categories of India. And this is what I think the government has done, and has used some very interesting terminology for GDP and development, many Ds of development, big transformation. So I think I'll also focus on new technologies, deep tech, space tech, so which is very critical, both allowing and encouraging more focus on build out, because it is well known that the manufacturing industry and the construction industry for homes have a massive multiplier. So these three combined, the automotive industry, the real estate industry, and the healthcare industry, if you look at these as economic indicators, they have the highest multiplier effect on the economy in terms of number of other industries get impacted and the number of jobs that get created. So from that point of view, they have touched each and every one of them individually, separately, and also cohesively when they've gone across the youth and the women, etc. The ability to focus on women, I feel, is particularly important because it is India's stronger and smarter half. And for the next quantum leap for India's growth in the future, that is one thing we have to focus on, is bring women into the economic mainstream. They have always been responsible. They've played a very important role, but they've remained in the background. I think it's critical with the multiple initiatives that the government has been taking, and I'm not focusing only on the budget today, but the multiple initiatives, and especially helped by, catalyzed by what was done in the budget. At the same time, figure out a way to lower the cost of funding, I think was critical. And this has been done while the entire world has been in turbulence. India has managed to remain like an ocean of calm. And with this, I feel we have given more continuity and consistency to this growth. I do hope that in the future, we will be able to raise our growth from the, well, I have to say full marks first on high growth of close to 7%. There is no other country in the world, no other large economy in the world which comes even close. But because of the large diverse population and because of a large section of our population that is still living below the standards that they should have, it is important for us to have consistent high growth over the next 15 to 25 years. So our aim has got to be to raise this above 8%. And V. Somanathan, Secretary Economic Affairs, Shri Ajay Seth, Secretary Deepam, Shri Tuhin Khan Pandey, Secretary Revenue, Shri Sanjay Malhotra, Secretary Financial Services, Dr. Vivek Joshi, and Chief Economic Advisor, Dr. V. Anantanageshwaran. A warm welcome to the Finance Minister and her team at the National Media Center. At the beginning of the press conference, Finance Minister will make her opening remarks. After that, we will open the floor for discussions and questions and answers. Thank you. Over to you, Minister Ma'am. So thank you for coming here today. Is this what? Thank you very much for coming here today. Slightly longish opening remarks. I'll try to cut it down. But over and above what you heard me say, I just want to give the overall perspective, so I'll take a bit longer than I desire. See, this is an interim budget presented just before the election, obviously. The four large things that I want to draw your attention to is GDP. You get the numbers, you see it and so on, but I want to bring in this dimension, that governance, development and performance. On all these three heads, I'd like to say what actually we have
achieved, because that forms the backdrop. So, on governance, this budget speaks from a position where we have delivered on development, we better manage the economy with correct intentions, correct policies, and correct decisions. So it's a governance with care, conviction, and confidence. If that stood for the GDP's G, the D stands for people living better, earning better, and having high aspirations for the future. And if I move to the P, the performance, 3 consecutive years of 7% growth. Fastest growing economy in G20, all parts of the country participating in the growth. Price stability and inflation management. Handling the health and economic fallout of COVID. Build out of physical, digital, and social infrastructure. DPI as a factor of production almost for formalization and financial inclusion and growth of the economy. Cleaning up the banking system, GST, one nation, one market and one tax, the IBC. So if you were to look at governments, I've listed some of them. So your GDP, as we look at governance, development and performance, I have something to say on each of these. So this budget, vote on account, is getting presented with the GDP that we want to speak to you about, and in that the fiscal management actually is something which I would like you to spend some time even as you go through the budget, but I'll flag it here. Bringing down the fiscal deficit in spite of very challenging times as per the announced consolidation path and with transparency and prudence. So in fact, I was just remarking to my officers this morning, most of you all had already calculated the figures, RE revenue, RE expenditure, this is what it is, because every month you get the reports coming out. So you don't need to wait till the budget statement. Every month you get the accounts, and so budget process has become absolutely transparent and questionable. If there are any, you're there to question, we are here to answer. But we set in the process of keeping everything brought on budget and nothing kept aside from it or underneath it. So with that, the budget deficit, fiscal deficit, 5.8%, which is much lower than the 5.9 which was at the BE. Similarly, for the 24-25 budget, we've given 5.1 as the fiscal deficit, so clearly indicating that we are on track to meet the glide path which was set in 2021-22, and that we are well on track to meet the 4.5% fiscal deficit, on or below 4.5 even by FY26. If this is the background with which I'm talking and the presentation of the budget happened, I want to very clearly put some things under the heading, if you want to call it that, Disha Nirdeshak Baatein. You must have heard the Honorable Prime Minister speak before the Parliament session, well before the sessions commenced. His usual customary remarks. He said the budget will be presented tomorrow and you will have some Disha Nirdeshak Baatein in it. So, what are those Disha Nirdeshak Baatein? There are about 5 of them I highlight. Social justice as effective and necessary governance model. So it's not just a slogan for us, social justice, we'll have to work for Nyay. No. We've shown you that it is a governance model and a successful one at that. So social justice as an effective and governance, necessarily a governance model.
Then 4 major caste groups, as we call it, as Prime Minister has emphasized: the poor, the women, the youth, and the annadatta. So, Disha Nirdeshak Batein, you have the second point. Third, focus on infrastructure. This year, again, massive increases of capex happened in the last 4 years. This year, too, there is 11% increase, resulting in a very recallable number, 11,11,111 crores. So continuing the trend of the last 4 years, where capital expenditure has been the route, one for revival earlier from COVID, and now for sustained growth towards towards the Vikasit Bharat goal. Fourth is the using of technology as a huge opportunity. DPI as almost a new factor of production. So it is actually bringing in the value addition to the economy. It is facilitating every sector to bring in the value addition which is so required and improves on our productivity. And the last Disha Nirdeshak Batein is high-powered committee for extensive consideration of challenges arising from population growth and demographic challenges. So if these are Disha Nirdeshak Batein, what were the major announcements? I'll recall very quickly 12 of them. I'm not spending any time except for reading out what those 12 are. 2 crore more homes under the PM Awas Yojana. We already completed nearly the 3 crore. Housing for middle class. Rooftop solar for at least 300 units of power generation every month, which will be muft bijli for the households. There will be some assistance and some kind of a funding which will be extended. So you're generating renewable energy, providing the renewable energy generators the free they would want to use, and over and above that, the surplus that they produce can be used for selling and earning money out of it. Enhancement of target for Lakpati Didi from 2 crore women to 3 crore women. Preparing and empowering the MSMEs to grow and compete globally. Aligning regulatory environment for them. The sixth is making sure that the eastern region, and when I say eastern region, I'm not talking about northeast. Northeast will get the attention that they've been getting all the while. They will still continue to get it, and they will be on the top of our priority. But when I say the eastern region, I'm talking about Bihar, Jharkhand, Chhattisgarh, and Orissa, making sure that they'll become the engines of growth for the new Amritkal India that we are trying to use as a bridge towards leading to Vikasit Bharat 2047. And Eastern India, I've missed out on West Bengal, please add it. Bihar, Jharkhand, Orissa, Chhattisgarh, and West Bengal. Next generation reforms will be carried on, building consensus with states and stakeholders for reform, perform, transform. 3 major corridors, which are programs for railways, for logistics efficiency, and they have been explained. The important point that I want to highlight there is to make sure for Vikasit Bharat, you just don't need to build for better passenger convenience, you need to build for better passenger convenience. You need to give them safety. You need to shorten the traveling time for them. So one of the corridor is going to give emphasis for high density routes where passengers traffic is very high. We need to bring efficiencies and better safety in those areas. But for Vikasit Bharat, passengers need to move as they wish. But equally, materials, raw materials, building goods, cement, rare earths, minerals, we need them to move efficiently as well. So the corridor will take care of that as well. So
the synergy between movement of people and movement of goods is what is being highlighted in the 3 corridors that we're talking about. Ninth announcement, that is urbanization, looking at Metro and Namo Bharat. One of the railway related things which I missed out on telling you, 40,000 bogies are going to be improved in the standards with which they can be effective rolling stock, and also give the convenience in the passenger experience inside the bogies as well. So 40,000 coaches are going to be brought up to the level of Vande Bharat standards. Metro and Namo Bharat I did mention, so that urban transformation through transit-oriented development can happen. The 10th announcement which I draw your attention to is 1 lakh crore corpus for research and innovation by private sector. So that's coming in at the 10th. 11th is boost to tourism, including spiritual tourism. Interest-free loans will be given to states so that they can build on iconic tourist centers. And the 12th one is supporting reforms in state. They are separate from the development of tourism centers, and therefore I want you all to have the clarity that help to centers are supporting reforms in state is slightly different from boost to tourism. There will be a white paper on economic performance of the last 10 years compared with the previous 10 years. The 12th announcement is so much a statement that I would like to make, which is what I made in the budget speech as well. Government has got the trust and the confidence and the blessings of the people based on its exemplary track record of GDP, as I said, governance, development and performance, effective delivery, and also on Jan Kalyan. So highlighted points have been realized as goals of Vikasit Bharat till now, and they are the realizable goals also continuing to be so, because what we want to underline is we govern with good intentions, true dedication and hard work in the coming years, and that's why Amrit Kal is also now called Kartavya Kal. In short, that's a budget. Thank you very much. Yeah. The Finance Minister has just now encapsulated the key highlights of the budget. We'll now open the floor. We can begin with the front row here. Please go ahead, 53. Please hand over the microphone here. Hello, ma'am. This is Priyashmita from Informist Media. Ma'am, I wanted to know about the projections in your tax collections. So tax collections are seen currently growing at about 14.4%. Your April to December data shows. However, the projections in your budget are lower than that. So a back of the envelope calculation shows that you're going to get about 55,000 above your revised estimate if the collections continues. So your estimates are conservative, would you say that? I'll certainly ask Somanathan to come in on that. Estimates are always realistic with us. So let me clarify this. If you look at page 6 of the budget, you can look at it later. I'll just explain it to you. We are projecting that gross tax revenue. Now, this gross tax revenue in this sheet is net of refunds. So, net of refunds, we are projecting that in this financial year, it will grow by 12.5% with reference to last year's actual. So, from 30.54 lakh crores last year to 34.37 lakh crores this year is what is presented in our revised estimates. However, the sharing of taxes with the states is different for different taxes. Not all taxes are shareable in the same ratios. What has happened this year, if you look at the number, and they are given on page 6, union excise duties have actually shrunk. They have not increased. Most other taxes have grown at, as you say, 14%, etc. Union excise duties have grown minus 5%. That reduction is almost entirely on the account of the center, because the same way that cesses are not shared, reduction in cesses is entirely borne by the center.
So as a result, the state's share has increased by 16.5% in our revised estimates. Between the state share in the revised estimate and the state share last year, there's an increase of 16.5%. So taxes are growing 12.5% net of refunds. State share is growing 16.5% net, and therefore net to center is growing only 10.8% approximately. So there is no expected further, padding or anything here. This is our realistic but slightly conservative estimate. Okay, the next question, please. 65. Please go ahead. Hi, ma'am. Yeah. I'm Kriti from Informist Media. So you mentioned that CAPEX, there has been a push towards CAPEX. However, the CAPEX jump for this year is 11%, right? Which is lowest in last 4 years. So are we moving towards a place of moderation in CAPEX? And secondly, while the budget, this is another unrelated question, while the budget clearly says that you are committed to your 4.5% target, you have also been recommended to bring down your debt to GDP ratio to 40% level, which still stands above 50%. So how are we looking towards moving towards that target? Thank you. First of all, I'm on the second, your second bit was on the debt to GDP. What was your first one on? CAPEX. 11% growth in CAPEX. You've got used to about 30%, 23% from a low base. And today 11% on a high base appears low. Informist. 11 lakh crores going for capital expenditure. And you're seeing also that the private sector is coming in with their investments. So one has to have a clear understanding that when the government wants to spend through capital investment, it can be for one, triggering the economy so that private sector also comes in. At a time when private sector didn't come in, we still fully came in. Now we are seeing also signs of private sector also coming in. So it's only natural for two reasons, therefore, for you to look at. One, on what base are you saying 11% is less? Growth it is. And second, please do look up if private sector is coming in or not. Does that answer you? Yeah. The next question, we'll take it. Wait. Still? On your 40% of, first of all, that was a figure that was set before COVID. Its relevance today is something that has to be looked at completely afresh. And in fact, in 21-22, the finance minister had set out a particular fiscal consolidation glide path, which is the post-COVID glide path. I would only point out that today India's debt to GDP ratio is one of the lowest in the G20 apart from other countries. So we have to look at things in today's context, not based on a historical relic of a report which was prepared long ago before COVID happened. Yeah. And again, our external debt also is something which you should notice is never been high, not high even now. Yeah, second row, I would request you to confine to one question, please, because there are many questions coming up. Yeah, thank you very much. Please go ahead. Yeah. दूसरा दे दीजिए. Give this another नमस्कार mic. मैम, आलोक प्रियदर्शी हूँ मैं CNBC आवाज से. मेरा सवाल मैम ये है कि एक कंज्यूमर के नाते, एक टैक्स पेयर के नाते हमेशा लोगों की ये उम्मीद रहती है, या इस देश में कैसे कह सकते हैं कि चुनाव इतने ज्यादा आते हैं कि लोगों को लगता है कि जब चुनाव आएंगे तो उनकी जो मांगे हैं वो पूरी हो जाएंगी, टैक्स के मोर्चे पर कहें, या फिर जो पॉपुलिस्ट मेजर्स सरकार लेती है. लेकिन क्या इस मिथ को क्या ये सरकार तोड़ना चाहती है कि जब चुनावी साल होगा तो पॉपुलिस्ट बजट नहीं देंगे? जिस तरह से फिस्कल प्रूडेंस की आपने बात करी, आपने फिस्कल प्रूडेंस को लेकर काफी जोर दिया है इस बार बजट में, तो ये इस बात का कॉन्फिडेंस सरकार को ज्यादा है कि वो अगली बार पूरी तरह से आके और जनता के जो उनकी उम्मीदें हैं उनको पूरी करेगी, या फिर सरकार इसी तरीके से जिस तरह से फिस्कल प्रूडेंस का जो रास्ता है उसको अख्तियार करेगी और उसी हिसाब से चलती रहेगी, और चुनाव के मौके पर लोग आम आदमी एक्सपेक्ट ना करें कि कोई पॉपुलिस्ट बजट आ सकता है? आप डिस्कशन जैसे प्रश्न पूछ रहे हैं भाई.
मैं पहले से बोलते आई हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस विषय में बोलते थे, कल परसों भी उनका बयान है। वोट ऑन अकाउंट क्या है, कैसे है, आपको मालूम है। सो वी लार्जली केप्ट vote on account as vote on account, but also showed how the economy will be moving forward and what's our plan for it. Who are we going to aim at when in July, when we come back to present a budget? Who are the sections who will be addressed? What are the kind of investments we'll make? However, very clearly showing that on capital expenditure, we are showing an increasing growth. More money is being put in for that, for innovation and so on. So announcements भी है, ये नहीं है कि वोट ऑन अकाउंट है इसमें कुछ और नहीं है। announcements है, दिशा निर्देशक बातें भी है। So वोट ऑन अकाउंट एंड इंटरिम बजट को कैसे, किस हद तक उपयोग कर सकते हैं, और वो भी कॉन्फिडेंस सरकार, उस हद तक हमने यूज ही किया है। Yeah, Z Business, and after that you hand over the microphone to your right. Yeah. मैम, आपने दो बड़ी स्कीम्स का ऐलान किया, एक अर्बन एरिया के अंदर हाउसिंग स्कीम का, दूसरा रूफटॉप सोलर के लिए। मैम, इसका बजट एलोकेशन कितना है? एक सवाल। दूसरा सवाल मैं मैम पूछना चाहूँगा डाइवेस्टमेंट के ऊपर। मैम, पिछली बार 51,000 करोड़ का टारगेट था, वो टारगेट नहीं मीट हो पाया। इस बार बजट में ये नहीं मिल पाया कि कितना टारगेट अगली बार के लिए रखा गया है, और ऐसे टाइम पे टारगेट नहीं पूरा हो पा रहा है जब मार्केट, इक्विटी मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। पहली बात तो मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो डिसइन्वेस्टमेंट है उसमें हम वैल्यू लॉकिंग का प्रिंसिपल लाते हैं। आपको एक मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हमारे जो 61 लिस्टेड सीपीएससीज हैं और 16 पीएसबीज हैं, एक यानी कि 1 जनवरी 2021 में, यानी कि 3 साल पहले उनका कंबाइंड मार्केट कैप 15 लाख करोड़ था, और आज के वक्त में वो 58 लाख करोड़ है। तो हमने 42 लाख करोड़ की वेल्थ क्रिएट की है पब्लिक सेक्टर में, और उसको माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स जो उसमें हैं उन सबके साथ उनकी वेल्थ शेयर हुई है। तो आप वेल्थ इफेक्ट नहीं देख रहे हैं, आप सिर्फ उसमें से वेल्थ में से हम क्या निकाल रहे हैं, लेकिन वो जो वेल्थ जनरेट करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। एक साल अलोन में हमने 21 लाख करोड़ का 25 लाख करोड़ का एडिशन किया है। तो आप समझ सकते हैं कि 2014 से जब हमने 4.2 लाख करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट किया है और 4 लाख करोड़ का हमने डिविडेंड लिया है सीपीएससी से, 8.5 लाख करोड़, उसके मुकाबले एक ही साल में 25 लाख करोड़ का हम मार्केट कैप ऐड कर रहे हैं। तो ये जो वैल्यू अनलॉकिंग स्टोरी, इसका मतलब ये है कि आपको डिसइन्वेस्टमेंट करना है तो वेल्थ भी इंप्रूव करनी है, शेयर की वैल्यू भी लेनी है, और तब डिसइन्वेस्टमेंट कैलिब्रेटेड वे से करना है। इसलिए सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट का एक तो हमने कोई फिक्स टारगेट भी इसे नहीं रखा है। हमने ये कहा है कि हम एक अदर रिसीट्स में एसेट मोनेटाइजेशन हो, डिसइन्वेस्टमेंट हो, वो सब जाते हैं। और दूसरा रिसीट का एक इश्यू है कि हम कभी भी यदि हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन एक उसको फिक्स्ड मार्केट सिग्नल ये देना कि हम शेयर बेचेंगे ही बेचेंगे, इसी प्राइस पे बेचेंगे, उसके कारण उसका प्रतिकूल असर मार्केट में पड़ता है। इसलिए जो हमारा वो है, अर्थ ये है कि हमारा जो रेवेन्यू है, और दूसरी हमने इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है कि डिसइन्वेस्टमेंट और डिविडेंड ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं। जब हम कंबाइंड कह रहे हैं हम 92,000 करेंगे तो कंबाइंड आप देखिए, और नॉन टैक्स रेवेन्यू इज द बिगेस्ट स्टोरी। लगभग 75,000 करोड़ का नॉन टैक्स रेवेन्यू ऐड हो रहा है और हाईएस्ट ग्रोथ उसमें ही है। और अब लगभग 1 लाख करोड़ जो है, यदि आप बजट से देखें और नेक्स्ट बजट में देखें तो 1 लाख करोड़ का नॉन टैक्स रेवेन्यू हम ऐड कर रहे हैं। और नॉन टैक्स रेवेन्यू ऐड में डिविडेंड की बहुत बड़ी भूमिका है, और डिविडेंड हम एक्सीड कर रहे हैं।
तो इसलिए आप कंबाइंड वे से इस सारे यदि इस सेक्टर को देखें तो हमको एक नई दिशा में जाने की जरूरत है जो हम गए हैं. रिगार्डिंग द न्यू स्कीम्स, रूफटॉप सोलर के लिए 10,000 करोड़ का प्रोविजन है बजट में. As regards the urban housing scheme, its contours are being worked out, and there is a token, and it will be funded when the exact contours are finalized. Yeah, the next question, please go ahead. 81, please. Okay, I mean, I'll... Hello. Yeah, go ahead. Yeah, sir, Prakash Pedashi from ET now. Ma'am, the benefit of lower tax rate of 15% has been extended for startups and investment by sovereign wealth funds. My question is, I mean, has it also been extended for manufacturing unit? No, I'm asking, I'm seeking clarity. No. Thank you. Yeah, Bloomberg, Ruchi. Ma'am, some of the rating agencies have said that they will take a call on a ratings upgrade for India only after the next budget. But given that this budget of yours, you did say that it has been transparent, you've maintained the path of fiscal prudence as well. What will be your message for rating agencies? Not only aligning with the fiscal consolidation roadmap that we gave earlier, but bettering it. Is that one simple, straightforward message which every rating agency should take on board? Should take on board. Ma'am. Yeah, please go ahead. Yeah. Sapna here from CNBC TV 18. Ma'am, two questions. One very broad, generic, excellent work in terms of fiscal consolidation. Just want to understand, is it slightly ambitious to have a 5.1 number right away in the interim budget? I mean, broadly expectation was July budget, you will start kind of... No, I don't mean that. No, I don't mean that, but just try to understand, like in 2 years, you'll be able to do below 4.5%. Very broad understanding, ma'am. One is that. Second, ma'am, you're talking about next generation reforms. Within that context, the government has had a massive privatization agenda. There doesn't seem to be, any mention of that as of now. Just heard to him. Sapna, you're asking the same thing. No, but... You went elaborately on it. But will you still be sticking to it? Just broadly wanted to understand. Yeah, please go ahead. Yeah. Timsi Jaipuria from CNBC TV 18. Ma'am, in your budget speech, you've given a very ambitious target of 1 lakh crore worth of a fund for private sector for research and innovation, where you've promised 50-year interest-free loan. If you could give the contours of this scheme, which are the sectors who will benefit in terms of the private sector, which are the specific sectors who can avail this corpus, and what kind of work or research and innovation are we focusing on? Sectors and how this scheme will work. So I'll tell you the quantitative part, and Secretary EA can expand on the sectors. There is the 1 lakh crore is a provision over a period of time as the need emerges. This will be provided as a 50-year interest-free loan to a financial institution which will be identified, which will be within the government ambit of financial institutions, who will then finance or refinance projects at long tenors and at concessional rates of interest. Money has been provided in this budget in the Department of Economic Affairs for multiple purposes, including this one. So there is a provision for this in the Department of Economic Affairs, which covers many other things also. As regards the sectors, I'll leave Secretary. See, as announced in the budget speech, these are the sunrise sectors. And what is the economic logic behind it? These are the innovations and research. Investments are needed today, and the private sector, the returns will come couple of years down the road. And those couple of years can be 4 years, 5 years, 10 years. For some investments, it can be even longer. So it will not be commercially viable for private sector to invest if it were to be a commercial money for them.
So this is what the fund will help them. Clear identification of those sunrise sectors will be through a stakeholder process. Yeah, business line. Namaskar, ma'am. Shishir here. Just two clarity, ma'am. One is about the TCS. Some changes have been made in the TCS on the LRS. So what are those changes? There is not much clarity because explanatory memorandum is not there. And the second part is the housing scheme. Will it be just like an interest subvention scheme, or what will be the contour of that? So you are aware that, sometime I think last year, maybe in June or July, there was a press release in which the TCS rates were later on changed from what were announced in the budget of 23-24. So basically it is just to align those TCS rates with what was announced in the press release. There is no further change from what was announced in the press release. Your question on housing was? What will be the contours? It's still being worked out. Interest subvention, will there? It could be one of the features of the scheme, but nothing has been finalized yet. It's under discussion between Department of Financial Services, Ministry of Housing and Urban Affairs. Multiple options are being considered on how to achieve the purpose that has been set out. Hello, ma'am. Ruchika Chitravanshi from Business Standard. One question was regarding the relating to the announcement you made about the withdrawal of demand for outstanding tax. What will be the cost to exchequer for the tax that will be foregone? And second, a small clarification: the 75,000 crore 50-year loan that is linked to the milestone reforms. Yeah, is that in addition to the 1.3, or is it part of it? So all of you would be aware, that there are a large number of small demands that are pending with respect to income tax, wealth tax, gift tax. They number in all about 2.68 crore such demands. The total amount, of course, is very high, which is 35 lakh crore of outstanding demand. A lot of it is in litigation. But many of these demands, about 2.1 crore, in fact, 2.1 crore out of 2.68 lakh demands are valued less than 25,000 rupees. Now, many of these demands are very, very old, dating from 1962, when Income Tax Act was first was enacted, and right now till very recently till today. So this has been causing a lot of hindrance, especially for the taxpayers, because these demands are very old. Many of them are unreconciled because of systemic issues. We shifted, our CPC, all the tax records, centralized them in 2010-11 year. And so that's why a cutoff has been taken at 10-11, because previously the demands were decentralized. And so we are unable to, verify many of them, causing disruption and hindrance in payment of refunds. So out of this 2.1 crore demands, which are less than 25,000 rupees, about 58 lakh demand entries for the period pertaining to financial year 9-10. And then from 10-11, these are less than 25,000, as already announced by the Honorable Finance Minister, and another 53 lakh entries pertaining to the remaining 5 years from 10-11 to 14-15. So 1.1 crore small demands, 25,000 and 10,000 for the 5 years. These are being remitted. The total amount is less than 3,500 crore rupees. Yeah. The 75,000 crores is part of the 1,30,000 crores. Yeah, go ahead, please. Yes, go ahead. Hi ma'am, this is Pushpita from the core. You mentioned about that nearly 40,000 rail bogies will be converted to Vande Bharat standard. But if you look at the price of Vande Bharat is comparatively higher than the other ticket prices. So considering the affordability of the passengers, what will be the pricing and how will it be decided? If you could. It's up to the railways, but Vande Bharat trains are one thing. The bogies 40,000 being upgraded to the Vande Bharat standard
is another thing altogether. Those bogies probably cannot even take the speed with which we want to improve the high density areas with better speedy transportation for the common man. Equally, the inside bogie experience is also not up to the mark because they've been so for a very long time, and as time passed by, their quality has also come down a bit. So we are talking about the bogie quality matching with the Vande Bharat standards. As to which of those lines of traffic that they will get connected to, and as a result what will be the rationalization of the ticket price, is not something that we can talk about. That's something which the railways will work out gradually. But progressively, that point proves that through the 40,000 bogies that we're talking about, the quality of the Indian rail bogies, which are so important for safe travel and also ease of living travel and comfort, will need upgradation, and this is what we're aiming. Yeah. Please speak into the microphone. Yeah, good evening, Minister. Minister, you had announced an aggressive plan for privatization of 2 government banks a couple of years back. So is that proposal still on table? And my second question is your thoughts on the shrinking successively, every successive year we've been seeing the divestment receipts shrinking. So your thoughts on that? I thought Tuhin had explained the second part of your question, but never mind, I'll ask him to again probably explain it. He'll give you an answer. We're not sitting on judgment over anything. The disinvestment receipts, as you say, is that, is basically you part with your wealth, which is the shares or a property, and convert it in and monetize it. Now there is a wealth effect also there, and we have partners which are the listed companies, the minority shareholders. Our point is that we are also, taking care of GDP, as FM mentioned, in respect of CPSEs. If you look at the CPSE's performance, whether it comes to capex of 3.2 lakh crore, whether it is their growth story, whether their investment in green energy, whether their performance in return on capital employed, whether you look at return on equity, on all fronts, we are seeing that they are big market players, they continue to improve, and therefore they continue to reward shareholders, including the government. Government is a majority shareholder, but a large part of our shareholders are minority shareholders. So therefore, any strategy, calibrated disinvestment strategy, which will actually do the sum over a period of time, is much more than that. And besides, the shares also give you dividend, and we have a consistent dividend policy too. And money is fungible. So we have to have a new paradigm in terms of thinking about, and not to just keep on parting with our wealth at one stroke. We can always do it in a gradual, calibrated way. We'll take a question from the right side, ma'am. Please go ahead. Yeah. Yeah. Ma'am, I have a question on this committee on demographic change challenges. Ma'am, what would be the mandate? What are the areas it would look at? Will it be urbanization? Will it also include issues around, this whole issue about constituencies, political constituencies, given that the northern states have grown faster? Also, 2 clarifications. One is on the 70,000 crore with DEA for new schemes. What kind of schemes apart from solar rooftop are budgeted for? And 2, on this issue of tax, these small disputes, does the 25,000 include only the principal amount, or is it interest and penalty for that 25,000? On the provision for Department of Economic Affairs, this has 2 components. There are certain specific announcements that have been made, and those are provided for. In addition, there is a large increase in our capital expenditure budget. We have, as was done in the year 2022-23, we have kept this in the Department of Economic Affairs to be allocated to whichever department requires it at the pace that it's able to absorb, so that we have flexibility to allocate it to whichever department is able to absorb it fastest, whether it's railways, highways, telecom. We have all of them, and they are all essentially eligible to take this money
when the requirement arises, so that we have flexibility to optimize its utilization. Hello, ma'am. As to your, let me answer the second part. As to your question as to whether the 25,000 rupees amount which is remitted being withdrawn, till the year 9-10, and 10,000 being remitted from 10-11 to 14-15. Let me clarify that this is the amount of demand which is mentioned in our books. And so when this demand is actually entered, then it will include even the interest till the point, when the demand was actually assessed and entered. So it includes the interest till that period, that point of time. And any interest which accrues later on is also withdrawn. Yeah, the front row, left side, please. Hello, ma'am. Ma'am. See, when we talk about demography, it is an opportunity, it is a challenge, and the current numbers, how the changes are happening over a period of time. So this committee will have a mandate to have an extensive consideration of those challenges and the opportunities and come out with a specific set of recommendations. Hello, ma'am. Ma'am, I am Monica from the New Indian Express. Ma'am, in your budget speech, you mentioned about the India, Middle East, Europe economic corridor. So, given the fact that there are conflicts in the Middle East region, so is the project still on track? And also, when the French president was here, was there any discussion on the corridor? Well, it's been announced and we are taking it forward. Yes, there is significant disturbance in the Red Sea area and the Middle East, but this is a project which has long-term implications for the entire region up to Europe, because it also includes Europe. So yes, we will be taking this project forward. We will be consulting and taking it in all its contours. The second last ma'am, Himanshu Shekhar from NDTV India. Second last row, madam. मैम, एक महत्वपूर्ण घोषणा आपने की है प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर। अगले 5 साल में आप 2 करोड़ घर बनाएंगे। क्या ये फैसला हुआ है कि इसमें से कितने घर आप ग्रामीण इलाकों में बनाएंगे और कितने शहरों में, जैसा कि पहले ग्रामीण के लिए बनाएंगे? ग्रामीण के लिए 2 करोड़ और घर बनाएंगे। हाँ। और ये 2 करोड़ 95 लाख का जो आपका टारगेट था वो आपने पूरा हो गया है? 3 crore, we are close to achieving 3 crores. And over and above the 3 crores, ये 2 करोड़. 2 करोड़ है। और इसके लिए फाइनेंशियल कुछ एस्टिमेशन हुआ है, कितना एलोकेशन करेंगे आप? Allocation is provided for. It will be supplemented when the costing is worked out for these additional. But there is a provision to kick it off in the coming year. Thank you, sir. Yeah, please go ahead. You mentioned the mandate, which I think we wanted a bit more clarity on that. Is it going to be something similar to the population control bill that has been spoken about in the past, or is it going to have a different mandate? We just needed Say the budget speech says, and I'm already responded to that. Wait for the terms of reference to come out, and then you will get to know the exact details. But overall approach is, it is a huge opportunity, but there are challenges. Both have to be taken note of, and appropriate responses to be taken. So that's really that broad idea I can share with you, and terms of reference will come out in due course. Yeah, please go ahead. Good evening, ma'am. This is Parth Singh from Outlook Business. Since you spoke about bringing the East India to pace in terms of development, I wanted to ask you, how does the government plans to address the industrial gap to help these states in a free market economy? And for example, more than 70% of the PLI projects are currently concentrated into just 3 states. So I wanted to ask you that. They are not concentrated in 3 states because we want them to be concentrated in 3 states. If there are investments happening and if there is going to be production,
in any other non-3 states that you want to talk about, PLI will be extended to them as well. It doesn't go on the criteria of geography. It goes on the criteria of manufacturing, of how many additional units are produced. I just want to add to that. The public sector investments have gone substantially to the eastern region, whether you look at gas pipelines, new fertilizer plants, or even new LHB railway rolling stock, which is being manufactured in Bihar. So a considerable amount of the public sector investment is focused on the eastern region. Yes, please go ahead. Yeah, if I can add on this particular one, as we are all aware, aspirational districts program in those districts is making a very significant change. 60% of those districts happen to be in eastern India. And when the people are better educated, etc., then more economic opportunities get generated there because skilled manpower is available in those areas. So we'll see over a period of time, and that is what the government will also be providing appropriate support. Ma'am, this is Nivedita Mukherjee from the Sunday Garden. This is with regard to the National Monetization Pipeline that was launched in August 9, 2021. And with regard to your focus on infra in this budget, do we see also that going forward, and what has been the progress? Ma'am, these are two different things. A very large part of infra assets are held by those infra agencies or the public sector undertakings. So as they embark upon their more capital investment, they also monetize some of their assets and plow it back. Some of the assets are owned by the government, so those monetization proceeds come to the government. So that one is going on, and that periodically those numbers come out, and if I recall, next year is also a very ambitious number for monetization. But everything doesn't come to the government there. Ma'am, I have a question. Actually, could you please elaborate? Identify yourself, then ask a question. I am Bani Kinkar Patnaik from the Economic Times. Ma'am, could you please elaborate a bit on the proposed changes in the calculation of agricultural income under the new tax regime? And ma'am, on the 75,000 crore loan. See, under the new tax regime, income from agriculture? Yes. Huh? I mean, some reports I saw, ma'am, that's why I'm not here to answer some reports. We'll go ahead. Ma'am, on this 75,000 crore, interest-free loans to states, since it is part of 1.3 lakh crore allocation under CAPEX, so will the same, reforms conditions continue, or will there be additional reforms conditions? The specifics will be worked out, and it will be reform linked. What reforms, how much, for what, is something that will come when the guidelines are issued. Yeah, please go ahead. Yeah. Hi, ma'am. This is Vikas from The Hindu. In last year's finance bill debate, during the debate, you had announced the formation of a new committee to review the national pension system benefits to central government employees. And there was an expectation that, by 6 months or so, we might have some outcomes that you could consider. So can we expect that anytime soon, or do you think that might be left for the full budget now? One. And secondly, you've talked about, you've committed your government to, taking forward the next generation reforms. I want to get some sense of what are our priority areas there. And lastly, sorry to take a stab at it again, but this population growth committee that we're looking at, is it likely to happen after the census, because we've not had a census for a while? And as per the National Family Health Survey 2020 numbers that we have, our total fertility rate is already below the replacement rate, around 2. So is there some way that we're looking at keeping our population stable at a certain level, or to reduce it over a broader period? You may want to help me by saying question number 1, question number 2. I'll go on answering. You seem to have asked me about 5 different questions, right? Please go ahead. What was your first? Sorry. NPSOP. NPS was first. Once we are ready with the report, we'll let you know. There is I don't think there was a time given. We said at the earliest they will give the report. Yeah, so that stays there. What's your second?
Second was, ma'am, some sense of the priority areas for next generation reforms. Ajay, you want to add in there? See, you would have noticed that a particular section and extensively covered that what will be the broad strategies for the next several years, getting into those. So those are the indications that that can be the broad area for the reforms, the next generation of reforms. But that's not an exhaustive list, but the broad sense you can get it from there. Yeah. And the third was, ma'am, the population bit. The third was the population bit, ma'am. Yeah, I think, please confine to one question because, many questions are still there. Please go ahead. Yeah. Good evening, ma'am. Janani from NDTV Profit. Ma'am, I would like to get some perspective on some of the scheme outlays. One being the capex infusion to OMCs. In FY24 budget, there was 30,000 for retrofitting, petroleum retrofitting for OMCs. This, in the revised estimate, it was said that 15,000 only would be allotted ahead of the budget, but later we have seen that the same 15,000 amount is there for FY25. Just want to understand if the same has been deferred, and also on the fertilizer subsidy, comparatively it's lesser, so the reason or reasons behind that math. On the oil marketing company public investment, the requirements were reassessed and it's also been deferred to next financial year. So it has not been provided in the revised estimate. So it was not that it was provided, they're just coming out with the revised estimate. So it is not going to be in this financial year. It's been provided for in the next financial year. And the second part was? Fertilizer subsidy. Fertilizer subsidy is estimated based on recent trends in global ammonia and fertilizer prices, which have been on a downward trend for the last 6 months. So it's our current estimate based on the best information we have right now, which is very different from the prices which were there during the early part of this year. Adrija from Money Control. You have assumed a nominal GDP of 10.5 for the budget. So that would, just wanted to know the division between the real GDP growth and the deflator. Also, the tax collection growth is seen at 11.5, if I'm not wrong. So there seems to be a more significant gap between the two, which we've seen a trend in the past. One more clarity, I'm sorry for adding. This is with regard to a mention that the average real income of people have increased by 50% with moderate inflation, mentioned in the speech. I just want to clarify, is this linked to investment rate or per capita income? Thank you. Answer. Again, you have to help me out and you ask 2-3 questions. So again, for the budget purposes, it is the nominal GDP which is relevant. That's how the fiscal deficit and other deficit numbers are done. So that estimate is 10.5%. And I recall last year, again, several of you said that are we underestimating, overestimating, etc. We said we have a realistic number. Of course, this year it has been a little lower, 8.9. So our sense is that next year, 10 and 10.5% nominal growth rate is a reasonable number. As far as real growth is concerned, the breakup is not a budget issue. You would have seen the document which Chief Economic Advisor has brought out just 2 days back, and he has extensively covered his take on what the real growth would be. And so you would have read that document already. Your second question? The 50% statement. 50% is I said that announcement, or rather the data which has been shared in the budget, is in real terms. So that has nothing to do with inflation. You are combining the two issues here. There's on a constant prices, income has gone up by 50%. There's yet another statement which is coming up. There has been a moderate inflation. Inflation has been kept within the policy band, except for the post-pandemic period. If you take the 10-year period, it has been well within the policy band. I'll request. I'll just clarify. I'll just clarify this. I think the reference to the growth in real per capita income is 56% is the growth between FY14 and FY23. That's what ma'am was referring to in her speech. And 57% growth in real per capita GDP. Okay? That is what she was referring to. Thank you. Yeah, please go ahead. I'm Meghna Mittal from Money Control.
the government has announced in the budget lowering the market borrowing for next financial year, the gross market borrowing. So I just wanted to understand what gives the confidence to the government that they'll be able to lower the market borrowing amid the global challenges and the capex increase that has been announced. So I think the confidence comes from the numbers that are presented. So if the revenue numbers are realistic, if the expenditure numbers are realistic, then the deficit number is realistic. That deficit number is then broken up into sources of financing. And we have taken a 10.5% nominal growth rate, 11.5% revenue growth rate, which is buoyancy of less than 1.1. This year we have achieved 12 plus with a nominal growth of 8.9. So I think a very decent, very conservative buoyancy has been assumed. In addition, the expenditure numbers are realistic. We have provided for everything. Therefore, the deficit numbers are achievable. And the borrowing breakdown is given here in terms of how much is market, how much is small savings. Small savings, we have shown a declining trend in resources from small savings. We have shown a declining trend in external debt, and that is reflected in these borrowing numbers. So these are very realistic borrowing numbers. On the gross borrowing coming down, next year, some of the repayments of loans taken will not be happening from the consolidated fund. They are repayments of the GST back-to-back loans. So they don't necessarily lead to new gross borrowing. So there is a slight recalibration between the growth of the net, in fact not the growth, the decline in the net borrowing is gentle, the decline in the gross borrowing is steeper. But there is a reason for it. So it's very realistic. Good evening. Supplement this answer, and your answer to your question lies in what the finance minister committed 3 years back: consolidation path, fiscal consolidation path. Now, when the GDP is growing, but fiscal deficit is being brought down, and coming down now to 5.1%, even with a higher GDP number, borrowings are lower, and with that path, it is expected to be lower as well. Good evening, ma'am. From the middle row. Good evening, ma'am. This is Sanjay Agarwal. I first like to congratulate the entire... I'm Sanjay Agarwal. I work for PN News, ma'am. It's a newspaper. This is a newspaper, ma'am. What news? It's PN News. It's a newspaper. It's a bilingual, ma'am. Yeah. So PN News. How do you spell it? It's P for press, N for nation. PN. Yeah. So first, like to congratulate you. You've made history by presenting the 6th consecutive budget. My question has already been taken by another friend. I want to know that you're talking about income tax demands, as Sir explained, Sanjayji, that there have been about the borrowings is 14.13 lakh crores, and this your effect is 3.8 CR. So wouldn't it affect? And wouldn't be like the future? There are a lot of quotes. He said that's going to be, people are going to say, okay, waive off our demands. Is this not going to set a wrong? Means I don't know what should I call it, ma'am. See, as I mentioned to you, this should not be seen as a waiver, because as I mentioned, in the year 10-11, we shifted our records which were previously maintained at zonal levels or state levels, and which were mostly paper records, or if they were computerized, then they were held in computers locally. There was no central record. So in the year 10-11, we shifted this centrally to our central processing center now in Bangalore. Lot of those demands which are over there, they have actually been paid for by the taxpayers. Because when we reach out to them and we tell them, this is a demand, this is a small demand, of course, but they say, well, we have already paid it. But the records were not with us because they were all decentralized. And so mostly these demands are actually not existing. They are existing on paper, but they are not actual demands. They are mostly fictitious, and they are not going to yield any revenue. Some of them, of course, are very, very small, 1 rupee, 2 rupee, less than 10 rupees. So it's not a waiver. That's why
Honorable FM in her speech has not called it a waiver. It's just a withdrawal, it's just a correction of entries. Ma'am, shall we conclude, or would you like to take one or two questions more? No, just those who had shown their... Yes. We go to the middle row. Yeah. Yeah. No supplementaries. And now, please confine to one question now, all of you, the three of you. Good afternoon, ma'am. Congratulations to you and everybody. Karishma this side from Business Today. Ma'am, if you look at the Manrega allocation, if you see the trend for the last few years, whatever has been budgeted, usually the revised allocation goes, of course, slightly a bit more. And if the trend carries on, it could be seen in FY25 also that you may have to allocate more in the next budget. I'd like to understand from that point of view, ma'am, is the centre happy with the way the scheme is working, especially in cooperation from the states? First of all, Manrega allocation is not done on the basis of a trend. It is based on the demand coming from the ground. That is one answer for your first question. But on your second, much more than me commenting, CAG has commented on the way Manrega is operating in some states, where claims are all reaching a stage where they need to be verified. Are they really existing people in the ground? Are people not really those for whom the payments are going? And questions critical to the very spirit, letter and spirit of that program. So to that extent, the CAG reports themselves highlight where course corrections will have to happen in those respective states. I'm not saying a problem existing in one state is the same across board. Some states may do with some kind of a problem, some others do with other kind of problems and so on. So that has to be addressed differently from, are you gradually coming down in terms of allocation? You're putting two and two together, which may not be right. Ma'am, hello, this is Surbhi from Business Today magazine. Ma'am, I wanted to understand by when will the white paper that you have announced come out, and will it be done by the Finance Ministry? And secondly, ma'am, on CapEx, do we foresee any slowdown in CapEx this fiscal, because we have about 2 months left now, and we'll have the Model Code of Conduct coming in, so that... No. But yeah, of this is, so just wanted your thoughts on that. Thank you. I'll have Ajay coming in, but then CapEx I thought was something on which all of you were very happy. Oh yes, it has come out, and because of the multiplier effect, it is having a bearing on the recovery, and now not recovery but sustainable growth and high growth and so on. So many of the things that are being put in place are building blocks for this in the future. India has set the target of 7 trillion economy by 2030. So how do you see the budget? There is a budget among economists that the India is the fastest growing economy. True, it is true. India is the fastest growing economy of any significant scale. There is no doubt. Other large economies, as you know, US has been patting itself on the back for a 3+% growth. As they get close to 4, they think it's phenomenal growth, and it is for that size and scale. So for us as an economy to be growing at this pace is very creditable, because we had also said at one time 5% is the bottom that India has. It will always grow above that, unless you have a black swan event like we had in the COVID. But other than that, we have shown consistent growth. The challenge for us is, how do you grow at the old high rates? Please remember, we had grown over 10% back about 15 years ago. So it is important for us to try and figure out high growth. But you mentioned something very important. To grow from a 3.7 trillion economy to a 7.3 trillion economy, we are going to add not just another India, we're going to add another complete Europe to our economy. Yeah. Absolutely